सर्वांकाय नमस्कार. सर्व SVT वॉलंटियर्स श्री वीर व्यंकटेशाल भजक आणि हांग मेळ्ळेले सक्कड क्रिकेट उत्साहकांक नमस्कार. तशीच प्रथम जावन हांग वेदिकेरी आसीन जाल्ले सर्व वैदिकांक स्वागत दितास. आज आम्ही सक्कड एक विशेष संदर्भार हांग मेळ्ळलो आसा जी आमगेले श्री वीर व्यंकटरमण देवस्थानाचे वॉलंटियर्स ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು 3 ದಿವಸ ಪರ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾಚಿ. SVT ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅಜ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ SVT ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ एक एक्सक्लूसिव GSB वॉलंटियर्स खातीर केलेले टूर्नामेंट नोव्हेंबर 9 तारीखेक श्री श्रीनिवास कल्याण मंटपांतू प्लेयर ऑप्शन जाल्लेले. अंतू 220 चड प्लेयर्स ऑप्शन जावन टीम सेट जाल्ले. आज इदकून 3 दीस पर्यंत हांगा फ्लड लाईट घालून पंद्याड जाता. अंतू 4 सब ज्युनियर 4 सीनियर आणि 10 ज्युनियर टीम्स ಒಟ್ಟು 8 टीम्स भाग जातात. हे एक अशी टूर्नामेंट मात्र नाही, हे ट्रेडिशन आणि टीम वर्काचे एक आचरण. त्या वीर व्यंकटेशाल अनुग्रह जावचे हे टूर्नामेंट प्रति एक वॉलंटियराले सेवा क्रीडो मनोभाव आणि ऐक्यते वाढून दिता. आता हे कार्यक्रम वेदघोष करून चालन करून दिवका म्हणून हांग उपस्थित आशिल्ले सर्व वैदिकांक हांव विनंती करता. हरि ओम. भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां जस्तनोभिर्व्यशेम देवहि तं यदायुः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम. धन्यवाद. आता दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रम उद्घाटन करून दिवका म्हणून वैदिकाला निमून घेता आमगे असोसिएशन प्रेसिडेंट श्री सुरेश वी कामत हांनी हे कार्यक्रम भटमामालकर यांच्या लासून दिवका.
धन्यवाद. आता हे कार्यक्रमाचे एक औपचारिक स्वागत करता म्हणून हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व वैदिकांकय स्वागत करता म्हणून आमगेले प्रेसिडेंट सुरेश वी कामत हांकां निमगून घेता. प्रथम जावन आमगेले पेंटेचो देव वीर व्यंकटेशाक नमन करून आमगेले समाजाचे धर्मपीठाचे सर्व गुरुवर्यांक वंदन करून आमगेले हे एक वॉलंटियर्स जाले टुर्नामेंट SVT ट्रॉफी 2026 म्हणून ह्या वर्स चारी सीझन हाजे उद्घाटन करूक आज हांगा पाविले आमगेले देवळाचे तांत्री जावन आशिल्ले पंडित नरसिंहाचार्य माम, तशीच काशीनाथाचार्य माम, तशीच प्रधान अर्चक जावन आशिल्ले वेदमूर्ती हरीश भट माम, तशीच परिवाराचे सर्व भट मामू, परिचारिकेचे भट मामू, तशीच आमगे लोटाजी आशिल्ले दिनेश भट माम डोंगरगिरी, तशी पूर वैदिकांक आमगेले एसोसिएशनाचे तर्फेन आनी आमगेले सर्व वॉलंटियर्सां तर्फेन प्रितीन स्वागत सांगता. हे एक टुर्नामेंट 3 वर्सां फुडें आमी प्रारंभ केलेले. आमगेले देवस्थानाचे सक्कड चेडू म्हळ्यार वॉलंटियर्सान एक क्रिकेट मॅच कोरका म्हळ्यार एक अभिप्राय आयलो. आमगेले भितरीची नित्य सेव करतले अशें पुरो, तेरावळार येवन सेव करतले अशें पुरो. तशी प्रत्येकल्याक एक मन कसं म्हळ्यार एक क्रीड, एक कसले एक एंटरटेनमेंट म्हणून हांव सांगना जाल्यार सगळ्यांक ओट्ट मेळून करचे खातीर एक क्रिकेट आमी प्रारंभ करुया म्हूण. तशीच उलयताची ते जायत म्हणून जाल्ले प्रथम वर्स एक ट्रायल रुपार आमी हांगा प्रारंभ केल्ले. तें कसं की देवाल दयेन भारी एक चंदायर चल्ले. त्या वर्स 14 टीम बरी जाल्ले आमगेले भितर वयले. मागीर प्रत्येकल्यान आमकां एक टीम जावका आमी तातूंत भागवयसचे आमकां अवकाश दिवका म्हणून सांगता सांगता आजी 18 टिमा येवन पावले. ते कशें जाल्ले म्हळ्यार आमी आमगेलो उद्देश कसो म्हळ्यार खाली क्रिकेट एक नेवान मात्र आमी सक्कड आमगेले वॉलंटियर्सान एक ओट्टू मेळचे खातीर एक ऐकती दाखोवचे खातीर आनी आमी एक देवस्थानांत कशी आमी काम करता की तशी भायर जाल्यार आमी एकची म्हळ्यार एक मनोभावारी हें केल्ले निमित्त मस्त हें एक वाडत आयिल्लें. तशीच फुडली वर्स देखून आमी एक प्रयोग केल्ले कसो म्हळ्यार सन्न प्रायाचे चेडूं वचची तांकां जाल्यार एक देवस्थानांत एक मुखावयल जनरेशन म्हणटाची तांणी जाल्यार देवस्थाना येवच्याक एक अवकाश करून दिवका. तांकां एक हंत भितर एक क्रिडेंत भागवयसून तांकां कंडिशन कसो म्हळ्यार तुमी देवस्थानाक काम करका, तुमी मुखारसून ते सिनियर्स कशी करता आशिल्ली म्हळ्यार आतां आमी जाल्यार आमगेले सिनियर्सां पळोवन कशी करता आशिल्ली तशी तुमी येवका म्हणून तांकां एक उत्तेजन दिवचे खातीर आमी प्रारंभ केल्ले. तशीच 10 वर्सां देखून 14 वर्साचे 4 टीम ह्या वर्स फुडल्या वर्सा येयले, ह्या वर्सा येसाची तांणी आमगेले मुखावयले जनरेशन तांकां आमगेले केन्नाय आमी तांकां एक प्रोत्साह दिवका म्हूण लेखिल्ले. ताजे प्रकार आमी करता आसाची. तशीच हाजे एक विशय सांगचे म्हूण जाल्यार आमी खाली एक टुर्नामेंट म्हूण करनाची मलगड स्वयंसेवक कोण आजी 70 की 75 वर्स की जावन फुडें मस्त काम केलां देवळांत. आजी कसले अननुकूल आसचे पुरो एक आतां काम करता आसचे पुरोची तांकां कसं जाता ते तांकां एक आपूण एक गौरव दिवचे एक कार्यक्रमूय आमी घालून घेतला. ते आमी फायनल डेंत एक प्रति वर्स एक उणें म्हळ्यार एक 5 जो 6 जनांक आमी गौरव दिताची. तशी ह्या वर्सा ते आमी कंटिन्यू करता आसाची. तशीच हे टुर्नामेंट जाता तरी आमी एक कसले एक आजी एक उडगासाक आमी कसले एक समाजा खातीर आमगेले वॉलंटियर्स आनी तांगेले फॅमिली खातीर कसले कोर कामळाले खातीर आमी एक फ्री मेडिकल कॅम्प तशीच तांकां एक आश्रमा विजीट तसले पुरो कार्यक्रम घालून घेतिल्ले अशे त्या देवाल दयेन चंद्यार चलता आसा. तशी हे एक इतले कार्यक्रम आमगेले प्रति वर्स चलता आसा. हे देवाल दयेन आनी मुखारी चोलका आनी आतां औपचारीक जावन आमी आज आयिल्ले पुरो वैदिकांक वापस पुनरपी स्वागत सांगता आनी आमगेले स्वयंसेवकांक आमगेले ऑर्गनायझर स्वयंसेवकांक सगळ्यांकय आमकां एक आशिर्वाद कोरका म्हणून आमगेले देवस्थानाचे तांत्री जावन आशिल्ले नरसिंहाचार्य मामाक हांव निमगून घेता.
श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामृष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. माध्वर्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं. नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमेन्द्रसंयुतं. प्रथमतः आमगेले देवालो तशींच भद्रनरसिंहालो मुख्य प्राणालो महामायादी मंगळूर पेंटा आशिल्ले सर्व देवता आनी आमगेले देवळाचे परिवार देवा उडगास कोर स्वाम्या उडगास कोर न्हू. आजी एक क्रीडाभिमानी लोक हांगा प्राप्त जाल्या. एक व्हड एक कार्यक्रम आमगेले वेंकटरमण देवळाचे स्वयंसेवकांनी केवळ देवळाचे म्हणून सांगना समाजाचे स्वयंसेवकांनी हो कार्यक्रम आयोजन केला. तांकां सर्वांक हांव अभिनंदन प्रप्रथम सांगता. स्वयंसेवक म्हळ्यार स्वयं जावन आशिल्लें आमी सेवा निरत जावचें. आमगेली एक ड्युटी आमी एक इंट्रस्ट करता आसले एक विशय आनी सेवा रूपान करतना आमी काम करता आसले एक विशय ताका स्वयंसेवक म्हणटात. तातूंत विशेष जावन कशी म्हळ्यार सांदकून आतां सुरेश कामतीन सांगलें आमी ओट्ट मेळका कशी ओट्ट मेळचें. गुणकर्म विभागशः आमगेले गुण आनी आमगेले कर्म दोनूय आमी मेळटलो न्हू घेवका जाल्यार तसलें एक कर्तव्य आमगेलें. ते देखून वी ईट टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी सर्व टुगेदर. तशीच प्रत्येक विशय आतां आमी देवस्थाना भितर संबराधने बसतात. देवाल प्रसाद वी सर्व टुगेदर. देवाल प्रसाद क्रमबद्ध जावन योग्य रूपान तांकां पावत तशें पावचें. पंडित आहा समदर्शन आहा म्हण सांगलां. केन्नाय वाडतना तांकां एक 5 वर्सां चेडूं आसच्या पुरो 16 वर्साच्यो समाजी तारुण्यावस्थे आशिल्लो आसा मंतार बशिल्लो आसा म्हणटना देवाल प्रसाद आमी वाडता आसतना मंतारांक जावका जाल्यार वाडका ताका भूक चड आसा तशें करून तारुण्यावस्थे भितर आशिल्ल्या तांकां त्या प्रकार वाडका. सन्न चेडूं तांकां एक आश आसा हांवें केळी पानार बसून जेवका म्हूण. ती आश पूर्ण जावका शिवाय केळी पानार वडल्यान पुराय जेवता म्हूण गॅरंटी ना. ताणें कशें करता ताका पान दिलां तशें करून हांवें हाचेर बसून गोटी खावका म्हूण. तेन्ना ते स्वयंसेवकान पळोवन पानार वडल्यान कसलेंय वेस्ट जायना अशी पूर्ण प्रमाणाचेर त्या चरणान दाखोवन मंथरान तरी जेवता जावका जाल्यार वेळाचेर पंडित आहा समदर्शन आहा वी सर्व टुगेदर म्हळ्यार त्या प्रकारचेर खेळका. तशी जी प्ले टुगेदर आमी खेळतना जाल्यार आजी परस्पर जावन आशिल्लें एक प्रितीन सौहार्दतेन आमी खेळचे तसर खेळो. सोलो गेलो विन्न लॉस्ट जावचें हें सहज खेळा भितर विंगड कसलें तातूंत भितर विशय ना म्हूण ना. एक खंयची टीम विन जाता आनी एक टीम सलवता म्हणटना जय अपजय इत्यादीक खंडीत आसता. ते देखूनच समम कृत्वा लाभालाभ जया जयो म्हूण सांगून कृष्णान सांगिल्लें. लाभ नावे लॉस तशींच जय अपजय हें तुमी चेडवांनी ते प्रितीन स्विकार करता शिवाय ताजे वयर एक कोणें खूब चानज. तशी वी ईट टुगेदर आतां बडलेली बिस्कूट रोटळ्या तातमाला कापळ्या तशें करून आमी पुरो जनान ओट्ट मेळ काप पिवची खाण खावची की तेन्ना एक खुशाल. पुढे आमगेल्या देवळां भितर सुर्यपंत वाडतरी तातमाला देखून कापी वॉलंटियर्स आहेत आशिल्ले पुरो जनान गमतीर बसून त्या वेळार समान दृश्टीन करतना एकलो सावकार आसता
एकलो दुर्बळ आसता केलो बंदरकार व्हड सावकार तो बैसून आसा वॉलंटियर जावन एका ड्रेस कोडार आसा तागे लागीं काम करतलो नौकर आसा तो तेचे ड्रेस कोडार पट्ट्या तोडप न्हेसून आसा जाल्यार थंय ताका बंदरार ताका दंड तो हांगा वॉलंटियर राबता तांणी ओटो बैसून तात मला कापी ओटो पितात हें आमगेलें मंगळूरचें वॉलंटियर्सान एक लक्ष तशें वी टुगेदर कसलें खेळ जेवण आमगेलें खंयचे की ड्रेस कोड जाल्यार पळया तुमी तो अत्यंत व्हड जालो सावकार हो ताणें रथोत्सवा वेळार पाट्या तोडप न्हेसून तो ताजेर आसता तेंची आनेकलें काम करतलो सर बंदरार काम करच्या पुरो ना खंयची बिडी ब्रँचार काम करच्या पुरो तागेलो स्वयं जावन आशिल्लो उद्योग करतलो वृत्तीदारूय आसा जाल्यार तोय पाट्या तोडप घेवन देवस्थानां येता व्हड बायल मनीशी चांग करण्याची वैल एक स्थानमानाचेर आशिल्ली तेवय सम्रादांनी ओटो बसता वज्रा कुटिकाचेय बसता अशी मोत्यां कुटिकाचेय बसता लागी लागी बसून ओटो जेवचे ताका म्हणचे समाराधना सम्यक आराधना व्यवस्थीत जावन आशिल्ली तसो आराधना ह्या प्रमाणे आमगेल्या म्हालगड्यांनी एक घाल दिलेलें तशी मंगळूर वॉलंटियर्स म्हळ्यार सगळे हे साऊथ केनरा भागाचे वॉलंटियर्सांक तांगेले म्हळ्यार एक छाप म्हणटाची तांगेले एक म्हळ्यार एक आयडेंटिफिकेशन आसा तशें करून तुमी पुराय हे कार्यक्रमा भितर मेळ्ळ्याची तुमी पळय पंता 14 टीम 14 म्हळ्यार आमगेल्यान तूं अनंत म्हणून अर्थ 14 म्हळ्यार अनंत चतुर्दशी इत्यादीक सांगिल्लें तसलें हे पंता 18 गीताचार्यान सांगिल्ले वरीची ततो जयमुदीर येत म्हूण 18 पुराण 18 उपनिषद इत्यादीक सांगल्या वरी 18 म्हणाल कांय चिल्लर न्ही 18 म्हळ्यार जय म्हणाल एक शब्द भगवद्गीतेन तूं 18 अध्याय सांगिल्ले अशें विशेष जावन आशिल्लें तसलें एक रूप हांत भितरी आज तुमी बेसल्याची आनी आमी सर्व माध्व ब्राह्मण मध्वाचार्यान सान आसतना चिरड आसतना प्रप्रथम ताणें 37 ग्रंथ इत्यादीक बरयल्याची आमगेलो फिलॉसॉफर कोण म्हळ्यार आचार्य मध्व ताणें कंदुकस्तुती म्हणून केला हें क्रिकेट म्हणाल नंतर येयलें हाका निजावन नांव कसं म्हळ्यार कंदुक क्रीडा नामे गुळिक क्रीडा म्हणून अर्थ गुळिक म्हळ्यार गुळी म्हळ्यार फुडें पुराय बॉल गोळी म्हणचे तेन्ना पळया तुमी आमी लगोरी दवरून त्या बॉल दवरून फाटी मारचे आशिल्ले कळ्ळें आमी लगोरी म्हणून खेळचे ते मारचे फाटी मारचे रावचे तशें करून फुड्यांगा देवळा सुत्तां भितर खेळलो अर्दास बटनी आसाची कळ्ळें बलान मारता आशिल्लेची आमगेलो रघुराम भट बाबूस म्हणटले पेट्टे गांवच्या जायना आशिल्लें आतां आमी जर बॉल मेळ्ळ्यार ते नमुने बिसून मारता आशिल्ले अशी कंदुका म्हळ्यार एकाची मध्वाचार्यानी कंदुक स्तुती केल्या अंबरगंगा चुंबितपाद पदतल गुरुतर शकट तशें समतग समजव खगपती निरत म्हणून सांगून अंबरगंगा चुंबितपाद पदतल विदलित गुरुतर शकट कालीयनाग कर्पूरकाय हें पुंबुरय म्हणून सांगून ताणें कालीय मर्दनान पाय्यान एकक मत्तें शेषाचे महाशेषान काळिंगालें मस्तीत नांचिल खंय काळिंग मर्दन नित्य काळिंग मर्दना आराधन करची किरण पै सांगा बापाय तांची तसं ते कालिंग मर्दनाली स्तुतीची मध्वाचार्यान केलेली कशी म्हळ्यार एकक मत्तें अंबरगंगा चुंबितपाद पदतल विदलित गुरुतर शकट म्हणटना ते मात्ते सांगता काय मेगेल मात्याकय लागो म्हणून सांगून कृष्णाल पांय लागो का म्हणून माती लागी लागी व्हरता खंय काळिंग तशींच ताणें कंदुक स्तुती म्हळ्यार एक बॉल कशी उडता ना कशी मड्डोवका ना कशी बॉल एकल्याला हातान वता म्हणल्या बदल कंदुक स्तुती म्हणून सांगून मध्वाचार्यान दिला तसली ही कंदुक क्रीडा तुम्ही पुरा भाग गेल्याची तुमगे सर्व मनोभिष्ट देव दिवो म्हणून सांगून देवाला विशेष जावन प्रार्थना करता हातू विशेष मनुष्य जिवना भितर आमगेल्यान तूं कसं आसूचें म्हळ्यार आमकां संस्कार जावं म्हण तशें करून संस्कार दाखोवन दिवं तसलो खेळ हो क्रिकेट मॅच
क्रिकेट मॅच पळया 11 जण तुगेले विशेष रूपान करतना सोचे 2 जण बॅट्समॅन ताचे 11 आनी दोनी तयार जाले दोनी तुगेले सांगेल तसं अंपायर्स 15 जण ते देखून खंयचेय एक प्राण ना खंयचेय एक जीवशक्ती ना खंयचेय चैतन्य शक्ती जावका जाल्यार ताका 15 इम्पॉर्टंट म्हणून आमगेले धर्मशास्त्र सांगता ओंकारः इति 15 आवृत्तीं जप्तवा प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात् म्हणून सांगून प्राणप्रतिष्ठे भितर येता प्राणप्रतिष्ठेक 16 संस्कारार्थं 15 वृत्तिं ओंकारं प्रणवं जपेत नावे 15 ಬಂದು ಓಂಕಾರ म्हणून कामस प्राणप्रतिष्ठा जातना तशी पूर्ण जनाल प्राण तुमगेलांत भितर आसता तशें करून योग्य रुपार पूर्ण प्रमाणाचेर खेळा तुमकां बरं जाव धन्यवाद आचार्य माम आयच्या दिसान तूं सुरवेक सब ज्युनियर टिम्साचे लीग मॅच जावचे आसा तशी तांगेले जर्सी लॉन्च करून आतां उद्घाटन करता जर्सी तशी म्हणून हांगाशिल्ल्या वैदिकांक निमून घेता टीम्स नांव आपयतना तुमगेले ओनर आनी आयकॉन प्लेयरांना सुरवेक हांगा येवन जर्सी कलेक्ट करता तांणी जर्सी कलेक्ट केल्या तशी वर्लल प्लेयर्सांना जर्सी मागीर मेळटा तुमकां तुमी जर्सी हांगा येवन फर्स्ट 2 मॅच आसा जी फर्स्ट मॅच शेषा सुपर किंग्स आनी हनुमान वॉरियर्स हे 2 टीम प्लेयर्सांना जर्सी घालून जाले तितलो की पिच्चार लेफ्ट एंड रायट सायडार राबोवका म्हूण निमून घेता आसा सुरवेक हनुमान वॉरियर टिमाचे ओनर्स आनी आयकॉन प्लेयरांना वेदिकेर येवका जर्सी कलेक्ट करका हनुमान वॉरियर्स हांगेले ओनर आनी आयकॉन प्लेयर तेत आसाची वैदिकान तांकां जर्सी दिवन तांगेले जर्सी अनावरण करून घेवका म्हूण निमगूत आसा ग्राउंडार अशें सकडान क्लॅप मारून तांकां एक उत्साह दिवका आयचे नेक्स्ट टीम गणेश पॅन्थर्साचे ओनर आनी आयकॉन प्लेयर रेडी जावका हांगा येवका आतां जर्सी लॉन्च जाता आसा हनुमान वॉरियर्स चप्पळ येता बुका नेक्स्ट टीम येता आसाची गणेशा पॅन्थर्स गणेशा पॅन्थर्साचे ओनर्स आणि आयकॉन प्लेयर आयलांची नेक्स्ट टीम गरुडा रायझिंग स्टार्स हांगेले ओनर आणि आयकॉन रेडी जावका शेषा सुपर किंग्स कॉल करता आचार माम टॉस घालता जी टेल्स कॉल केलेला आहे हेड्स येईल असं
हनुमान वॉरियर्स टीम विन जावन हनुमान वॉरियर्स टॉस विन जावन बॉलिंग घेतलेलं आसा चेसिंग करताची तुमगेले प्रॅक्टिस कशी जाला आणि टीम कशी आसा Team like us, practice we केला batting and depth also. So we hopefully win this match. ओके आता टॉस घेऊन बॉलिंग घेवच्या कारण कसं आला त्यामध्ये फर्स्ट टार्गेट दवरता आणि तो ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर असतं त्या चेस करताना ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका दिसता प्रेशर उण असता का हांव बॉलिंग फर्स्ट घेतला चेसिंग इझी म्हणून लागता ते नवा तुम्ही टॉस विन जाला कसं करता आशिल्लेची आम्ही फर्स्ट बॅटिंग नवा आम्ही एक जावं जाल्यार तितल्या टार्गेट सेट करू पळयताचे आनी तांगेल्या ते डिफेंड करू पळोवक आमी तांची आनी नॅचरल गेम खेळची तितली आता पुढली वर्साचे दोन्ही मॅच हांगा खेळला तुम्ही पळयला तुमकां कितले टार्गेट दवरला रे विन जावचा पुरो म्हूण लागता तुम्ही 5 ओवराक काही ऑलमोस्ट 90 to 95 जाय हय अराउंड 90-95 रन काढता जाल्यार आमी विन जावचे चान्स आसा म्हणून सांगता सची शेषा सुपर किंग्स आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान शेषा सुपर किंग्स टीम हांगा बॅटिंग करूं येताची हनुमान वॉरियर्स फिल्डिंग रेडी जाताची तुम्ही दोन्ही टिमाचे प्लेयर रजिस्ट्रेशन करोस ते रजिस्ट्रेशन डस्कस रजिस्ट्रेशन करून येवका ताजे फुडें सर्व वैदिक आंगसाची तुमकां आशीर्वाद करताची वैदिकान ते स्टेजाला येद्रा तो गुराबोगा आणि सकट प्लेयर्स आशीर्वाद करून कामून निमगून घेतास आमगेले केंद्र हायस्कूल CBSE ग्राउंड अंतू प्रप्रथम बारी सब ज्युनियर्स कॅटेगरीचे पूरा लीग मॅच आहेत जावचे आसा तुम्ही सकडान हांगा येवन तांकां चीयर करका हांगेले रुल्स प्रकार भायर मारला रे तांकां सिक्सस जाल निमित्त तांणी हॉट टार्गेट दवरचे प्लॅन दवरला आत्ता जावचे फर्स्ट मॅचा नंतर वर्लड टीमा जाल्यार दुसरे मॅचांतू एक अंदाज मेळटा सुरवे मॅच म्हणटाना एक चॅलेंजिंग असता जाल्यार त्या वेळी एक एक्साइटमेंट चड असता सर्व वैदिक आशीर्वाद करता आसाची जाल नंतर दोन्ही टीमा कॅप्टन एक आयकॉन प्लेयरान येवन तुमगेली टीम रजिस्टर करका 5 मिनिट भितर मॅच स्टार्ट जावचे आसा टॉस विन जाल्ली टीम शेषा सुपर किंग्स हनुमान वॉरियर्स टीमान टॉस विन जाल्लो आसा तुमकां डगआउट 1 दिल्लो आसा शेषाक डगआउट 2 तुम्ही जाल तितलो की डगआउट ऑक्युपाय करका आयकॉन प्लेयर्स आनी येवन टीम रजिस्टर करका 5 मिनिट भितर गेम स्टार्ट ऑफिशियल्स आसा जी तांणी येता जी
असोसिएशन मेंबर हरीश कामत हांणी एक शंखनाद नुकून ताका एक इनॉग्रेशन करका तशी आता शंखनाद करू येता सजी हरीश कामत. धन्यवाद. ओवर टू कमेंट्री टीम. दर्शनाला फर्स्ट बॉल संकल्पक आयची दिसाच्या फर्स्ट टूर्नामेंट बॉल दर्शन टू संकल्प लायक मारला तांडून फर्स्ट बॉल स्कूला वैरी माडा पण वापस येईल ते बॉल सर रन फर्स्ट बॉल लायक एक शॉट म्हणून सांगेता बारी एक लायक शॉट मारला ताणा दर्शनाल दोन्ही बॉल संकल्पाक वापस गुडलँड मारला कॅच चान्स आशिल्ला मिस इट म्हणून सांगेत ह्याची जावन दोन बॉलाक स रन तिन्ही बॉल फुल टॉस नो बॉल अंपायर डिसिजन नो बॉल फ्री हिट की म्हणून दिसता फ्री हिट दर्शन आला वापस तिथले चंदुकोन मारला स्ट्रेट ड्राइव म्हणून सांगता सर अण्णा बारी एक एग्रेसिव्ह मुडार आसा संकल्प ताण म्हणलें तशी 5 ओव्हरात 90 रन टार्गेट सेट करून आयला तो अनेक सिक्सरीची धांवची कामां ना म्हणून सांगता बारी एक फॉर्मर दिसतो प्रॅक्टिस लायक केला दिसता चार बॉल 19 स्कोर पंचा बॉल घालूक दर्शन संकल्पाक मिस जावन पय्या मुळातला नोचून मिसफील्ड जालते जाल्यार रन धावनी 6 येताना वापस धांवची काम नाका म्हणून सांगून राबला तो लास्ट बॉल 19 रन संकल्प 18 वापस एक तिथला रायकोन पेटेला वापस है 6 यार ऑलरेडी 4 6 आयला एक ओवर एंडाक 25 रन याच एवरेज चमकलारी हंगेल 100 रन ग्याರಂಟಿ जात म्हणून दिसता नेक्स्ट बॉलर अरविंद आयला अर्णवाक फर्स्ट टाइम स्ट्राइक मेळता
Arvind, right arm round the wicket. Arnavaka, left hand batsman. फुल कर पड़ेला जायनी अरविंद आला दोन्ही बॉल आरावाक लेग साइड वाइड इप्पत्तारु जल वापस बॉलिंग एंड चेंज केल्ताना बॉलिंग साइड चेंज करून राइट टाइम राउंड द विकेट वापस वाइड नेक्स्ट बॉल आरो बीट जाला एद्दोलची माटे कंट्रोल डोर म्हूण संगीत वापस एक लायक कोण एक लेग साइड पुल केला सरन एद्दोलची माटे पळयला हांगेल सिंगल डबल बरो विशय ना सिक्सरी रन डील करता सान्नी दोन्ही एग्रेसिव्ह प्लेयर म्हणून सांगेत चारी बॉल घालूक अरविंद आरावाक वापस मारला कॅच जाऊ चान्स आशिल्ला जाल्यार तितले लायक फिल्डिंग तेगेला 4 रन रबयला ताणा धांवनी स्कोर संकल्प आरवा कसा की सांगतास अरविंद आला यावर लास्ट बॉल आरवाक चंदूकर लेग फिल्डिंग म्हणून रबेला त्या निखिलाना बारी लायक फिल्डिंग म्हणून सांगेत फर्स्ट ओवराक कंपेर केल्यार एक लायक ओवर म्हणून सांगेत 2 ओवर कंप्लीट जाता स्कोर 33 नेक्स्ट बॉल घालत असा पवन बॉलिंग गार्ड सांगता सर रन पे पळयता सर फर्स्ट बॉल आहे का तांडून मारला वापस आहे 6 फर्स्ट बॉल आहे का 6 मारला ताणा संकल्प दोन्ही बॉल फुल टॉस कॅच जाऊ चान्स की म्हण पडो का ನಲವತ್ತೈದು ರಂಜಲ್ ಟೋಟಲ್ ಅಗೆಲೆ ಸ್ಕೋರ್ 36 ಕೈ ಸಂಕಲ್ಪಾಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ ಗೆಲ್ದಾಸ ವಾಪಸ್ 6 एक दोन्ही पुरा विषयतून आता गेला 6 ची वापस 6 चार बॉल बैक टू बैक 6 पंचा बॉल घालूक पवन आला वापस लायक कोण मारला लेग साइड दर्शनान तितला लायक फिल्डिंग कोण उडेला
एक बॉल बीट झाला यावर लास्ट बॉल घालू का पवन संकल्पाक 57 रन झाला पवनाला लास्ट बॉल इनसाइड जाऊन चमकाला तिथे लायक फिल्डिंग केला ताना नेक्स्ट मॅच गरुडा रायझिंग स्टार्स आणि गणेश पॅन्थर्स जाऊच्या सर 3 ओव्हर जेतरी स्कोर टीम रजिस्टर करका गरुडा रायझिंग स्टार्स आणि गणेश पॅन्थर्स 57 टीम रजिस्टर करका संकल्पाला ಎದ್ದೊಳ್ಚಿ ಮಟ 48 ಜಲ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳು ಎತ್ತ ಸರ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಆರವಾಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಆರವಾಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ जलारी बेल्स पळणी तशें देखून आउट दिवचे जायना म्हूण अंपायरान सांगला लाईट जाला जलारी बॅड लक म्हूण सांगयता बारी लायक कोण बॉल घालेल ताण पाप बॅड लक म्हूण सांगयता का निखिलाಲ दोन्ही बॉल खेळू का संकल्प 48 रन्नर खेळता सर निखिलाಲ दोन्ही बॉल संकल्पाಲ 50 54 रन बारी लायक एक फॉर मारेला संकल्प वाईड बॉल अंपायरान वाईड म्हणून दिला ಎದ್ದೊಳ್ಚಿ ಮಟ್ಟ 65 ರನ್ जाला वापसही मारला संकल्पाना बारी लायक एक संगीत फॉर मारस म्हणू आणि मग तगला हंगल स्कोर 70 क्रॉस जाला तंतु एक काही धावून कळेल पळी नाव एक काही रन जाला री चारी बॉल निखिलाला वापस एक कॅच चान्स असा कोण येत म्हणून दर्शन आलोचून धरला ते बॅड लक म्हणून संगीत जला एक लायक एक इनिंग्स बिल्डअप కొంచెం कला लायक एक स्टार्टिंग दिला ताना तन्मयला 1 डाउन कीपर चेंज के दे पंचा बॉल निखिलाला तन्मय वापस संकल्प फॉर्म कंटिन्यू केला म्हणून सांगेत वापस 6 77 रन झाला यावर लास्ट बॉल निखिल तन्मयाक बारी लायक एक बॉल गेला म्हणून सांगेत जस्ट मिस स्टंप लागी गेला आता नेक्स्ट बॉलर अतर येता अतर शेणे 77 रन झाला 1 डाउन ताण सांगिल तवळ टॉस घालता सांगिल ताण आमगेल 90 रन टार्गेट म्हणू जत्तगी ना म्हण पळोका 6 बॉला कितले रन येत म्हण पळोका अतरू बारी चंद बॉलिंग गेले फर्स्ट बॉल बीट झाला तो ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಂತ ಜಕ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಪೋನ್ ಕಲ್ತಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜಲ ಯಾಪಂತ ಸರ್ ರನ್ ಮೆಳ್ಳ ಥोडे लाइन एंड लेंथ मिस जल दिसता का बारी बेजार जलता का तिन्ही बॉल घालू का स्कोर 83 1 डाउन वापस 6 अर्नावान वापस एक कवर सावर एक 6 मारला चारी बॉल घालू का अतरू आरावाक कॅच चान्स की कसं म्हण पळो का वापस 6
6 पावस येता सांगा. अथर्वाला 25 रन कंप्लीट केला. वापस एक स्ट्रेट मारणे एक या केला स्ट्रोक केला. स्कोर 101. तंगेल टार्गेट ऑलरेडी रीच झाला. फर्स्ट मॅच आयच्या 100 क्रॉस झाला. अथर्वाला लास्ट बॉल इनिंग्साच्या वापस 6. या ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ 1 2 4 ಪುರ ವಿಷಯನ 6 6 6. गरोडा रायझिंग स्टार्स आणि गणेश पॅन्थर्साच्या कॅप्टनचा नंग टॉस येऊ का, वेदिकेला येऊ का? दोघे कॅप्टनचा नंग येऊ का? गणेश पॅन्थर्स टीम टॉस विन जाऊन फील्डिंग येतील असं या नेक्स्ट मॅच. Hello, check. Hello, mic testing. 1 2 3. Check. Hello, check. Thank you so much, Sudhir Bhagavat. And we are in the first match number 1 of a prestigious SVT Trophy 2026, which is proudly presented by SVT Volunteers Association. आमगेला फूड काउंटर अंतू कापे नी येईल असं बिस्कुट रोटी कापे असते कोल्ड ड्रिंक्स सकडाने వచ్చును దళితులకి కాపీను కోల్డ్ డ్రింక్స్ పీను ఏవు का? So the mountain of rounds need to be climbed because they have to chase a huge total to win this match. 108 is the target and the signal came from umpire. Everything is ready for the first delivery. Right arm over the wicket balls and nicely leaning to drive, beautifully driven down to cow point region. They starts with the boundary. Of course, they needed such kind of explosive batting if they wanted to win this match. And 5 overs and 108 means it's a huge target set by the team Shesha Super Kings. Here comes the next ball, right arm over the wicket balls. This time lovely delivery and equally well played there by the batter. Off the back foot, Darshan pushed that away down to cow point region for a single. With that single scored numbers on to 6 on the board for no loss. The bowler in action, 5 corrections. This time lovely delivery, beautifully bowled there by Sankalpa. This time targeting that line which is outside the line of off stump. And Arvind tried to get the ball off the front foot, missed it completely. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Right arm over the wicket. This time ball is in there. Chance of catch there for the cow point fielder. He drops it. Might be the chance for the fielder to take the catch, and lucky escape here for Arvind. He couldn't manage to get the catch. Arvind got a life and scoreboard numbers on to
6 on the board without loss of any wicket. This time again, lovely delivery, beautifully bowled. Again, forcing the batsman on to the back foot. Not really trying to bowl in the puller length delivery, just bowling deliberately in that short pitch length, and it's good length for right-handed batsman. And again, the bowler back into attack. Sankalp balls, beautifully bowled. Try to york the batsman, low full toss. Missed it completely. Good over completed. Excellent over from Sankalp after a completion of first over, chasing a huge total of 108 runs to win this match. Searching for the right track, struggling in the middle. It's 7 without loss of any wicket. For the late comers, you are watching this cricket match for the juniors, which is proudly presented by SVT Volunteers Association, Karshit, Mangalore. A wonderful cricket tournament which is powered by Avaran Jewelers. Right arm over the wicket bounce. Yes, I've lofted. That will going to be a maximum. The needed such kind of treatment if he wanted to win this match, and straight away the intention is very clear here from Darshan that he wanted to go for the big shot, and he picked up a 6 for that. So with that 6, scoreboard now jumps into 13 on the board, 13 without loss of any wicket. Bowler Tanmay bowling with the short run off. Right arm over the wicket. This time again a short pitch delivery and pulls it away handsomely down to deep mid wicket for a maximum. So with that 6, scoreboard jumps into 19 on the board without loss of any wicket. So such kind of cricketing stroke is badly required because 180 is not an easy total to chase down. Almost 21 or 21.5 runs per over is the required run rate. They need to get such kind of cricketing stroke in each and every over. One more full toss, one more drive, and straight into the long off region for one more 6. And this is a hat-trick 6. This is absolutely perfectly driven by the batter Darshan. Darshan again facing next delivery. Right arm over the wicket, he balls. One more full toss and one more drive into the long off for a maximum. Everything right behind the stroke. He getting that juicy full toss and 4 ball and 4 sixes in a row. And the scoreboard numbers on to 31 on the board. So 5th time in this over. Right arm over the wicket bowls. Again, it's going to be a no ball, and need to wait for the umpire decision how much runs it is. Is it 6? Yes, it is a 6. That means 7 runs added to total. 1 plus 6, 7. And with that 7 runs, scoreboard moves on to 38. One more and one more. It might be, I think, a record-breaking over if we manage to get another 6. Is all we can see, the 6, 6, 6, 6, 6. And scoreboard jumps into 44. If you hit 1 6 here, and that might be the 41 runs in an over, it might be the record. You can get a 36 in a 6, but getting 41, oh my goodness. But it's a strategy, the game plan there from Darshan. Just he wanted to keep the strike for the next over. So what a fantastic over for the team Hanuman Warriors. And in this particular over, the batter Darshan he played like a Warriors. And 6 sixes and 1 no ball. That means 37 runs came from this over. 38. 1 single, exactly. Huge over. 45 is the score, and Ayush brought into attack. And it starts with the no ball. It's going to be a beamer. Umpire has got no hesitation to call that no ball. The free hit delivery for the batter, the golden opportunity to grab, to get that free hit delivery for at least for the maximum. Ayush. Once again, no ball and a 6. 7 runs. This is the second 7 in this innings. No ball, which is the batsman Darshan reaching for the delivery. You know exactly, he will going to get the no ball anyway. Why not trying for the big shot? And 50 comes up. Now 54 on the board. 54 in exactly 2 overs. 53 on the board.
One more full toss. It's going to be a 59. And of course, umpire getting some exercise because never let the batsman be the umpire to be relaxed. You have to be lift his leg, lift his hands every time, every deliveries. Ayush again. Right arm over wicket balls. This time lovely delivery and good stop by the fielder. Very good stop indeed by the young. The jersey number 08 absolutely given everything for that fielding and no chance of any run. And, after a long time he got a dot delivery. Ayush again to Darshan. Darshan lofted and it's going to be a 6. And with that 6 I think he's crossed the 50, I think so. How many runs Darshan is batting? He's batting on 61. 61. Second 50 of this match. The first 50 which is scored by Sankalp, who scored 60 runs and he defeats that record. Now he's batting on 61. One more full toss and one more drive. It is dealing with the sixes here now. And just entertainment. Just like Sudhir Bhagat is talking about is raining, but raining is not in the form of water, but in the form of sixes here in Kendra High School Cricket Ground. Right arm over the wicket balls. Oh, this time wide outside the line of off stump. The batter just left the ball, seeing the line which is outside the line of off stump, and Skoban moves on to 72 on the board. 36 more runs required for the victory. 36 needed for the victory. Ayush. Right arm over the wicket. Yes, again leaning into the drive, taking that in the pull, and driven that one into the deep long off for a maximum. All we can say that the batsmen are dealing with the sixer. No question of a single, no question of couple, no question of even the boundaries. All are dealing with the sixes. 78 is a score. This sensible, absolutely sensible batting. He just wanted to keep the strike. He picked up a single for that. One more over which is comes to an end after completion of over number 3. Chasing 108 to win this match. 79 on the board. 79. That means 29 needed for the victory in remaining 2 overs. 29 needed from 2. 12 balls, 29 runs required for the victory. It's a completely different weather condition. Little bit overcast condition in the evening here in Mangalore. We're dealing with the winter season. And here comes over number 4 from the far end. The bowler brought into attack Ananta, and Darshan will go into face. Darshan lofted. He is unstoppable. He is unstoppable today. And taking most of the bowlers for a maximum. Expect one over which is a starting over, which is a quiet over. But after we are seeing that the 6, 6, 6, 6 everywhere. Here comes next one. All right, over wickety balls. One more. Everyone is bowling full toss delivery. The Darshan is absolutely playing a one-man army. He's playing a one-man army. Skoban moves on to 91 on the board. Supporters of Hanuman, they're absolutely there on the feet. Here comes the next one. Right arm over the wicket balls. Top edge. Opportunity created for the fielder to take this catch. He drops it. My goodness. I don't think he dropped the catch, but he dropped the match. He drops the match. He's not drops the catch. Giving life for Darshan means it's going to be all over for the opposition team. Oh, this time lovely delivery outside the line of off stump. Arvind is not really up to the mark after his partner is playing so well. His job is to get the single and let him to come into the striker's end. 92. 92 on the board. 16 runs required for the victory. Down the leg side going to be a punishable, not from the batter but from the umpire.
The ball is missing the line, outside the line of leg stump. And with that addition of that extra scoreboard, moves on to 93. 15 needed for the victory. It's going to be a record run chasing if they manage to get that run. This time driven, set that down the ground, and they completed a single direct hit, and it's gone. It's absolutely, it was lazy running between the wicket there from Arvind, and he's back in the pavilion. The first wicket back in the pavilion. The partnership of 93 runs, which is comes to an end. If you believe me or not, out of 93, Arvind scored only 1 run. And out of 93, Arvind scored only 1 run, and the rest of the score which is coming from Darshan. Darshan is batting on 87. He's got a golden opportunity to complete his century. He's batting on 87. The 15 which is a required run, and 13 which is needed for Darshan to complete his century. And it was absolutely milestone for any batter to getting that 3 figure. Wait and see. 15 needed from last over. This time stabs the ball into the mid-wicket region. I don't know why Darshan picked up a single. And now 5 balls remaining. Over now completed. Sorry, the last ball which is picked up a single. Now I thought it was the first delivery. Sorry for that. So now he's back on strike. 94 means in the last over, 14 needed in last over. Bowler brought into attack. Arnav. This time left it, and he got a distance. What a magnificent struck. Technically very sound player, Darshan. And his individual score now moves on to 94. Just 6 needed. 1 6 will going to get him into the century. Here we go. Full toss down the leg side, going to be a wide. 1 more extra. With that extra scoreboard now moves on to 90. 101. Team score is 101. But he needed 6. Team needed 7. It's going to be a very, very interesting equation. This time, he completes the century. The first century, the made in this Canara High School cricket ground, and Darshan is the one is registering his name. And round of applause coming from around the ground. The supporters, the spectators, the organizer, everyone appreciating the effort of Darshan. What a magnificent display of batting performance here from Darshan. Entertainment and enterprising cricketing stroke he played in this innings. Driven down to long on. That's it. Victory. Hanuman Warriors. They played like a Warriors. Defeated Shesha. And when celebration begins, everyone is lifting Darshan for his wonderful innings. Darshan, the one-man army. Out of 108, he individually scored 104. 104 unbeaten from Darshan. What innings he's played. He will going to remember this match for a long time. Electrician ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಾನಿಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್. So we are into the match number 2 in the junior category, and the match will be played between now the 2 teams is already ready here to perform in this platform. Garuda Rising Star versus Ganesha Panthers. So before
The match will going to start here. It's a time to change in wise. शौर्य गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद lofted. This time I think this could be a chance. Oh, he dropped that one. He dropped that one in his second attempt at the last moment. आसान सा मौका जरूर था लेकिन मिस जजमेंट वहां पर फील्डर जो सीमा रेखा के अंदर खड़े हुए थे और ये कैच जो कि यहाँ पर फील्डर छोड़ चुके हैं, अनिकेत फील्डर थे और बल्लेबाज यहाँ पर जीवदान न प्राप्त करते हुए. 1 run added to the total. It's 22 without loss in the over number 2 in progress. और श्रेयस भाई सामना करते हुए शौर्य के गेंदों का. Full toss, lofted, clean hit, and he's got the distance at last. और छक्का इस वक्त उनके खाते में जुड़ चुका है और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 28 रनों पर. 28 without loss in the over number 2 in progress. Fantastic progressing here for Garuda Rising Star. और 3 ओवर का खेल इस ओवर के बाद अभी भी बाकी और दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. शौर्य अगली गेंद लेकर तैयार. Lofted, clean it, flatter version in front of commentator box for a maximum. और लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पर के बीच जो खाली क्षेत्र था उस क्षेत्र से गेंद को इस वक्त निकाला छक्के के लिए. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज शौर्य इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. Lofted, again a maximum. Short delivery, and he just lofted that one in style over the roof of our commentator box for a maximum. 40 on the board. This is an absolutely terrific progressing here. और गेंदबाज शौर्य अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. Again 6 runs, 3 sixes in a row. और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त 4 sixes in a row. That means last 4 deliveries Shreyas dispatched it for 4 maximums. और गेंदबाज शौर्य अगली गेंद लेकर तैयार. 6 number 5. 5 sixes in a row, and this is turning out to be a fantastic over in Garuda Rising Stars point of view. और 2 ओवर के समाप्ति के बाद ऐसा कहना पड़ेगा Garuda Rising Star are now looking in a commanding situation. It's 52 for none after 2 overs. Vinyas, the bowler, is now brought into the attack. और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के छोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करते हुए. आशुतोष लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े. 1+1, 2 runs now added to the total. और इस बीच विन्यास अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. और जहां तक श्रेयस भाई का सवाल है, अब तक 7 छक्के यहां पर कहना पड़ेगा अब तक झड़ चुके हैं. लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. Just drifting down the Rexart at the last moment. और 1 रन एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ. And with that single run, the scoreboard moving up to 55 without loss at the start of the 3rd over. Vinyas. Again, top edge, and I think it might clear the fence. Yes, into the roof of commentator box stand. 6 number 8 came from the bat of Shreyas Pai, and the scoreboard is now raising up to 61 now. निस्संदेह एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन देते हुए यहाँ पर श्रेयस. लेग स्टंप और इस वक्त विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया. आफ्टर फर्स्ट बाउंस रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. Scoreboard stays at 61 without loss in the over number 3 in progress. Absolutely a fantastic progressing year for Garuda Rising Stars. और विन्यास अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस अगेन मैक्सिमम. What a fantastic batting display continuing here from Shreyas Pai. लगभग हर गेंदे को इस वक्त छक्के के लिए डिस्पैच करते हुए. और विन्यास अगली गेंद लेकर तैयार.
Again, the flatter version. One more 6. 73 now. 9-6 hit by Shreyas Pai so far. He's batting on 61 in fact. और विन्यास अगले गेंद लेकर तैयार. Again and just cleared the fence. This time it just slipped off wider. और छक्का यहाँ पर प्राप्त करते हुए. With that 6, Shreyas Pai moving up to 67 now. The side total is now moving up to 79. और विन्यास काफी महंगे साबित होते हुए इस ओवर में अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार एक और छक्का. हर गेंद पर छक्का इस वक्त लगाते हुए और रन इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए यहाँ पर गरुड़ा राइजिंग स्टार्स के लिए. Absolutely fantastic progressing here. 2 overs completed. 3 overs completed. In fact, after 3 overs, they are looking in a commanding situation. It's 85 for none. और निकेत अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया. इंटेलिजेंट, एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट, चतुर क्रिकेट अपनाते हुए इस वक्त अनिकेत जानते हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक श्रेयस पई को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा. और स्ट्राइक रोटेट इस वक्त कर चुके हैं. श्रेयस पई इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. अनिकेत अगली गेंद लेकर तैयार. लेफ्ट हेड, 6 रन्स. They are heading towards to their 3-figure mark. Garuda Rising Stars. और अगली गेंद ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ into the gap as well. One more boundary. And with that boundary, the century comes up for them. 102 now. 102 without loss in the over number. Just 4 in progress in their innings. 102 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट 6 रनों के लिए. 108. And now Shreyas batting on 89. सिर्फ 11 रन मात्र अपने शतक से दूर. और इस वक्त देखना यह है कि गेंदबाज श्रेयस पई पर किस तरह से अंकुश लगा पाते हैं. हल्के से खेल दिया. सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. स्ट्राइक रोटेट करते हुए 1 run added to their total. He is moving up to 90 with that single. The side total is now moving up to 109 after completion of 4 overs. 4 gone, 109 for none. Garuda Rising Stars are now looking in a commanding situation. Vivan, the bowler, starts the fresh proceedings. और पहली गेंद लेकर तैयार. Lofted 95. 96 in fact for Shreyas Pai now. Now just 4 runs short from his century. और इस बीच विवान अगली गेंद लेकर तैयार. That's it. Century for Shreyas Pai. Absolutely fantastic knock. Progressing here from him. 102 not out. And this is the second century of this tournament in the very second match of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026. Vivan. Lofted again. 108. दर्शन ने पहले मैच में शतक जड़ा था और उसके बाद अब श्रेयस पई शतक दर्ज करते हुए और स्कोर बढ़कर अब पर पहुंच चुका है 127 रनों पर. 127. Now just 3 balls left in overall calculation in their innings. Vivan. Lofted 6 runs. 133 without loss.
Just 2 balls left. और 108 रनों पर इस वक्त पहुंच चुके हैं बल्लेबाज श्रेयस भाई. He is batting on 108. 114 in fact. 114 is batting on 114. Vivan drives, good stop, but it's got a boundary. It's got a boundary for that. फॉलो थ्रू में अपना हाथ जरूर अड़ाया था, लेकिन गेंद उनके हाथों को चीरती हुई स्ट्रेट हिट एरिया पर निकल गई 4 रनों के लिए. नाउ द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. और देखिए यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पर मिसफील्ड हुआ था. Lofted and he just finished the innings in a style with a 6. So the total score is 143 without loss after completion of 5 was scored by Garuda Rising Stars against Ganesha Panthers. And now they set a huge target of 144 in front of Ganesha Panthers. Fantastic knock came from Shreyas by 124. He's remained unbeaten on 124, including 19 sixes and 2 fours. And because of this fantastic knock of 124 runs unbeaten, Garuda Rising Stars finished very well with the 143 without loss after the completion of 5 overs. Now the target is a big 144 for Ganesha Panthers, and let's see can they reach the target or not. और 144 रनों का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा गणेशा पैंथर्स के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स बल्लेबाजी में बैटिंग में अपनाते हैं. उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त मिले लंबे समय के साथ ही अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब गणेश पैंथर्स की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. नेक्स्ट मॅच शेषा सुपर किंग्स आणि गणेश पॅन्थर्स मध्ये जाऊच आहे. गणेश पॅन्थर्स टीम आता खेळता असेल निमित्त या मॅच तरी इमिडिएट टॉस जाता. शेषा सुपर किंग्स टीमान या मॅच जाऊचे पुढे तुमगे टीम रजिस्ट्रेशन डेस्क तो रजिस्टर कर का. गरुडा पॅन्थर्स मॅच जाल्ल तशीची टीम कॅप्टन हंगे रजिस्टर करून इमिडिएट टॉस जाऊ का. अंत मध्ये कसले डिले ना गणेश पॅन्थर टीम नोट करा. So thank you so much, Gopi, and we are into the match number 2 of this prestigious SVT Trophy 2026, 25-26. In fact, it's the 26. It's not a 25. Already we are completed 2025, and we are into the new year. And what a start for the new year! And some. The batting display we can see in the first 2 matches, the 2 centuries which is scored, and it might be the day which is belongs to the batters paradise today, and 2 centuries which is scored so far in the 2 matches. The first century by Darshan, and after that Shreyas in this particular match in the first innings he scored 124 runs, 124 runs, and of course, because of the dimension of this cricket ground is very small, it's not a huge cricket ground, so maybe the organizer is thinking about that small children are playing, they were very difficult for them to hit the 6, but they have to think a lot next time when giving that opportunity for juniors. They need to think about that rules and regulation, and a lot of runs which just came from 2 matches. So wait and see how well these 2 opening batters will going to lay the foundation. Of course, they are chasing a huge run, a huge target. They have to climb the mountain of runs, and the way to see how well the team Ganesh Panthers will going to get this total. So opening batters, Vivan and V4NEWS. So everything is ready here. Umpire straight away is given the signal. Here the start of the first over. Right arm over the wicket balls. The short pitch delivery just over. It's almost into the body level of the batter. Is a little master, isn't it? Vikram for Vivan. It might be the little bit too high for him to pull the ball. And if you see the bowler Shrikant is absolutely has got a good height. So he just exploiting that
benefit of the height, getting some extra bounce. This time slashed it beautifully. And he's not agreed that I am that much of short enough to deal with such kind of deliveries. He played it beautiful and exquisite lofted extra cover drive for a maximum. So with that maximum, Skoboda moves on to 6 on the board without loss of any wicket. And V1 with a very good batting stance he has got, slight bit of high bat lift and get ready to face next delivery. Again, once again, splashed it away. Fantastically struck. And he's sending a strong message for the bowler is that if you try to bowl me a short pitch delivery, I can become tall enough to get that one into the extra cover. So 2 consecutive lofted drive towards extra cover. The identical mirror display of the previous stroke. And with that couple of sixes, Skoboda moves on to 12 on the board. Shrikant Pai bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. This time again he slashed it and just got the distance. Hat-trick 6 came from the bat of V1. And what a great reply coming from Little Master. And the 3 back-to-back sixes takes the total score into 18 without loss of any wicket in the over number first is in progress. Now Shrikant Pai have to look a little bit different. I have to try for different here to this man. Once again, the result is the same. He's absolutely happy to deal with the sixes, especially in the offside region. We have seen a lot of sixes straight down the ground into the mid-wicket, long on. But this man is absolutely enjoying the strokes in that area at extra cover and cover point. It's 24 on the board, back-to-back 4 sixes in a row. And he's on fire now. Shrikant Pai. Final time in this over. This time pulls it away. Chance for the fielder to long on. And mid on, in fact, takes the catch. That's end of V1. Not really able to pull the ball. Not really getting that much of position to pull the shot. And V1 ball is a little bit high for him to get that pull shot and pays the penalty for that. First wicket back in the pavilion. Shrikant Pai strikes. It's 24 for 1 after completion of over number first. $144, which is a target. Beautiful googly, the leg spinner. Well, Ashutosh, so far we are seeing so many fast bowlers are being punished. Now Ashutosh is, I'm watching the spin bowler is brought into attack. Just like I'm remembering the Abdul Qadir is spinning the ball. Again, now chance here for the fielder to take the catch, and the spinner got a wicket. Fantastic display of leg spin bowling performance here from Ashutosh. Beautifully executed and lovely leg spin bowling performance here from Ashutosh. I'm just watching his bowling trick and before he was going to deliver the ball. If you see that he's spinning the ball and coming wide of the crease, and then while delivering the ball, just have a look at that. Beautiful appeal for caught behind, just an excitement rather than the confidence. Great piece of bowling performance here from Ashutosh. Fantastic. It's not so easy in the small ground to come and bowl the leg spin deliveries. Once again, this time he got that one. This time he got that one into the mid wicket region for a maximum. Aniket, the batter, got that one into the mid-wicket for the 6. With that 6, cover jumps into 30. Oh, wrong one! My goodness! What a delivery there from absolutely the right on the money. This is absolutely Jaffa from Ashutosh. Wrong one. If you see that he bowled every delivery is a leg spinner, and have a look at this wrong one here from absolutely fantastic. Beautiful delivery, isn't it? Batsman misreading that might be the leg spin, but it's coming into the batter. Now uprooted and disturbed the furniture. What a great delivery there from Ashutosh. Fantastically executed that off-spin delivery. Shaurya is the new batter in. This over is turning out to be a great over for Garuda. Rising stars. ते फूड कोर्टात उन्हा बिस्कुट रोटी आसा कोणा मेळ्ळी जाल्यार तितलो घेवच्यो न्हू खाव का
नेक्स्ट मेन्यू चेंज जाता मागीर. Ashutosh absolutely dealing with some fantastic deliveries. And this time again the wrong one, but ball is might be that they're having a brushing the bat of the batter, so no damage done. Over number 2 completed. Great over, fantastic over there from Ashutosh. Wicket and economical over. So after completion of over number 2, searching for the right track, scoreboard is 30 on the board. And Ganesh Panthers, they have to deal with some big shots. Shreyas Pai, man who got 100, back into attack with the one more spin bowler. Orthodox off spin bowler, played it down to short square leg division and misfilled by the fielder. They got a boundary for that. So with that boundary, scoreboard moves on to 34 on the board for the loss of 3 wicket. Vikash is on strike now. Shreyas, second time in this over. Lofted, handsome looking drive. Ball is in the off volley. The batter just get that front foot into the line of the ball and played it lofted drive into the long off for a maximum. So with that 6 scored moves on to 40 without for the loss of 3 wickets. Shreyas bowls to Vikash. Vikash drives and he got a boundary between extra cover and cover point region for 4. With that boundary scored moves on to 44 on the board for the loss of 3 wicket in the over. Number 3 is in progress. 14 already came from this over in 3 balls. शेष सुपर किंग्स टीमाचे आयकॉन प्लेयरांक घेवन टीम रजिस्टर करका. Vikash wanted to drive. Of course, he left the ball. Misjudgment. Of course, a wide ball by umpire. Not a misjudgment. I think the bowler tried to get the ball inside the line. Gone outside the line of them too far. This is a better line compared to the previous one. Much better and within the reach of the batter. One more dot ball from Shreyas. Shreyas again bowling away from us. Right arm over wicket, balls to Vikash again. Lovely delivery. Wicket keeper little bit excited. He thought the batsman is out of the crease, but he's uprooted the stump by shying the stumps and no damage done. So good comeback by Shreyas after that. 14 runs in 3 balls, and then he bowled 2 very good deliveries to tighten up the screws in this over number 3rd. So next match, the match number 3 of the junior category, Shisha Super Kings versus Ganesh Panthers. Immediately after this match, that match will go into commence. Here comes next one. Right arm over the wicket, Telios. Lofted, and it's going to be a maximum. And a small ground, and batsman will going to enjoy the big shots here. So one more 6 and one more over, which is comes to an end after completion of over number 3 and chasing a huge total of 144 to win this match, and searching for the right track. Team still struggling in the middle. 52 on the board. $51 for 3, correction. Last 2 overs remaining. Oh, lovely delivery, good bowling. Abhi brought into attack. One more spin bowler is in action. The Garuda Rising Star has got some orthodox spin bowlers in the side. Leg spinner, after that 2 off spinner brought into attack. This time played it into the mid-on, not for run. Dot deliveries. And of course, each and every dot ball will make that target a little bit tougher and stiffer for the team. Ganesh, lovely delivery, beautifully bowled, fantastic one there from the bowler. Umpire asking for the 3rd umpire. The first third umpire referral goes to the 3rd umpire to see whether the batter is short of his crease or not. Good work done by the wicket keeper. Maybe the batsman is in trouble. The wait and see what could be the decision from the 3rd umpire. Karthik is the one in the 3rd umpire position to watch whether it's going to be out or not. But maybe the batter tried to drag the bat. That is out. He is short of his crease. The fantastic work done by the wicket keeper. Good presence of mind.
It's 51 for 4. Abhishek got a wicket for his account. Oh, that's a beamer. And, gone over the head of the bowler batter, in fact, and no ball called by umpire. Free hit delivery for the batter. Abhi again. Right arm over. Balls down the leg side going to be a wide. Little margin for error when you try to get the ball in the onside region. Wide call, that means the free hit continues. The free hit continues here for the batter because of the wide ball. Abhi will going to deliver the next ball. Lofted and handsomely, and he will going to get the distance and one more 6. So with that 6, Kobana moves on to 59 for 4. In the over number 4 is in progress. Last 7 deliveries remaining, but still a long way to go. Again pulls the ball nicely into the deep square leg for one more 6. Over number 4 completed after completion of correction, 1 ball remaining. 1 ball remaining, 1 ball remaining. Over completed. So last over remaining, 65 for 4. 144 is the target. That means the huge runs to get to win this match. 75 needed from 1 over, and it's highly impossible. Just a 4 minutes left in this game to complete the victory for the team Garuda Rising Stars. You are watching match number 2 of the prestigious SVT Trophy 2026. This time pulls it away, flare fielder underneath it, and it takes a catch. 1 more wicket back in the pavilion. Wicket number 5 gone, and the bowler Vaishant Vaishu has got his first wicket in the first delivery. Shravan is the new batter in. The new batter have to be in a strike because yes, little master Shravan this time played it very nicely, and he got a distance. Was nice looking drive there from Shravan, and 71 for 5. This time played it back to bowler, going for a run, chance of run out, and is gone. He's short of his crease. 1 more wicket back in the pavilion in the form of run out. The 6th wicket back in the pavilion. Last 3 deliveries left in their innings. Just 4 minutes they have to complete. Next match as a toss chala sondita saji. गणेश पॅन्थर्स टीम टॉस विन जावन बॅटिंग घेतील आसा. जशी शेषा सुपर किंग्स टीमान जाली तितलो की फील्ड येवन रेडी जाव का. इमिडिएट मॅच स्टार्ट जाता नेक्स्ट. प्रकाश कामत डोंगरकेरी आणि वेदिकेरे कॉमन निमगून घेता आसाजी.
शेषा सुपर किंग्स टीम फील्डिंग येवका फर्स्ट कॉल तुमके हैं. आज नेक्स्ट हनुमान वॉरियर्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्सचा मॅच. इनिंग्स ब्रेक आणि तो टॉस जावचा असा. फर्स्ट इनिंग्स जाता असताना हनुमान वॉरियर्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्सचा टीमाच्या कॅप्टनाने येऊन टीम रजिस्टर कोरका. मॅच चलतीतलो की स्टार्ट करका मागीर ओव्हर कट जाता. टाइम दिलेल्या निमित्त जायन जाल्यार ओव्हर कट करताची. हाजे नंतर आईच्या रात्री सीनियर कॅटेगरी मॅच जावचे आसा. जाल्या निमित्त स्टेज फंक्शन वरल पुरे कार्यक्रम आसा. मॅचा खंय वेळ करूनच ऑफिशियल्सान नोट करका. लेट केल्यार ओव्हर कट करका. धन्यवाद सतीश. So the match number 3 of this prestigious cricket tournament SVT Trophy 2026 season 4 is now going to start. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. मैच इस वक्त शुरू होने जा रहा है शेषा सुपर किंग्स और गणेश पैंथर्स के बीच. और इस वक्त गणेश पैंथर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी बैटिंग करने का निर्णय लिया. आई रिक्वेस्ट द एक्स्ट्रा प्लेयर ऑफ बोथ टीम्स टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली टू टेल द प्लेयर्स नेम. Extra player, please to be reported here. So the first ball of the match number 3 of this tournament is now coming up. Ganesh Panthers, extra player. So the first ball of the match number 3 of this tournament is now coming up, and the bowler is Arnav. विवान इज नाउ गोइंग टू फेस. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. ये गेंद बेहतर गेंद थी, थोड़ी सी उछाल लेती हुई ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता चूके, लेकिन गेंद सीधे पहुंची. इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में रन्स नहीं मिलेगा. जूनियर विभाग में ये मैच नंबर 3 यहाँ पर शुरू हो चुका है. और इस बीच गेंदबाज अर्नाव गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद उछाला इस वक्त और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुके 4 रनों के लिए. खूबसूरत स्ट्रोक था इस वक्त. मिड ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे थोड़े से सीधे तैनात और गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुके हैं इस वक्त 4 रनों के लिए. इस चौके के साथ इस वक्त विवान का खाता खुल चुका है. रन संख्या रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. शेषा सुपर गणेश पैंथर्स के लिए, माफ कीजिए. और इस बीच गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ और इस वक्त निशाना चूक चुका है. इट्स गोइंग टू बी मोर रन. 1+4 5 रन्स एडेड टू द टोटल. और रन पंचक इस वक्त जुड़ चुका है. और जहां तक सवाल है, हेलो बैट्समैन, यू आर ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड. तो 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. और यहां पर डिक्लेयर शॉट समझ कर रहे हैं बल्लेबाज विवान ने स्ट्राइकर एंड की ओर आई थी.
आए थे और यहाँ पर सही तरीके से इस वक्त ऑफिशियल्स ने उन्हें वापस भेजा है इस वक्त नॉन स्ट्राइक लाइन पर। और गेंदबाज अर्नव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए, थोड़ी सी उछाल लेते हुए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाज अर्नव गेंदबाजी करते हुए, इस बार गेंद को उछाला और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक विकास के बल्ले से लगता हुआ इस वक्त। और जहां तक सवाल है, गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया था और स्ट्रोक्स में तो पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके छक्के के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर और गेंदबाज अर्नव अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। पटके विकेट, टॉप एज एंड इट्स गॉन, इज क्लियर डिफेंस। कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर विकास और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रन पर 21 विदाउट लॉस। निस्संदेह इस वक्त जूनियर विभाग के बच्चे इस वक्त एक अपनी हुनर, टैलेंट जो कि यहाँ पर दिखाते हुए और काफी प्रतिभाशाली। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो अर्नव गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दिस टाइम द बॉलर स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स, इन फैक्ट सेकंड ओवर स्टार्ट्स। और तन्मय गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। स्कोर बोर्ड स्टेज एट 21 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। और तन्मय इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, गॉड इज आउट एज एंड दिस टाइम इट माइट बीन कट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस। सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 22 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज तन्मय अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, पटकी हुई गेंद पैरों पर टकराई, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर पहुंच चुकी है। बेहतर फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पर जो छोटे कद के खिलाड़ी थे रामचंद्रा, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया इस वक्त। और रन यहां पर बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 22 विदाउट लॉस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। फुल टॉस और इस बार गेंद विकेट कीपर से पैर पर टकरा चुकी है। जहां तक रनों का सवाल है, यहाँ पर रन्स मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर 23 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो तन्मय ये गेंद टॉप एज, लेकिन गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रनों पर। और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। ड्राइव किया इस वक्त, खूबसूरत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद फील्ड होती हुई इस वक्त। जस्ट अ सिंगल ही कॉट एंड विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 25 on the board, yet to lose any wicket in the over number 2 in progress. और गेंदबाज तन्मय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस इन द एयर, चांस एंड टेकन बाय द कवर पॉइंट फील्डर। जहां तक सवाल है, अपने दोनों हाथों से गेंद को इस वक्त दबोच लिया था शॉर्ट कवर के फील्डर ने और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है। और देखिए एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है गेंद को किस तरीके से उछाला था और किस तरीके से लपका गया था शॉर्ट कवर पर। First wicket fallen. Vikas the man dismissed. Number 3 batsman is now comes out to the middle. विन्यास इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए अनंत गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार यहाँ पर विवान न सामना करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज अनंत गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए। लव्ड इट, दिस टाइम ही क्लियर डिफेंस, फैंटास्टिक स्ट्राइक। बल्लेबाज के पास समय था, शॉर्ट गेंद थी और इस शॉर्ट गेंद के उछाल को पहचानते हुए गेंद को इस वक्त उछाल दिया मिड ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। बेहतर स्ट्रोक इस वक्त विवान के बल्ले से लगता हुआ और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। दिस टाइम मिसेस, जस्ट ट्राइंग टू हिट द बॉल, नॉट सक्सीडेड। और विकेट कीपर दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करते हुए रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा।
तक के हालात को देखकर ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर शेषा सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने अब तक एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. This time driven that one down to mid on, gone for a quick single, and this time he misses. The throw went just wide off the stumps at the last moment. और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बचते हुए 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर, जबकि उनकी पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर. निश्चित रूप से कम 100 के आंकड़े तक यहां पर पहुंचना होगा. यहां पर गणेश पैंथर्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो इस बार बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, इन स्विंगिंग डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर. और गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गए. विकेट कीपर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करते हुए रन सब बल्लेबाज को नहीं मिला. एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज गणेश पैंथर्स के अनंत और अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए और इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए विन्यास सामना करते हुए. फुल टॉस, पल्स एंड जस्ट बीट द फील्डर एट मिड विकेट. फ्लैटर वर्जन 6 केम फ्रॉम द बैट ऑफ विन्यास. काफी मुश्किल सा मौका था और इससे पहले कि फील्डर जो खड़े हुए थे मिड विकेट पर अपनी बाई और इस वक्त झुके, गेंद उनके हाथों को चीरती हुई निकल गई इस वक्त मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. गेंदबाज फिर से एक बार तैयार. यह गेंद उछाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस एंड द स्टैंड गॉट इन विद चांस ऑफ रन आउट, लेकिन इस बार चूकते हुए. दोनों मौकों में इस वक्त बल्लेबाज बच चुके हैं और जहां तक सवाल है पहले कैच आउट के मौके से और दूसरा मौका जो कि था यहाँ पर रन आउट का नॉन स्ट्राइक रन पर, लेकिन इन दोनों मौकों में भाग्य इस वक्त बैटर के साथ देता हुआ और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, Ramachandra, the bowler, starts the fresh proceedings. 39 for 3 after completion of 3 overs. 4th over starts in their innings. इस बात बेहतर गेंद इस वक्त उछालना चाहता, चूंकि छोटे कद के खिलाड़ी रामचंद्रा निश्चित रूप से एक बेहतरीन गेंदबाजी के साथ शुरुआत कर चुके हैं. जीएसबी समाज के उभरते हुए नन्हे से खिलाड़ियों के बीच ये क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर आज खेली जाती हुई और निश्चित रूप से ये नन्हे से सितारे यहाँ पर अपना हुनर इस मैदान पर दिखाते हुए. और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, लफ्टेड इस बार क्लियर करने में सफल और इसे छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 40 रनों पर. 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 46 in fact, 46 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. और इस बीच गेंदबाज रामचंद्र इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तैयार. विन्यास इस वक्त सामना करते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद रामचंद्र इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ राउंड द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा हो सकता है, थ्रो पहुंचा, लेकिन इस वक्त विकेटों के सामने खड़े हुए थे गेंदबाज. अगर विकेटों के पीछे खड़े रहते तो शायद यहाँ पर रन आउट हो सकता था, स्टंप्सों पर अगर निशाना टकरा था, लेकिन यहाँ पर विकेटों के आगे खड़े रहे गेंदबाज और थ्रो को जब तक वो कलेक्ट करें. बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके थे और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 47 रनों पर. 47 for the loss of 1 wicket. Full toss, square off the wicket, and he finds the gap as well. Just clearing the fence. 50 comes up for Ganesh Panthers. 53 on the board in the over number 4 in progress. चौथा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. 4th over in progress in their innings. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त रामचंद्र गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ढीली गेंद उछाला मिड ऑफ पर 6 रनों के लिए. एक और छक्का इस वक्त लगता हुआ विवान के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 59 रनों पर. देखिए किस तरीके से विवान ने इस छक्के को उछाला था, मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है, बिल्कुल मिड ऑफ द बैट कनेक्टेड एंड डिस्पैच्ड इट इन स्टाइल. और इस बीच अगली गेंद
फुल टॉस ड्राइव कर दिया, अक्षय कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल और मिसफील्ड वहां पर होता हुआ और स्कोर बढ़कर इस एक रन के साथ पहुंच चुका है 60 रनों पर, 60 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स. हनुमान वॉरियर आणि गरुडा रायझिंग स्टार्साचे कॅप्टन्सान हांगा येवका, हे लास्ट ओवर जाल तशीची टॉस जाता, वेदिकेला दोगांनी येवका. Match number 3 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026, now progressing here, season 4 in the junior category. और जहां तक सवाल है इस वक्त पहली गेंद का, तो पहली गेंद पर एक रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 61 रनों पर, 61 for 1 एट द स्टार्ट ऑफ द 5th एंड फाइनल ओवर इन फैक्ट. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज संकल्प गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बार पैरों पर टकराए, बेहतर गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े और इस वक्त एक रन प्राप्त करने में सफल. 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में संकल्प फेंक चुके हैं और इस एक रन के साथ बढ़कर अब स्कोर पहुंच चुका है 62 रनों पर, 62 for 1 इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. Bowled him! Excellent delivery from the bowler Sankalp, extra quicker and he just got the lead of the batsman. गेंद मिडल स्टंप के टॉप पर टकराते हुए बेल्ट से उखड़ कर गिरते हुए, ऐसा कहना पड़ेगा. यहां पर देखिए, जस्ट लुक एट दिस इन द रिप्ले, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर, द बॉल पास्ड बिलो ऑफ हिज बैट, स्टक टू हिज middle stump in fact, and the bells are now disturbed. This is an outstanding delivery from the bowler Sankalp. विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, दूसरा विकेट गिर चुका है. The batsman dismissed is Vivan, or the new batsman is Siddharth is now comes out to the middle as a number 4 batsman for Ganesh Panthers. Sankalp. Quicker, absolutely marvelous delivery, just missing outside the off stump. और गेंद इतनी तेजी के साथ गुजरे कि बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला. इस गेंद पर बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज संकल्प, इस बार उछाला हवे में, लेकिन फील्डर मिस जजमेंट और गेंद सीमा रेखा के अंदर जब तक दोबारा फील्ड की जाए, बैकअप की जाए. एक रन का इजाफा हो चुका, 1 run added to their total, 63. नाउ जस्ट लास्ट बॉल रिमेनिंग ऑफ देयर इनिंग्स और संकल्प गेंदबाजी करने के लिए तैयार इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज विन्यास के लिए. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. संकल्प टू विन्यास, शॉर्ट डिलीवरी और इस बार रन लेना चाहा लेकिन नहीं मिलेगा. फैंटास्टिक ओवर केम टू रन फ्रॉम संकल्प, हु कंसीडेड just 3 runs in this over and got the wicket of Vivan in a beauty delivery, in a fantastic delivery, and innings is up for Ganesh Panthers. They finished with 63 for the loss of 2 wickets in the stipulated 5 overs, and they set a victory target of 64 for Shesha Super Kings. Now they have to score 64 with the required run rate of exactly 12.80 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them 64 रनों का लक्ष्य शेषा सुपर किंग्स के लिए यहाँ पर गणेश पंथर से रखा और देखते हैं यहाँ पर 64 रन 64 रनों के लक्ष्य तक का पहुंचने के लिए शेषा सुपर किंग्स के बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी बैटिंग इस वक्त अपनाते हैं. तो इस वक्त शेषा सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब शेषा सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. नेक्स्ट मॅच गरुडा रायझिंग स्टार्स टीम टॉस विन जाऊन बॅटिंग घेतला. The first ball, a lofted at one, down to deep long on for a maximum. And the first time watching that, the low scoring game, of course the 5 overs 64 is not low scoring, but in this particular cricket round, I think it's a low scoring game. No ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit delivery for the batter. 2 ball call by umpires, so going to be a free hit
And Sankalp is the batter who batted brilliantly in the first match, is already off the mark. And bowler Shaurya, right arm over the wicket, full toss and swings it hard. And he got the distance as well. And it's going to be a 1 more 6. And Shaurya just couldn't manage to get that line what he really wanted to deliver. And again that full toss delivery, juicy full toss, even that is a free hit delivery. Batsman hit that one very freely down to deep square leg for a maximum 13 without loss of any wicket. This is a good line. This is a good line from the bowler as he bowls Shaurya. You know exactly how, if he bowled to the arc of Sankalp, he will going to disappear the ball out of the park, so that he just wanted to deliver just into his legs, into the body line, and no run scored. Shaurya. Balls full toss, again the full toss, is not really learning from the mistake. The 6 number 3 in this over, and scoreboard numbers on to 18 on the board. Sankalp already made a Sankalp that he wanted to finish this match as quick as possible. 19 on the board, and 45 needed from 27 deliveries. We can see in the LED screen in left of our commentary box, V4 24/7 channel having a live telecast of this cricket tournament. One of the most this time bowled him, cleaned him up, disturbing the furniture and cartwheeling the off stump of the batter. Sankalp departs. Shaurya hitting the off stump. It's always is happy to see that whenever the fast bowler hitting the stumps, uprooting the stumps, is always the time for the celebration for the bowler. The Sankalp Shaurya is very much delighted with that wicket. Why not? He got the wicket of Sankalp, and the new batter in Tanmay came into bat with the jersey number 05, and Shaurya to continue from the far end. From the stage end, right arm over the wicket, he delivers. Full toss, again treatment. Exactly what doctor ordered. And can't do the mistake of when bowling in this small cricket ground. He can't bowl that full toss deliveries. After that wicket taking delivery, and he bowled the full toss, and batsman capitalized that one into the deep square leg for a maximum. 25 comes up straight away in the first over. Now 39 needed from 25 deliveries. After this match, the match number 4 will be played between Hanuman Warriors versus Garuda Rising Stars. Both the teams, please get ready. Oh, very close to the off stump and very close to the bat as well. No ball called by umpire. Once again, it might be the overstepping from the bowler. The second no ball of this over, and a free hit delivery for the batter. 26 for 1. Shaurya struggling with his rhythm, what he couldn't manage to get as back to his bowling mark. Right arm over the wicket, he delivers. Lofted into the long off, stand and delivered. Effortlessly played it down to long off for a maximum, and with that 6 scoreboard numbers on to 32 for 1. After completion of first over, is a big over, expensive over which just comes to an end, and the team absolutely cruising towards the victory. Team Shesha Super Kings looking in a commanding position there in the driver's seat of winning this match. V4NEWS is a new bowler in, have to do something special from this over. After that expensive over, now Arnav will going to be the striker, the left-hand batter. The first ball lofted and the treatment once again for that juicy full toss from the left-hand batter. Arnav lofted that one down to deep long on for a maximum. So with that maximum, scoreboard moves on to 38. 26 needed from 23. One more. 6 number 2 in this over. And dealing with the sixes. No need for fielders inside the boundary line. All batsmen are going with the big guns with the 6. 44 for 1. 20 needed from 22.
Vinyas, third time in this over. Again, driven powerfully. Good stop by the fielder. Chance of run out in the start striker's end. And he's short of his crease. One more wicket back in the pavilion. Excellent piece of fielding there by the fielder at Extrakawa. Just have a look at it on the replay. He's using his feet to stop the ball, fix the ball, returns the ball very quickly, and the wicket and the bowler complete the formalities of uprooting the stumps. Wicket number 2 gone. It's 44 for 2. Right arm over the wicket balls. Oh, very close to the off stump. Lovely delivery. And from the bowler Vinyas, as he bowled a good one just around the off stump. The ball is just missed the stump by a whisker. 44 for 2. Drives that one in the gap. It's going to be a boundary. Rare boundaries. You can see that all runs are coming in the form of sixes. Now it's a boundary after a long time. 48 for 2, 16 needed for the victory for team Shesha Super Kings. Leading for the delivery, chance for the catch, and he drops it. The chance of run out as well, but they missed it. One more run added to total. 49 for 2, 15 needed for the victory. Ganesh Panthers already they lost their first match. Even team Shesha Super Kings also lost their first match. Both the teams are lost their opening match. So very important match for both the team to win this match to be in the competition. Here comes the next one. Right arm over the wicket. Shravan the bowler, and he lofted into mid wicket for a maximum. So with that 6, they're coming very close to the target. Just 9 needed for the victory from 17 balls. 50 comes up for the team Shesha Super Kings. Just 9 needed for the victory. One more huge 6. Absolutely nailed that one into the deep mid wicket for maximum. 3 needed to complete the formalities in this game for the team Shesha Super Kings. They will going to register their first victory. Unfortunately, they lost their first match. Even they got 100 plus runs. Target which is set. Again, inside edge of the bat. No runs scored. Just 3 needed from 15 balls. Hanuman Warriors defeated Shesha Super Kings in the first match. Garuda Rising Star defeated Ganesha Panthers in the second match. This is the match number 3 is in progress. Lofted, and that's it. The victory for the team Shesha Super Kings, registering their first victory in the tournament. And unfortunately, Ganesh Panthers they lost their second match. And now the match number 4 will be between Hanuman Warriors versus
First ball lofted and he's got the distance at last. So first ball 6 and next one from the bowler again on side पर गेंद को उछाला मिड विकेट पर छक्के के लिए. तो इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को उछाला इस वक्त 6 रनों के लिए. तो 3 गेंदें और 3 छक्के और बेहतरीन शुरुआत इस वक्त श्रेयस कर चुका है. जहां तक श्रेयस का सवाल है, पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 124 रन की अविजित पारी उन्होंने खेली थी. ही स्कोर्ड अनबीटन 124 इन द प्रीवियस मैच. श्रेयस भाई और उस सफलता के सिलसिले को यहां पर आगे बढ़ाते हुए अगेन 6 नंबर 4 एंड ही जस्ट लुकिंग ऑन फायर. 4 गेंदे 4 छक्के और श्रेयस एक बार फिर से यहाँ पर अपना जलवा इस मैदान पर दिखाते हुए और निखिल गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. लेग स्टंप से बाहर 6 नंबर 5 सिक्सेस इन ए रो और जरूरत है एक छक्के की 6 सिक्सेस पैनल में इस वक्त जुड़ने के लिए. और जहां तक सवाल है इस वक्त निखिल का, तो इस वक्त अंतिम गेंद बेहतर नहीं. 6 सिक्सेस इन ए रो. व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर श्रेयस भाई. 6 छक्के पहले ओवर में 36 रन्स केम फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्टार्ट फॉर श्रेयस भाई. और पहले ओवर में 6 छक्के बटोरने के बाद देखना है कि अगर 5 ओवर तक पूरे बल्लेबाजी करते हैं श्रेयस भाई तो कितने रन यहां पर बना सकते हैं. पिछले मैच में नाबाद 124 रन 124 अनबीटन स्कोर्ड बाय श्रेयस भाई इन द प्रीवियस मैच एंड नाउ ही स्टार्टेड ट्रेमेंडसली इन दिस मैच. 6 सिक्सेस इन द फर्स्ट 6 डिलीवरीज. फर्स्ट बॉल इस बार उछालना चाहा गेंद इस वक्त शॉर्ट सरमान पर बेहतर तरीके से फील्डिंग कर ली गई. नो रन स्कोर्ड. सीनियर टीम्साचे चारी ऐकॉन एक कॅप्टन्स एक ओनर्स आना हांगा रजिस्ट्रेशन डेस्क आहे कमुंडी म्हणून घेतास. तो गेंदबाज दर्शन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी अपील एंड इज गॉन. इन फैक्ट गोल स्टॉपर ऑफ द बैट एंड विकेट कीपर कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटी बिहाइंड द स्टंप्स. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. और जहां तक सवाल है इस वक्त विकेट कीपर का, तो विकेट कीपर इस वक्त इस कैच को लपकने में सफल. टॉप पिच पर टकराने के बाद गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी. और दर्शन का जहां तक सवाल है, तो दर्शन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. दर्शन जिन्होंने पहले मैच में हनुमान वॉरियर्स के लिए शतक झड़ा था और अविजित रहे थे और यहाँ पर गेंदबाजी में अपना हुनर यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज इस वक्त तैयार. दर्शन अपने ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद बेहतर गेंद थी. इस वक्त उछाला मौका कवर पॉइंट फील्डर के लिए और इसी के साथ विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 2 इज नाउ बैकिंग टू पवेलियन. उछालना चाहता स्क्वायर ऑफ द विकेट, टॉप पिच पर गेंद टकराई और आखिरकार गेंद को लपक लिया गया. और यहाँ पर देखिए एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. सॉफ्ट डिसमिसल एट कवर पॉइंट by the fielder and the batsman has to depart. 2 wickets down, 36 on the board. Second over in progress और 6 छक्के झड़कर इस वक्त श्रेयस भाई नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद 6 गेंदों में. और इस बीच गेंदबाज दर्शन बेहतर एक्शन, बेहतर गेंदबाजी की एक्शन. और जहां तक सवाल है बेहतर लेंथ और लाइन और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर दर्शन इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट. He already captured 2 wickets in this over और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Good one, fantastic delivery. Just kept lower, just went wide of the stumps. और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो सिर्फ एक गेंद इस ओवर में बाकी और गेंदबाज इस वक्त तैयार. Again, this time top edge and clear defense. अंतिम गेंद पर छक्का जरूर लगा लेकिन ऐसा कहना पड़ा कि बेहतरीन ओवर, फैंटास्टिक ओवर केम फ्रॉम दर्शन. एंड आफ्टर 2 overs
42 for 2. The equal battle is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गरुड़ा राइजिंग स्टार जो कि पहले बल्लेबाजी करता हुआ हनुमान वॉरियर्स के खिलाफ इस वक्त 42 रन जोड़ चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर शुरू होता हुआ अथर्व गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, फुल टॉस, swings and 6 runs. 7 consecutive sixes for श्रेयस। और अथर्व जो कि छोटे खिलाड़ी जरूर लेकिन काफी प्रतिभाशाली और यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का जरूर प्रदान कर चुके हैं। देखना है कि अगले गेंद में वो किस तरह से यहाँ पर कम बैक करते हैं। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद फ्लाइट है, it's gone caught behind. In fact, it's got a big nick on that and wicket keeper made a no mistake. Darshan took the catch and that is the wicket number 3rd. So Shreyas departs after being hitting 7 consecutive sixes. Have a look at this in the replay. Just gone for a mighty heave. Got his big nick. He's got a big reflection on that and the wicket keeper behind the stumps made no mistake. और श्रेयस का बेशकीमती विकेट गिर चुका है। 7 छक्के 42 रन उन्होंने बनाए और 8 गेंदों पर 42 रन बनाने के बाद इस वक्त पेविलियन वापस लौटते हुए। स्ट्राइक रेट इस वक्त 525, 525 strike rate for Shreyas. 42 runs he scored in just 8 deliveries. Love that in the air and he dropped that one. He dropped that one this time. Straight forward chance gone in vain. मिड ऑफ पर जो फील्डर थे इस वक्त गेंद से ऐसा कहना पड़ेगा अपनी नजरें उन्होंने हटा लिया अंतिम क्षण में। मिस जजमेंट होता हुआ और यहाँ पर बल्लेबाज जीवदान प्राप्त कर चुके हैं। और अथर्व फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा एंड विद दैट सिंगल रन द 50 कम्स अप फॉर गरुड़ा राइजिंग स्टार। और इस वक्त अथर्व गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेल दिया। इस वक्त रन्स नहीं लेना चाहेंगे और जहां तक रनों का सवाल है रन इस वक्त रुक चुके हैं 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों के समर्थक सपोर्टर्स अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ पर खासकर इस वक्त गेंदबाज अथर्व का जो कि नन्हे से गेंदबाज है लेकिन बेहतर गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए गेंद को खेल दिया। इस वक्त कवर पॉइंट पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 51 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और इस ओवर में अंतिम बार अथर्व गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। Driven down to mid-on, brilliantly fielded, chance for a knot and this time he's gone! He's gone this time, fantastic work made by the bowler Atharva after receiving the throw very quickly. He's just flicking the wickets. And a good piece of work also made by the mid-on fielder just inside the wickets. Have a look at this in the replay. Damdar stroke था, बेहतर फील्डिंग इस वक्त, बेहतर रिटर्न, बेहतर पिकअप और बेहतर तरीके से इस वक्त विकेट को उखाड़े गए इस वक्त गेंदबाज अथर्व द्वारा। तो विकेट गिर चुका रनआउट के रूप में एंड व्हाट अ फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बॉलर्स ऑफ Hanuman Warriors after being conceding 36 in the first 2 overs. They come back very well, conceding just 15 in the next 2 and also they captured 4 wickets. 2 ओवर का खेल बाकी, अभी गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। Loved that one and this time I think just 6 runs. Celebrations is going on there, but I think it's crossed the fence. इनका जूता जो, इनका पैर जो है सीमा रेखा से बाहर जा चुका था, लेकिन यहाँ पर फील्डर को कुछ इसका पता ही नहीं है। वो यहाँ पर सेलिब्रेशन जश्न मनाते हुए, लेकिन छक्का यहाँ पर घोषित करते हुए अंपायर। और देखिए यहाँ पर हैव अ लुक एट दिस रिप्ले किस तरीके से हुआ था। गेंद हवे में उछली, गेंद को इस वक्त लपक लिया गया। देखिए यहाँ पर जस्ट टच द फेंस एट द लास्ट मोमेंट और यहाँ पर छक्का घोषित कर चुके हैं। तो 6 रन उनके खाते में जोड़ चुके हैं। 57 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट। अभी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा, नो बॉल का इशारा। मिसिंग 2 फॉर द लेग स्टंप, वाइड नो बॉल इन फैक्ट। फुड कोर्ट अंतु सैंडविच ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಣ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಅನ್ನಿ ಸಕಡನ ಜನ ಖಾವ್ का मॉर्निंग मंगेता सर। 58 for the loss of 4 wicket और गेंदबाज अभी लेग स्टंप से बाहर एक बार फिर से वाइड का इशारा। 1 more wide added to the total scoreboard, moving up to 59 for the loss of 4 wicket। अपनी सही लेंथ और लाइन को तराशते हुए इस वक्त गेंदबाज अभी 2 लगातार एक नो बॉल और एक वाइड यहां पर फेंक चुके हैं।
Loved it, and I got that one for a maximum. 65 for 4 now. बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 65 रनों पर. 65 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. अभी गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, स्लोवर गेंद, 6 runs. Consecutive sixes for the batsman. वैशांत बल्लेबाज जो कि 4 छक्का अब तक झड़ चुके हैं और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए. और गेंदबाज इस बीच अभिनंदन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा, थ्रो. इस बार थ्रो को रिसीव करने में सफल. 1 रन बल्लेबाज को मिला. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 72 रनों पर. 72 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. निस्संदेह 100 का आंकड़ा यहां पर पार करना होगा. यहां पर गरुड़ा राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो. और इस बीच अभिनंदन अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार पल्स एंड 6 रन्स. शॉर्ट गेंद थी और बल्लेबाज के पास मौका था इस वक्त गेंद को उछालने का छक्के के लिए. और जहां तक का सवाल है इस वक्त छक्के का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 78 रनों पर. 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. एंड दिस इज द ओवर नंबर 4 ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और गेंदबाज अभिनंदन इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, छोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. यह गेंद इस बार पुल किया. इस वक्त मिड विकेट पर मौका, जी नहीं, गेंद क्लियर हो चुका है इस वक्त स्क्वायर लेग पर छक्के के लिए. 4 ओवर्स कंप्लीटेड. और यहां पर देखिए टॉप एज पर जरूर गेंद टकराई थी, लेकिन स्ट्रोक्स इस वक्त जा चुका है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए. 84 on the board. 4 overs completed. Last over is now going to start in their innings. अरविंद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर छक्के के लिए. एलईडी स्क्रीन के दाईं ओर इस वक्त गेंद जाकर खंबे पर टकराती हुई और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 wickets now in this situation. 5 balls left in their innings. अरविंद गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार. लेग स्टंप से बाहर, just drifting down the leg side at the last moment. Single run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 91 in fact. 91 for the loss of 4 wicket in the over number 5th and last started just short वाले को. और अरविंद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. इस बार गेंद को खेल दिया. बेहतर गेंद इस वक्त मिड विकेट पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन प्राप्त करने में सफल. 92 नाउ. 92 for the loss of 4 wicket. Just 4 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज अरविंद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फुल टॉस और गेंद को खेला मिड विकेट पर, लेकिन गेंद को रोकने में सफल बेहतर तरीके से. फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय मिड विकेट फील्डर. 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 1 more run added to the total. और देखिए किस तरीके से गेंद को रोका था सीमा रेखा के अंदर. बेहतर फील्डिंग. अरविंद फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, वाइड का इशारा. और ऑफ कटर गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर गुजरती हुई वाइड के रूप में रन उनके खाते में जुड़ चुका है. 94 for 4. 3 balls left in overall calculation in their innings. Arvind. Good one, better one. Get some extra bounce. और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 94 रनों पर. 94 for 4. The second last ball of their innings is now coming up. Arvind bowls. Drifting down the next side, wicket keeper misses. Just a single run. In fact, it's 1+1. 2 runs added. They come back for the second, and this time I think he's gone. He's gone at the striker end. Run out happened. So 2 runs added to the total and a wicket lost in this delivery. So यहाँ पर देखिए किस तरीके से रन आउट हुआ था और 2 गेंदें अब बाकी है उनकी पारी में. Still 2 balls left in overall calculation in their innings.
और अरविंद इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पटकी हुई गेंद उछाला लंगॉन पर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ 100 comes up for Garuda Rising Stars. 102, one ball left. अंतिम गेंद इस वक्त बाकी, लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और इस बीच अरविंद अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, top edge, and he's got the distance straight in front of our commentator box stand, and he just finished the innings in a style with a 608 runs scored by Garuda Rising Stars, and now the target for आता या मॅच जातरी हांगा स्टेजार एक सान ट्रॉफी अनविलिंग आणि वरलाल जर्सी अनविलिंग प्रोग्राम आसा। ताजे नंतर सब ज्युनियर मॅच कंटिन्यू जाता। अंत मध्यंतू सीनियर टीम कॅप्टन एक ओनर हांगा येईल कोणा असल्यारी जल्तीत लोक घेवन तुमगेल जर्सी हांगा कलेक्ट करका। एक टीमाच मात येईल आसा जी वरलाल 3 टीमाचे सीनियर मेंबर्स कोणाय असल्यारी टीमाचे जल्तीत लोक हांगा येवन तुमगेल जर्सी कलेक्ट करका। स्टेज प्रोग्राम जातरी नेक्स्ट मॅच असचे शेषा सुपर किंग्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्स। या मॅच जाल तशीची फर्स्ट टॉस जाता मागीर स्टेज फंक्शन जाता। जाल निमित्त शेषा सुपर किंग्साचे कॅप्टन हांगा येवन तुमगेल टीम रजिस्टर करका। या इनिंग्स जाऊ भितर तुमगेल टीम रजिस्टर जाऊ का। धन्यवाद। तो इस तरह से मैच नंबर 4, मैच नंबर 4 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट इन जूनियर कैटेगरी, Hanuman Warriors versus Garuda Rising Stars will now progressing here. The target is 109 for Hanuman Warriors set by Garuda Rising Stars, और देखना है कि हनुमान वॉरियर्स इस 109 रनों के लक्ष्य तक 109 के लक्ष्य तक पहुंच पाता है, यानी निर्धारित 5 ओवर्स में, यानी निर्धारित 30 गेंदों में। और हनुमान वॉरियर्स की पारी की यहाँ पर शुरुआत होगी छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर हनुमान वॉरियर्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, Gopi. 109 target set for the team Hanuman Warriors. Here comes the first ball. The centurion of the previous match is in strike, and first ball starts with a wide by the bowler Ashutosh, and a good bowler, good spin bowler, orthodox leg spin bowler, and it can mix the ball very well. And this time short missile, when you're going for the full shot, it's going to be a huge one. Big fish in the net. The celebration, we can understand that they know exactly they got a huge fish in the net. And the man who got a century in the previous match has got 100 behind his name. Unfortunately, he's just wanted to go for the pull shot. Doesn't get hold of that improperly. And Ashutosh, what a wicket for him. Absolutely huge fish in the net. Fantastically delivered. And leg spin delivery. The batsman think it might be a shot enough for him to go for the pull shot, but he played it straight to the hands of short mid wicket. Here comes the next one, right arm over the wicket. Oh, lovely delivery, brilliantly bowled by Ashutosh. He's really on the heart of all cricket lovers here. The talents which is coming from the GSB community, absolutely got a future as far as his bowling action is concerned. Beautiful leg spin bowling action. Not only bowls the leg spin, but all together it can bowl, mix the ball very well with some wrong one and the straighter one. A fantastic bowling display. So long way to go. 108, which is a target for the team. Hanuman, the Warriors absolutely there in a worry that they lost the wicket of Shreyas. From the ball is coming from long way. Ajit Pai and But umpire ground saying the ball is just going over the stumps. Beautifully bowled by Ashutosh again.
Right among ब्रेस्ट फुड्डाच्या सुधीर पै आणि येईल the wrong one. आणि जाल्यार वेदिके रेवका. After that, 2 leg spin balls, he bowled off cutter beautifully, and the batter has got no answer for particular delivery. So far, only 1 run conceded in this over. And this time, chance for the fielder to take. Oh, he drops it. He drops it at cow point ridge, and it might be the wicket number 2 for Ashutosh. But unfortunately, the fielder has dropped the catch, and scoreboard numbers on to 2 on the board for the loss of 1 wicket. Here comes Ashutosh with the googly leg spin bowling. Beautifully bowled. The fantastic over which comes to end here of Ashutosh. 2 runs and a wicket from Ashutosh, and what a wicket here for Ashutosh. The wicket of the centurion, the who got a century in the previous match. Shreyas back in the pavilion, Dhanush back in the pavilion, and it's 2 for 1. 107 is the target, and 109 is the target, correction. And they got only 2. And first ball of the over, number 2nd, and welcome with the boundary. Welcome boundary 6 in fact by the batter, and the bowler brought into attack to bowl the 2nd over. Junior टीम्साचे कॅप्टन एक आयकॉन कोणी येईल जाल्यार तुम्ही हांगा रिपोर्ट करका. तुमगेले जर्सी लॉन्च आसा जी ज्युनियर टीम्साचे मेंबर्स रजिस्ट्रेशन डेस्काला येवन तुम्ही रिपोर्ट कराची. Thank you. And Kedar is off the mark with the 6, and here comes Abi, right arm over the wicket balls. Ooh, a lovely delivery indeed. The ball is almost stuck into the back foot of the batter. No run scored. Good comeback here by the bowler Abhishek. You know exactly how to restrict the big shots in his over. Right arm over the wicket. Balls to Kedar. Oh, bowled him, cleaned him up. He just disturbed the furniture with that beautiful delivery, which is straight a 1, and between bat and pad hits the stumps. Wicket number 2 gone. Just have a look at the replay. The batsman just tried to make a little bit room to play the shot, and bowler just following the batter. Fantastically delivered. And once again, have a look at the replay again in the LED screen. That was a perfectly delivered. Fantastic bowling performance. 8 for 2 in the over, number 2nd in progress. One more lovely delivery. Off cutter coming into the batter. Off the back foot, played it down to short extra coverage and for a single. With that single, scored moves on to 9 for 2. It's very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by the bowlers of Garuda Rising Stars. Short pitch delivery, left it into the deep long on for a maximum. So with that 6 covered, moves on to 15 for loss of 2 wickets. Still needed the more runs. 95 more runs required for the victory. Away again. Balls wanted to go for the expensive drive. Lovely work done by the wicketkeeper behind the stump now. No third umpire. So that umpire will go in to give their own decision. It's a not out from Rupesh, the umpire. Rupesh. It's not out, and the batter is safe. The benefit of doubt is given for the batter. It's 15 for 2. It's 94 required from 18 balls. So over number 2, which is comes to an end. Two good overs for the team. Hanuman Warriors of Garuda Rising देवस्थान Stars. ट्रस्टी गणेश कामत महिलांची त्यांनी वेदिके रेवका म्हणून नेमून घेता सर. Shrikant Pai. Oh, take outside edge of the bat. Wicket keeper behind the stump missed it and went into the boundary. Straightforward opportunity for the wicket keeper to take the catch. And just have a look at the replay. The ball which pitched in the line. Lovely delivery. A little bit extra bounce. And the deflection coming from the bat. 19 on the board for the loss of 2 wickets. Still long way to go. 19 needed from 17. Pulls it straight to the hands of mid wicket. Not for run.
Small ground, very difficult to get the single when the ball is coming very quickly to the fielder. Shrikant Pai, right arm over the wickety balls. Beautifully balled, kept low, last moment. Very good line maintained by the bowler so far. Shrikant is a tall man. We can see that in that the bowling department of team Garuda Rising Stars, they have got two tall players, Shrikant and Danu Shreyas. This time catch it is a call and shot of the field went into the fence. One bounce for 4 runs. With that bound, discovered Namozan to 23 for loss of 2 wickets. They needed such kind of treatment from the batter to get into that target. The over number 3 is in progress. Still long way to go for the team Hanuman Warriors. They have to play like Warriors if they wanted to win this match. A lovely delivery, good line. Bowled outside the line of off stump. Seeing the batsman is standing well outside the line of leg stump. And just getting that line away from the batter. And a very important dot ball. 86 needed from 13 balls for Hanuman Warriors. Lofted, and he will going to get the distance for that. And 6 runs in this last delivery of the over number 3rd, which is comes to 9. It's 29 for 2 after completion of over 3. 80 needed from 2 overs. And it looks like just a format is left in this game, because 18-2 means even 12 sixes will going to take them into 72. Still they got a shortage of 8 runs, so that I think it's all over for the team Hanuman Warriors. Beautiful off-cutter there from Vaishu. And wicketkeeper in a fraction uprooted the stumps, questioning over the umpire. आजी आमगे लोटू हांगा अजित पै मामा इलांची आनी दिवंगत अण्णप्प पै मामनी निर्मला पै हंगेले सुपुत्रो हंगी सावकार बाप पै फॅमिलीचे मेंबर तशीची आईचे दिसांतू डिलिव्हरी म्हळ्यार एक हॉड ऑर्गनायझेशनाचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जावन आनी काम करता आसाची हंगेले अंडर मस्त जन आसाची आमकां एक बारी खुशी विचारता हांगाचे कॅनरा हायस्कुलाचे एक स्टुडंट जावन तांणी सूर केलेले बॅचलर डिग्री NIT के दुकोनू मेकॅनिकल इंजिनियरिंग जावनू तशीची PG आनी IIM बेंगलोर दुकोनू डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट केल्ले हलव संस्थेंतू काम केलें तांतू लोधा ग्रुपांतू एसोसिएट वायस प्रेसिडेंट जावन काम केला डिलिव्हरी इंडियाचे एक लार्जेस्ट फुल्ली इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्वीस प्रोवायडर आमगेले हांगा मंगळूरा दुखून सूर केलेले आनी बिल्ड फ्रॉम स्क्रॅच केला ताजे निमित्त आमकां एक भारी गौरव विचारू आनी आमगेलो टसाची आमकां मस्त नमूने सहाय्य केला आमगेल्या एसोसिएशना तर्फेन हांकां एक गौरव अर्पण करता म्हणून हांव आमगेल्या प्रेसिडेंटान निमून घेता आसा अजित पै मामाका आता स्वागत करता आसाची .35 for 2. So one more wicket back in the pavilion. I think now last over remaining, and they have to get huge runs to win this match. 75. तशीची आमगेलो टू प्रेस्टो फुड्डाचे सुधीर पै माम जाल्यार हांगा वेदिकेर आसाची आनी जाल्यार आमकां मस्त एक हेल्प केलेलो आसा हे एक टुर्नामेंटांत हांकां जाल्यार एक पूल दिवन स्वागत करता तशी मेमेंटो दिवका म्हूण निमून घेतास धन्यवाद. Thank you so much, and we are grateful and thankful for our dignitaries for your heartfelt contribution for the success of this cricket tournament. And coming to this match, beautifully balled, middle stumps uprooted. Now just a formalities left in this game to complete the matches here. What a fantastic delivery there from Shreyas Pai. Of course, he is a little bit disappointed from the bat. He scored 36 in 1 over in the last in that innings.
And now he's contributing from the bat. 74 needed from 4 balls. Looks like the team Garuda Rising Star, they're really rising with the bat and the ball and even in the field against the team Hanuman Warriors. 4 balls remaining to complete the formalities. Lovely delivery to complete the delivery number 3 of this over. Just 3 balls remaining to complete the formalities. Little bit disappointment performance from Hanuman Warriors. Driven that one into the cover point region, and one more single with that single scope more than 36 for 4. Last 2 deliveries left in this particular match. Once they lost the wicket of Darshan, everything is all. Everything is over. Again, played it down to mid-on region for a single and trying for the run out. Missed the stumps. And last ball remaining of this match. And a huge victory, in fact, for the team. 37 for 4. 72 needed. Lovely delivery and appeal for leg before wicket. Umpire says not out. 1 run scored. 70 runs victory for the team. 70 run huge victory for the team Hanuman Warriors. Congratulations Hanuman Warriors for a wonderful victory. Hard luck team. Congratulations for the Shisha Super Kings. Garuda Rising Stars. Winning this match against Hanuman Warriors. And Garuda Rising Stars ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹನುಮಾನ್ Warriors. After 2 matches they won 1 match and lost 1, and team Ganesh Panthers out of 2 matches they have lost 2 matches. आता 4 मॅच झालेलं असं 10 मिनिटं ब्रेक. तिथली भितरी नेक्स्ट मॅचाचे शेषा सुपर किंग्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्स टीमान हांगा रजिस्टर करका. आता एक टॉस जावचे आसा. टॉस जाता एक 10 मिनिटं ब्रेक आसा सगळ्यांक. हे ब्रेकान तूं आता हांगा एक स्टेज प्रोग्राम जावचे आसा. हांगा आमगेले टुर्नामेंटाचे ट्रॉफी अनविलिंग जावचे आसा. तशीच सिनियर आणि ज्युनियर टीमाले जर्सी लॉन्च जावचे आसा. आता एक 5-10 मिनटं भितर सुरू करताची. एक जाल तितलो कार्यक्रम जाती आहे. मागीर मॅच ऑफ सुरू जाता. कोणेय वचना ना. तशीच हांगा स्टेज फंक्शन जर्सी लॉन्च जातना तुम्ही सगळ्यान हांगा पिच्चा येद्रा येवन फंक्शन पळोवका. तितली मध्ये तूं आता खंयचेय टीम ज्युनियर टीम आणि सिनियर टीम हांगा येनी जाल्यार हांगा कोगी रिपोर्ट कराची. जर्सी लॉन्चा तुमगेल्या टीमान हांव आपयता तुम्ही जाल तितलो हांगा येवन कलेक्ट करता जाता. मस्त समय अभाव आशिल्ले निमित्त मस्त वेळ राखू जायना. दोन्ही ग्रुपाच्या कॅटेगरीचे प्लेयर्स आणि ओनर आयकॉन प्लेयर आणि ओनर असल्यार तुम्ही हांगा रिपोर्ट कराची. इमिडिएटली 5 मिनटान आमगे प्रोग्राम सुरू जाता. सीनियर टीमाचे टीम वीर विठ्ठला जाल तितलो हांगा रिपोर्ट करका. तुमगेल जर्सी आणि कलेक्ट जायनी काही.
माणिक भाई अडे ಕೊಂಚ ಪವರ್ शेषा सुपर किंग्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्साच्या कॅप्टनांक येवका तुमगेल टॉस जावचा आसात दोन्ही टीमा कॅप्टनान इमिडिएट स्टेजाला येवका शेषा सुपर किंग्स टॉस विन जाऊन बॉलिंग घेतला गोपूर ग्लॅडिएटर्स जगली चर्के आणि नागनकट्टे पॅन्थर्स टीमान हंगे येवका तुमगेल जर्सी जल तोगली कलेक्ट करका जर्सी एनविलिंग प्रोग्राम ಮತ್ತೆ सुरू जाता सकड जन आईले अतिथी तुम्ही सकडानंग पिच्चा एद्रा येऊन एक ट्रॉफी लॉन्च आणि जर्सी लॉन्च कार्यक्रम पळोवका म्हूण निमगून घेता सर सकडानंग पिच्चाला एद्रा येऊन रब्बू का एक 10 ते 15 मिनटां कार्यक्रम तशी तुमगे सकडाल सहकार जावका दलतीत लोक हंग एद्रा येऊन रब्बा सकड प्लेयर्स जाल्यार हंग एद्रा येवका
ते ग्राउंडा वयरी सब ज्युनियर टीम्स खेळता असाची पिच्चार आणि धांवच्याना ग्राउंडार कसले प्रॅक्टिस मॅच खेळू ना आता सक्कड प्लेयर्स तई मागशे शिल जाल्यार हनुमान टीम सक्कडान मुखार येवका हांगा स्टेजा लागी नागनकट्टे पॅन्थर्सा टीमाचे कोणेय एक रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा रजिस्ट्रेशन डेस्काला कूडले येवका एक वेदिकेर डायरेक्ट येवका नागराज पैन वेदिके वयर येवका म्हूण निमून घेता सर विकी स्टेजा वयर येवका SVT वॉलंटियर असोसिएशन आयोजन करचे SVT ट्रॉफी GSB वॉलंटियर प्रीमियर लीगाचे सीझन 4 हाजे औपचारीक उद्घाटन समारंभाक तुमकां सर्वांक स्वागत प्रथम जावन आमगेले असोसिएशन प्रेसिडेंट श्री सुरेश वी कामत हांनी हांगा वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले सर्व गण्य अतिथींक स्वागत करता म्हूण निमून घेता सर SVT ट्रॉफी 2026 आमगेले देवस्थानाचे स्वयंसेवकालय क्रिकेट टुर्नामेंट या चारी सीझन 3 वर्सां देखून हेच ग्राउंडार जत्त आसा आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थानाचे सक्कड वॉलंटियर्सान ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು 18 टीम 3 दिवसाचे टुर्नामेंट आज प्रारंभ जालेलो आसा आतां ताजे विद्युक्त उद्घाटन जेवचे आसा तशीच ट्रॉफी अनविलिंग आसा मागीर जर्सी लॉन्च आसा हे एक कार्यक्रमा बद्दल एक 2 मिनिट उल्लोचक विच पावता आमगेले हे एक टुर्नामेंट 3 वर्स फुडें प्रारंभ जातना क्रिकेट आमगेले वॉलंटियर्स खातीर एक क्रीडेचे कसले एक जावका म्हणून उद्देशार प्रारंभ केलेले त्या वर्स वर्स देवाल दयेन सकडाल सहकारान चांग जावन जत्तर आसा क्रिकेट आमी सांगल्या वरीची एक नेवान मात्र आमगेले मुख्य उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेले पुरा वॉलंटियर्स देवस्थाना काम करतले 13 वर्षा पुरो एक ताजे नित्य उत्सव अशा पुरो प्रति एकलेले एक देवस्थाना कशी आमी एक जावन काम करता की तशीच भायर जाल्यार आमी एक म्हणून ऐक्यते खातीर आमी एक एक उत्सव असो करता आसाची ह्या एक हंत भितर कशी म्हळ्यार आमगेले रेग्युलर वॉलंटियर्सान तूं ह्या 45 वर्स ताईं सकट ज्युनियर कॅटेगरी जाता ताजे 45 देखून वयर सिनियर वॉलंटियर्स एक कॅटेगरी आसा तशीच एक सन्न प्रायाचे चेडूवाले 10 वर्साचे फुडल्या वर्साकून आमी प्रारंभ केला तांणी जाल्यार हेची देवस्थानांतू मुखारसून आमगेले वॉलंटियर्स तांणी तांकां एक येवच्याक एक क्रिकेटा मुखांतर एक आमी एक अवकाश कोरका म्हूण लेखून त्या फुडल्या वर्साकून करता आसाची ह्या टुर्नामेंटांतू आमी क्रिकेट मात्र न्ही व्हरलेले आमगेले फुडें देखून सेव केलेले तसले आमगेले सिनियर वॉलंटियर्स देवस्थाना आसाची मस्त वर्साकून तांणी काम करून आतां तांणी ಕೆಲವು ಜನ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಸ ಕೆಲವು ಜನ ಅನಿಕೆ काम करता आसाची तांकां एक आमी गौरव दिवचे कार्यक्रम आसा त्या वेळी आमी टुर्नामेंट आउट करता आसाची तशीच आज हे एक मुख्य आयचे उद्घाटन ಅಂತ कशी म्हळ्यार ट्रॉफी अनविलिंग आसा ह्या कार्यक्रमा खातीर आमगेल्या वेंकटरमण देवस्थानाचे मुक्तेसर जावन आशिल्ले श्री अडिगे बालकृष्ण शेणे मॅनेजिंग ट्रस्टी हांणी पावयले आसाची हांकां आमगेल्या असोसिएशना तर्फे स्वागत करता तशीच तांगेलोटू अनेक मुक्तेसर जावन आशिल्ले सतीश प्रभू हांणी आसाची तांकांय आमगेल्या असोसिएशना तर्फे सकडाल तर्फे स्वागत सांगता तशीच एम किरण पै हांणी आसाची तांकांय स्वागत सांगता तशीच अनेक मुक्तेसर जावन आशिल्ले गणेश कामत हांणी आसाची तांकांय प्रितीन स्वागत करता तशीच
आज वेदिकेर उपस्थित आशिल्ले आमगेल केन्नाय आमगेल टुर्नामेंटाक सहकार दितले आमगेल वांगडा आशिल्ले मस्त जन आसाची तांतूं भितर आत्ता उपस्थित आशिल्ले जनांक हांव स्वागत सांगता. प्रथम जावन दिनेश पै सावकार बाप्पा फॅमिलीचे तांकां हांव प्रितीन स्वागत सांगता. तशीच चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आशिल्ले नरेंद्र पै माम आनी एक टिमा ओनरय आमकां केन्नाय आमगेल वांगडासून सहकार दितले तांकां एक प्रितीन स्वागत सांगता. तशीच महामाया रेंजर्साचे नागेश मामू तो केन्नाय हाजे पुरे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे ताण पळोवन घेवचे ताकाय हांव प्रितीन स्वागत सांगता. तशीच यज्ञवंत पै तो एक टिमाचे ओनर तशी एक एक्टीव वॉलंटियर ताकाय हांव प्रितीन स्वागत सांगता. तशीच एकनाथ नायक एकंड म्हणून बारी आमगेले सिनियर वॉलंटियर आमगेले वांगडा केन्नाय आसा ताकाय हांव प्रितीन स्वागत सांगता. तशीच आमगेले नागराज पै विकी मछली हाजी ओनर तांकांय हांव प्रितीन स्वागत सांगता. आयिल्ले सक्कड जन आज कोण कोण हांगा प्लेयर्स आसच्या पुरो तांगेले घरकडचे आसच्या पुरो समाजा सक्कड जनांकय हांव ह्या टुर्नामेंटाक स्वागत सांगता. तशीच आतां मुखावेल्या कार्यक्रमा विशयी नरसिंह भट माम सांगता. धन्यवाद सुरेश माम. आता हे एक कार्यक्रम स्टेज कार्यक्रम दीप प्रज्वलन कोरून चालन दिवका म्हूण निमगून घेता आसा. हांगा उपस्थित आशिल्ले आमगेले देवळाचे सर्व ट्रस्टीज गण्य अतिथी आनी आमगेले एसोसिएशनाचे ऑफिस बेरर्स ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು एक दीप प्रज्वलन कोरका म्हूण निमगून घेता. धन्यवाद. सक्कड अतिथ्यांक धन्यवाद. आता समय आयला ह्या वर्साचे ट्रॉफी अनावरण करचे. ही ट्रॉफी आमगेले SVT वॉलंटियर्स आले डेडिकेशन आनी टीम वर्क आनी आमगेले समाजा आशिल्ले एक स्पिरिट दाखयता. वेदिकेर आशिल्ले सर्व गण्य अतिथीन हे ट्रॉफी अनावरण कोर दिवका म्हणून आतां निमून घेता आसा. गोविंद भागवत प्रिय गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद नित्य निर्मल गोविंद नीलमेघ श्याम गोविंद पुराण पुरुष गोविंद पुंडरीकाक्ष गोविंद
माझी सब ज्युनियर आणि सिनियर मॅच असा हांगा चलचे आसा. सब ज्युनियर टीम्साचे जर्सी तवळी लॉन्च करून तांगेले गेम्स जाल्लो आसा. आत्ता वरल दोन्ही ग्रुप म्हणल्यार सिनियर आणि ज्युनियर कॅटेगरी टीम्स आले जर्सी हांगा लॉन्च जाता. सुरवेक सिनियर टीम्स मागीर ज्युनियर टीम्सा नांव आपयताची. नांव आपयतना तुम्ही रेडी असू का? जाल्यार तितलोक येवन तुमगेले टीम ओनर्स आणि आयकॉन प्लेयर हांगा येवन तुमगेले जर्सी कलेक्ट करता म्हूण निमून घेता आसा. सुरवेक सिनियर टीमा नांव आपयताची. प्रथम जावन टीम गोपालकृष्ण तुमगेले ओनर्स आणि आयकॉन प्लेयर उणे 3 मेंबर वैरी वेदिकेर येवका आणि तुमगेले जर्सी कलेक्ट करका. टीम गोपालकृष्ण जत्तरी टीम कटारी वीर आणि रेडी असू का? प्रोत्साह कर का सकडान क्लॅप्स मारता प्रोत्साह कर का. टीम गोपालकृष्ण धन्यवाद. नेक्स्ट टीम टीम कटारी वीरस. टीम कटारी वीराचे ओनर्स आणि आयकॉन प्लेयर वयर येवन आता जर्सी कलेक्ट करता आसाची. नेक्स्ट टीम वीर विठ्ठला रेडी जाऊ का हांगा? टीम वीर विठ्ठला नेक्स्ट. टीम कटारी वीर जर्सी आता अनवेल करता आसाची. टीम कटारी वीरक धन्यवाद. धन्यवाद. नेक्स्ट टीम टीम वीर विठ्ठला. टीम वीर विठ्ठला आता जर्सी कलेक्ट करता आसाची. नेक्स्ट टीम श्रीनिवासा रेडी जाऊ का? क्लॅप्स मारता तुम्ही टीम्साक एनकरेज कर का? आमगेले कॉड कंब पुरे सिनियर मेंबर्स अंडर आर्म क्रिकेट जावचे सांगेले बारी सुंदर आणि घंट्यान तुम्ही सकट हांगेले मॅच पळयतात जर्सी घालून मुखार येता पुरे. नेक्स्ट टीम सिनियर कॅटेगरींत लास्ट टीम हे टीम श्रीनिवासा हांगेले जर्सी येता लॉन्च जाता आसा. मेंबर्स येईल आसाची. तुमगेले चप्पाळे प्रोत्साह येता असू का? नेक्स्ट आता ज्युनियर कॅटेगरी आपयताची. टीमचा नाव आपयता वताची. तुम्ही जल्दीतलोगी ओनर आणि आयकॉन प्लेयर हांगा येवन तुमगेले जर्सी अनवेल करका. सुरवेक अग्रसाली सुपर किंग्स वरला सक्कट टीम मेंबर्स हांगा स्टेज लागी येवन रब्बू का? अग्रसाली सुपर किंग्स जातरी नागनकट्टे पॅन्थर्स रेडी असू का? तशी उग्राण सेवक्स तिन्हीचे. टीम अग्रसाली सुपर किंग्स.
टीम अग्रसाली सुपर किंग्स जर्सी अनवेल करता सजी. नेक्स्ट नागनकट्टे पॅन्थर्स. धन्यवाद. नागनकट्टे पॅन्थर टीम मेंबर्स आणि वैरे का नागनकट्टे पॅन्थर्स तरी गोपूर ग्लॅडिएटर्स टीम आणि का गोपूर ग्लॅडिएटर्स टीम मेंबर्स आणि वैरे का नागनकट्टे पॅन्थर्स टीम धन्यवाद. गोपूर ग्लॅडिएटर्स टीम मेंबर्स जर्सी कलेक्ट करू आयलांची. गोपूर ग्लॅडिएटर्स मागशीची दंबेकल्लू चॅलेंजर्स तुमगेल टीम मेंबर्स रेडी असू का. ते ज्युनियर मेंबर्स प्रॅक्टिस करता असाची ग्राउंडारी दय करून तुम्ही प्रॅक्टिस बाहेर कर का. गोपूर ग्लॅडिएटर्स कलेक्ट करता असाची जर्सी. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗಾಲ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಂಬೆಕಲ್ಲು ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎತ್ತಾಸची जर्सी कलेक्ट करू का. तुमगे सकडाले चप्पाळे देऊन तांका प्रोत्साह कर का म्हणतास. नेक्स्ट राजांगण रॉयल्स रेडी जाऊ का. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Still there never seems to be a single penny left for me. Not too bad. In my dream, I have a plan. धन्यवाद. दंबेकल्लू चॅलेंजर्स टीमाक राजांगण रॉयल्स प्लेयर्स आणि नेक्स्ट येऊ का. राजांगण रॉयल्स मागशीची महामाया क्रिकेटर्स रेडी जाऊ का. राजांगण रॉयल्स जर्सी लॉन्च जाता सकडान प्रोत्साह कर का क्लॅप मारून प्रोत्साह कर का टीम साक. सकड ज्युनियर कॅटेगरी प्लेयर हाय फुल जर्सी घालून येताची तांगेले मॅच असं फाय सुरू जाता. महामाया क्रिकेटर्स नेक्स्ट टीम येताची जर्सी कलेक्ट करू का. नेक्स्ट सुधींद्रा वॉरियर्स टीम रेडी असू का. महामाया क्रिकेटर्स जर्सी लॉन्च जाता सांगा. तुम्ही सगळ्यांना प्रोत्साह कर का. नेक्स्ट जर्सी लॉन्च सुधींद्रा वॉरियर्स टीमाला जाऊचा असं.
नेक्स्ट जगली चरके टीम रेडी जाऊ का. सुधींद्रा वॉरियर्स. नेक्स्ट जगली चरके टीम वैरव का. जगली चरके असल्या तरी उकराणा सेवक्स टीम रेडी असू का हांगा. जगली चरकेस टीम आता आयलांची जर्सी कलेक्ट करू का. नेक्स्ट उग्राणा सेवक्स टीम जर्सी कलेक्ट करू येऊ का. जगली चरकेस. धन्यवाद. नेक्स्ट टीम येता सजी उग्राणा सेवक्स. उग्राणा सेवक्स कलेक्ट करता सजी तंगेल जर्सी. श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स नेक्स्ट टीम रेडी असू का. धन्यवाद. नेक्स्ट टीम श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स. आमगे सब ज्युनियर कॅटेगरीचे तांची टीम आपयता सजी. जर्सी लॉन्च प्रोग्राम तो एक लास्ट टीम आता कलेक्ट करता सजी. श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स हंगेले मेंबर्स आना वेदिकेर जर्सी कलेक्ट कर का. तुमगे सकडाला चप्पाळे येऊ का. श्रृंगेरी राइजिंग स्टार्स. अनेक खुशी विचार कसा म्हणल्यार हे पुरे जर्सी 8 टीमाचे जर्सी डिझाईन केलेला आहे. आमगेलो व्हॉलंटियर ओरिजिनाचे ओनरू कोंचाडी नरसिंह शणे नच्चा भीष्म पिता म्हणटाची क्रिकेटाचो मस्त टुर्नामेंट करतो. जाल्या निमित्त डिझाईन क्रिएटिव्हिटी आणि नंबर 1 तशी ताक जाल्यार एक धन्यवाद. सर्व अतिथींक जर्सी लॉन्च केलेला धन्यवाद म्हणटा सर. आता नेक्स्ट मॅच सुरू जावचे फुडें आमकां हांगा तांगे टायम दिवन सर्व अतिथी हांगा वयर आयिल्ले आसात तांकां धन्यवाद करता आसात. आमगेले एसोसिएशना तर्फेन तांकां एक मेमेंटो दिवन आमी धन्यवाद अर्पण करताची. आमगेले कमिटी मेंबर्सान सर्व अतिथींक मेमेंटो दिवन धन्यवाद करता म्हूण निमून घेता सर. सुरवेक आमगेले देवळाच्या सर्व ट्रस्टीसांक धन्यवाद समर्पण करता आसात. तशीच आमगेले एसोसिएशना तर्फेन देवस्थानाक आमगेले एक
मेमेंटो दिता एक सान काणिके आमकां मस्त सहकार दिल्लो आसा देवस्थानान वॉलंटियर्साक एक बॅकबोन म्हणीत आम्ही खंयचेय कार्यक्रम करता म्हणटाना आमकां यावत्तू तांणी खंयच्याकय तुम्ही मुखार सियाचे आम्ही असो म्हणून सहकार दिला मस्त धन्यवाद तुमकां तशीच वेदिकेर आशिल्ले इतर गण्य व्यक्तींक सर्वांक धन्यवाद समर्पण करता मेमेंटो दिवका म्हूण निमगून घेता सर एसोसिएशनाचे मेंबर्सान मुखार येवन प्रति एक गण्य व्यक्तींक एक मेमेंटो दिवन धन्यवाद करता हंग धन्यवाद समर्पण जातरी इमिडिएट नेक्स्ट मैच सुरू जाता ऑफिशियल्स नोट करका पंचा मैच टॉस ऑलरेडी जाल्लो आसा शेषा सूपर किंग्स आणि गरुडा रೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸುರು जातानी ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು तुमका सकडांक ग्राउंडर रब्बिलंक ग्राउंडर रब्बिल सकडांक विनंती करता सर तुम्ही ग्राउंड गलतीतलोगी खाली कोण दिव का इमिडिएट मैच सुरू जाता स्टेजार आशिल्ले सर्व गण्य अतिथींक धन्यवाद तशीच येता मॅच मुखार सयता तुम्ही बैसून मॅच पळोवका म्हूण निमगून घेता सर आणि आज दोन्ही सब ज्युनियर कॅटेगरी मॅच आता कंटिन्यू जाता इमिडिएट त्या जातरी खंयचेय ब्रेक ना सीनियर कॅटेगरीच्या अंडर आर्म मॅच जाता हे कंप्लीट फ्लड लाईट मॅच तुम्ही सर्वांना हांगा रब्बुका जेवणा व्यवस्थे केलेलं आसा हे पुरे मॅचेस पळोवन वचुका म्हूण निमगून घेतास अंपೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ऑफिशियल्स अंपೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು दोन्ही टीम प्लेयर्स रेडी जाऊ का इमिडिएट मॅच स्टार्ट आणि 2 मिनिट भितर मॅच स्टार्ट जाऊ का कॅमेरा करला ग्राउंड रावचे वेळ जाल्ला आणि मागीर पेनल्टी पडता ओव्हर शॉट जाता दय करून नोट करा शेषा सुपर किंग्स टीम फील्डिंग विन झालेला असा तुम्ही जलतीतलोगी फील्डिंग हरबू का गरुडा रायझिंग स्टार्सचे बॅट्समॅन क्रीजार येऊ का ऑफिशियल्स ऑलरेडी येईल असाची आणि डिले करून आता आणि टाइम काउंट करू स्टार्ट झाला तुम्ही वेळ कोण येला तुमका मागीर पेनल्टी पडता ऑफिशियल्स टाइम नोट ಮಾಡಿ आता पंचा मैच स्टार्ट जाता ओवर टू कमेंट्री टीम thank you and welcome back once again after being fantastic welcome back once again after being a fantastic trophy launching ceremony and stage program and now we are just waiting we are just moving to the match number 5 of this cricket tournament Shesha Super Kings versus Garuda Rising Stars and Garuda Rising Star are going to bat first and Shesha Super Kings after won the toss they elected to field for their openers are now comes out to the middle दोनों आरंभिक बल्लेबाज आशुतोष और श्रेयस इस वक्त क्रीज पर मौजूद और मैच की पहली गेंद लेकर गेंदबाज की गेंद इस बार मौका जरूर जी नहीं गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है इस वक्त 6 रनों के लिए
मुश्किल सा मौका जरूर था इस वक्त स्क्वेयर फील्डर के लिए, लेकिन आखिरकार गेंद तक नहीं पहुंच पाए और छक्का इस वक्त बल्लेबाज आशुतोष इस वक्त प्राप्त करते हुए। और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। श्रेयस इस वक्त और इस बार डिफ्लेक्टेड फाइन जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर। 6 और 4 और श्रेयस इस वक्त बेहतर शुरुआत यहां पर कर चुके हैं। तो श्रेयस जिन्होंने पिछले मैच में शतक जो कि जड़ा था और निश्चित रूप से यहां पर उस बेहतरीन फॉर्म को यहां पर आगे बढ़ाते हुए नजर आते हुए। और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए आर्नव और श्रेयस से सामना करते हुए। But give again the 6 runs. This is an outstanding strike. Just pull that one and it scores over defense for 6. So 16 on the board. 16 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। Full toss outside edge and down to a third man. Can't got any run for that stroke. Fielder वहां पर मौजूद थे, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 16 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रारंभ हो चुका है यहाँ पर गरुड़ा राइजिंग स्टार्स की पारी में। और इस बीच गेंदबाज but give again top edge and he's got the distance at last at mid wicket. 22 on the board in the over number first in progress. और इस वक्त श्रेयस बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन अपनाते हुए इस पहले ओवर में। और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो अर्नव इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। Left it straight down the ground and he finds the gap as well. Has got the distance at last. 28 runs scored from the first over, and this is an absolutely terrific start for Garuda Rising Stars, especially from this man Shreyas, who scored all the runs, 4 sixes and a 1-4. 28 on the board after completion of first over for Garuda Rising Stars. और दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से, और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए आशुतोष, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। outside the off stump, wide. और गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा। Good delivery this time, absolutely good one. Get some extra bounce and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। This time driven that one, gone for a quick single. Misjudgment. This is a totally misjudgment. दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखते रह गए कि दूसरे खिलाड़ी फील्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पर गेंद उन दोनों के बीच से निकलते हुए सीमा रेखा को पार कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, आसान सा फील्डिंग था, सिर्फ 1 रन मिल सकता था। यहाँ पर देखिए किस तरीके से दोनों खिलाड़ी इस वक्त इंतजार करते रहे कि दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर फील्डिंग करेंगे, लेकिन उन दोनों के बीच से गेंद इस वक्त निकल चुके हैं। मिसजजमेंट के बदौलत चौका इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और इस वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर। 34 in fact, 34 for the loss of no wicket in the over number second in progress. Absolutely fantastic progress here for Garuda Rising Stars. और अगली गेंद फुल टॉस, लेग स्टंप से बाहर, एक बार फिर से वाइड का इशारा। Consecutive wides for the bowler, and with that single run the scoreboard moving up to 35 on the board. Yet to lose an wicket in the over number second in progress. और गेंदबाज इस वक्त अनंत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए आशुतोष के लिए। Again a wide, hat-trick wide, just drifting down the leg side at the last moment. और 3 लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं अनंत। अपने सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करने में अभी भी काफी दिक्कतों का सामना करते हुए। 3 consecutive wides bowled by the bowler Anant. 36 the score now, yet to lose a wicket in the over number second in progress. और अंपायर जो कि विकेटों को यहाँ पर सही करते हुए, और अनंत एक बार फिर से तैयार। 3 लगातार वाइड फेंकने के बाद इस वक्त देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी वो करते हैं अगली गेंद पर।
दाहिने हाथों पर द विकेट, अगली गेंद again wide, 4 wides in a row. This is going to be a bad piece of bowling performance from अनंत, और निश्चित रूप से खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन। 4 लगातार वाइड गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं और निस्संदेह अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तलाशते हुए गेंदबाज अनंत। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर अनंत इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। इस बार उछाला straight into the hand. No, he dropped that one. He dropped that one in. Oh, that is an absolute disaster at the non-striker end. और डाइविंग लगाकर इस वक्त अपना विकेट बचाने में सफल। थ्रो इस वक्त पहुंच जाता मिड ऑफ फील्डर का स्ट्राइकर एंड की ओर, नॉन स्ट्राइकर की ओर थ्रो करते, स्टंप्सों पर निशाना दागते हैं, तो शायद वहां पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा और बल्लेबाज अपने पीछे की ओर डाइविंग लगाकर गेंद विकेट जो कि बचाने में सफल। और अनंत अगली गेंद लेकर तैयार। Full toss. Oh, just got his inside edge on the last moment. प्रोफेशनल कोरियर सर्च है नरेंद्रनाथ मामू अंगाई लसजी वेदिके रेवका मोनार्क ग्रुप। So dirty delivery ball. विक्रम भैया ई लसजी तन्नी दलारे वेदिके रे अपना हुनर यहाँ पर दिखाते हुए, और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। Full toss, lofted. This time chance. No, he won't get that one. और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए। मुश्किल सा मौका जरूर था, लेकिन गेंद के ऊपर से होती हुई इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए। 6 रन एडेड टू द टोटल, और स्कोर इस छक्के के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 54 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर जस्ट 3 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। पटके विकेट, टॉप एज, अगेन अ 6. He's just pulled that one on the leg side area at the last moment and got the distance at last. 60 on the board. Yet to lose any wicket in the over number 3 in progress. 2.3 overs bowled in the race. Still 2.3 overs have to come. और 15 गेंदे फेंके जा चुके हैं उनके पारी में, 15 गेंदे और फेंके जाने बाकी। और इस बीच आशुतोष सामना करने के लिए तैयार संकल्प की गेंदों का। संकल्प जिन्होंने पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया था, यहाँ पर कुछ महंगे साबित होते हैं इस मैच में। और अगली गेंद लेकर तैयार। फुल टॉस, लॉफ्टेड, हैट्रिक 6, 3 sixes in a row फ्रॉम आशुतोष। और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 66 रनों पर, 66 विदाउट लॉस। और देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त उछाला था। एब्सोल्युटली गॉट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द मैट एंड जस्ट लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल ओवर मिड विकेट फेंस फॉर अ मैक्सिमम। और अगली गेंद again driven that one down to mid on. In fact, they gone through for a quick single and get it comfortably at last. एक रन का इजाफा इस वक्त हो चुका है, 67 रन बच चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 67 without loss, slowly and steadily this partnership is now building up here between श्रेयस पई and आशुतोष। और जहां तक सवाल है इस वक्त ये आरंभिक साझेदारी पार्टनरशिप जो कि शतक की ओर इस वक्त बढ़ते हुए, इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज संकल्प तैयार श्रेयस के लिए। फुल टॉस ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ ऑफ द टॉस, गेंद जाते हुए इस वक्त लंगॉन पर बेहतर तरीके से गेंद को रोका गया है इस वक्त अपने पैर के जरिए फील्डर द्वारा। सिर्फ 1 रन मिला। 3 overs completed, 68 without loss. Now I must say Garuda Rising Stars are now looking in a good situation. It's 68 for none after 3 with 2 to go in their innings. नेक्स्ट मॅच गणेशा पॅन्थर्स आणि हनुमान वॉरियर्स। तुम्ही टीम रजिस्टर कर का इमिडिएट इनिंग्स ब्रेक टॉस जाता। So the 4th over starts and a little master is now brought into the attack. First ball, top edge, chance and taken taken with both hands at the last moment. और अंतिम क्षण में गेंद को जज करते हुए इसके हाथ को लपकने में सफल। और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। पहला विकेट गॉन, फर्स्ट विकेट गॉन इन फैक्ट, एंड द स्कोर इज नाउ 68 for 1 and the man Ashuto, in fact the man Shreyas departs after being playing a good knock for their side. 30 runs scored including 4 sixes, 4 massive sixes and 1 4, and he is backing to pavilion. Is out for 30. First wicket loss for 68. Number 3 batsman is now comes out to the middle. और गेंदबाज इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरत, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल बिटवीन कम पॉइंट एंड एक्स्ट्रा कवर। और चौका इस वक्त प्राप्त करने में सफल
नए बल्लेबाज श्रीकांत, और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गेंद को इस वक्त कट करना चाहा था, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैच नंबर 5 सब जूनियर विभाग में इस वक्त खेला जाता हुआ, और इस बीच ये गेंद इस बार आफ्टर टूज गेंद को खेल दिया इस वक्त वाइडिश मिड ऑन पर 1 रन के लिए बल्लेबाज ने। सिंगल रन एडेड टू द टोटल, विद दैट सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 73 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा, गरुड़ा राइजिंग स्टार्स एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। कम से कम 100 का आंकड़ा यहाँ पर उन्हें पार करना होगा, जैसा कि पिछले मैच में देखा गया है। 100 के आंकड़े पार करने के बाद भी एक मैच में टीम को हार का पराभव का सामना करना पड़ा था, तो इस वजह से इस वक्त गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। तो इसकी वजह से ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त 100 के आंकड़े के काफी दूर इस वक्त अपनी टीम की कुल रन संख्या को ले जाना है यहाँ पर गरुड़ा राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाजों को, बैटर्स को। अब स्कोर है 77 रन, 77 for 1 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज रामचंद्र इस ओवर में अंतिम बार इस बार गेंद को खेलना चाहा। टॉप एज शॉट कर कवर पर, और इस बार निशाना टकरा चुका है। ही इज गॉन इन फैक्ट, ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज एट द लास्ट मोमेंट एट द स्ट्राइकर एंड डायरेक्ट हिट यहाँ पर टकराता हुआ, और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से विकेट गिरा था, गेंद पहुंची थी फील्डर के हाथ में, फील्डर का थ्रो, दिस टाइम इज गॉन एब्सोल्युटली आउट ऑफ द क्रीज। सो 4 overs completed, and after 4 overs now the score is 77 for 2, and now just a last over remaining in their innings. This is the match number 5 of in the sub-junior division of this prestigious cricket tournament. SVT Trophy 2026 Season 4 is now progressing here, and this tournament is proudly presented by SVT Volunteers Association, Car Street, Mangalore. इस बार गेंद को खेल दिया, misunderstanding, and this time is gone. कोई रेस्पॉन्स नहीं स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा। ऐसा कहना पड़ेगा आशुतोष स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, और इस वजह से रन लेने की खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, और दूसरे छोड़ के बल्लेबाज दौड़ कर आ गया स्ट्राइकर एंड पर, और आसान सा रन आउट यहाँ पर होता हुआ। 77 for 3 now just 5 balls left in their innings. तन्मय गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, आशुतोष सामना करने के लिए तैयार, और देखते हैं इन बचे हुए 5 गेंदों में यहाँ पर बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। पटके भी गेंद झाला लंगोल पर छक्के के लिए, और छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 83 रनों पर, 83 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट। और रिप्ले पर देखिए किस तरीके से उछाला था, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड, एंड ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट। अगली गेंद तन्मय, इस बार गेंद को उछालना चाहा, मिड विकेट पर रन्स नहीं मिलेगा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपरली, गॉट इज बॉटम ऑफ द बैट, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 83 रनों पर। 83 for 3 now, 3 balls left now in their innings, और तन्मय अगली गेंद लेकर तैयार। Just drifting out the side at the last moment, wide का इशारा, 1 more run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 84 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Good one, absolutely good one. Just pitching a bit next time, and misfielded that one. He misfielded that one, and a boundary results in the face of leg by. बेहतर गेंद थी मिड लेग स्टंप पर, ऑन साइड पर खेलने में चूके गेंद उनके पैरों पर टकराए, और यहाँ पर बिल्कुल खराब फील्डिंग करते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से मिस जजमेंट, दिस इज एन एब्सोल्युटली मिस जजमेंट मेड बाय द फील्डर एट शॉर्ट थर्ड मैन। बाउंड्री रिजल्ट्स, अगली गेंद फुल टॉस, लॉफ्टेड and chance, and he stopped that one. He stopped that one brilliantly just inside the fence. निश्चित रूप से छक्का हो सकता था, और इस छक्के को बचाते हुए यहाँ पर बेहतर तरीके से। 89 on the board. Last ball of the innings is now remaining. तो 6 छक्का इस वक्त चेक करने के लिए अंपायर इस वक्त कहते हुए कि जब गेंद को ढकेला गया था सीमा रेखा के अंदर, तब बल्लेबाज का पैर क्रीज पर, ऐसा कहना पड़ेगा सीमा रेखा के
रोप पर टकरा चुका था या नहीं, ये देखने के लिए तो तीसरे अंपायर इसका परिशीलन न करते हुए, और देखना यह है कि तीसरे अंपायर इस का परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार यहाँ पर देते हैं। यस, इट्स परफेक्टली सेव्ड। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का 89 for 3। नाउ जस्ट लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन द रिंग्स एंड द लास्ट बॉल ऑफ द रिंग्स इज नाउ कमिंग अप। गेंदबाज तन्मय, this time good one from the bowler, getting his inside edge. It's got over the fence for a boundary. That wasn't a certain single at the last moment, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर जो कि मोटे कद के खिलाड़ी थे गेंद को ठीक तरह से फील्ड नहीं कर पाए और गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है स्क्वायर लेग पर चौके के लिए। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। सो द इनिंग्स इज अप फॉर Garuda Rising Stars. They finished with the आता गणेशा पॅन्थर्स आणि हनुमान वॉरियर्स टीमाचे टॉस देवच्या संघा वेदिकेरी मोनार्क ग्रुपाचे नरेंद्र नायक मम्मान टॉस करून दिवका म्हूण निमगून घेतस. So 93 the score scored by Garuda's Rising Stars, and the target for Shesha Super Kings is 94. They have to score for victory in the stipulated 30 deliveries. That means in the stipulated 5 overs. और जहाँ तक सवाल है रिक्वायर्ड रन रेट का exactly 18.80 runs for all they have to score for victory. 94 they have to score in the stipulated 30 deliveries from the 5 overs with help of 10 wickets. The present equation shows for Shesha Super Kings, and their inning starts now with a just short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर शेषा सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। हनुमान वॉरियर टीम टॉस विन जाऊन बॅटिंग घेतला. तशी जी सक्कड सब ज्युनियर टीमाक एक रिक्वेस्ट तुमगेले हे फायनल मॅच म्हणल्यार आतां शेषा आनी गरुडा टीमाला फायनल मॅच जाल्ली तशी सगळे टीम ग्रुप तुमगेले 14 प्लेयर्स आनी ओनर्स हांगा वेदिकेला तो घेवका ग्रुप फोटो जावचा आसा. खंयचे मेंबर्सान ग्रुप फोटो जायना अशी वचना ना आनी आजी फायनल्सा वचना तील 2 टीम खंयचे आसा तांकां आमी हांगा वेदिकेरी एक मेमेंटो दिवन पेटोता आसा. दल निमित्त चारय टीमान हांगा राबून ग्रुप फोटो जावन मेमेंटो कलेक्ट करून वचुका. So signal game from umpire. Everything is ready for the match changing here. 24, which is a target for the team to win this match. Team Shesha Super Kings, and wait and see how well they will going to start with their opening batters. And Sankalp and Tanmay, the opening batters. The first ball, and it's going to be a dream start. The first ball itself, the bowler Ashutosh has got a vital breakthrough for his team. And Garuda Rising Stars, again they rise. And they rise in the first delivery itself. They got a wicket of the batter Sankalp is caught behind the wicket for Golden Duck. Short pitch, little bit short pitch delivery there, but ball has got a little bit turn in that ball. And batter just wanted to go over the top, and he missed it completely. And mistimed it completely, and the wicketkeeper behind the stump did the rest back to did the rest, and first wicket is back in the pavilion. 94 target, and they lost the first wicket in the first delivery of the over of Ashutosh. So Ashutosh is a very good bowler for the side. The spin bowler is in action. The leg spinner, one lovely delivery, beautifully bowled. The Ashutosh is absolutely enjoying the condition with this typical orthodox leg spin deliveries. And third time in this over. Right arm over the kitty balls. The one more very good delivery. Wanted to go for the pull shot without watching the ball. This is not that much of shot enough to go for the pull shot. The good bowling there from Ashutosh. So far he bowled 3 very good deliveries. We picked up 1 wicket. The wicket of Sankalp. And the team still Shesha
Shesha's searching for the right track. This time wrong one. What a delivery. A fantastic bowling performance after that 3 leg spin delivery. He is just attempting for 1 up spin delivery. The 5th time in this over. Ashutosh again. Short run up. Pass umpire Rupesh. Balls played it down to mid wicket region for single. Misfield there by the fielder. But not more than a single. With that single score, but Namuzan, of course, this first run, in fact, for the team Shesha Super Kings. They got a first run from the bat. Once again, shot and pulls handsomely. Tanmay this time getting into the position so quickly to that short pitch delivery, pulls it away down to deep square leg for a maximum. So with that 6 score, moves on to 7 on the board. Last delivery remaining in this over. Over completed. Over completed. After completion of first overs, good start there by Ashutosh. Just 7 runs and a wicket. Shreyas will go into bowl the second over. Tanmay will be the striker. Oh, that ball, absolutely perfect one. And looks like it's a boundary there. By call by umpire. Ball maybe it's a pass between the stumps. It's really surprised everyone. The ball is passed between the stumps. It might be. I'm really surprised how the ball is passed between the stump without disturbing the stumps. Ball just passed between the middle stump and the leg stump. Right arm over the wicket balls. Oh, this time lovely. Oh, missed it. Good piece of fielding. The chance of run out in a non-striker's end, but they completed the run quickly. Very good stop by the fielder. Ankush in the delegation, who is standing in short fine region, quickly moved towards which is the ball traveled towards the right of him, and he fielded very well. One more Yorker line delivery. Didn't quite timed it properly. One more single. With that single score, but moves on to 12 for 1 in the over number second in progress. 13 correction, 13 for 1. The over number second is in progress. Shreyas. Balls. Anant wanted to go for the drive, missed it completely. And Vaishu, the wicket keeper, so excited to hit the stumps in the non-striker's end. And no run scored. So good over is in progress. Second over also. It's going to be a good over so far. White over. Shreyas balls. Full toss. Again mistimed it. Low full toss. Anant fails to make any impact in that ball. Played it back to bowler. Not for run. Score remains on 13 for 1 in the over number second in progress. Last time in this over. This time he pulls it handsomely into the LED screen for a maximum and 19 after completion of over number 2. 75 needed from last 3 overs. So 25 runs per over required run rate. So 25 needed in each and every over for the chasing team Shesha Super Kings if they wanted to win this match. And wait and see how Tanmay will go into contribute. Here comes the first ball. Lovely shot. Played it beautifully. Picked that line and then so quickly. Little bit across the line. He swings it down to mid-wicket for a 6. With the addition of that 6 score, but moves on to 25 on the board for the loss of 1 wicket. 69 needed from 17 deliveries. One more short pitch delivery all the time in the world for Tanmay to rock backhand, pulls it away down to wideish long on for a maximum. So with that addition of that 6 scoreboard, moves on to 31 for the loss of 1 wicket. So excited crowd. We can see that the parents and supporter of particular team, they are encouraging their teams, the young talents of GSP communities coming to perform in this. Just upside to the hands of Lavinon. The huge wicket again. Tanmay back in the pavilion. He just played it in a flatter version.
And he just pays the penalty for that. And just have a look at in replay. Of course, a short pitch delivery, but he's played it across the line, flatter version, and straight to the hands of mid-on, making no mistake at all. It's 31 for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. New batter in is Armao. Arnau will going to take the strike. Right arm around the wicket for the left-hand batter. Lofted handsomely, straight down the ground into the stated area for maximum. The ball is landed into the roof of the stage, the main stage, and scoreboard jumps into 37 for the loss of 2 wicket in the over. Number 3 is in progress. One more short pitch delivery, one more big shot into the mid-wicket. Revision for a maximum. So Arnav keeping a hope of winning this match. 51 needed from 13. Abhishek. Balls, lovely delivery. This is what the line you need to ball outside the line of off stump. And Arnav missed it completely from his bat. And over number 3 completed after completion of over number 3, chasing a total score of 94 and 43 for 2. 51 needed from 12. 25.5 runs per over, the required run rate. And just have a look at the crowd here, so excited. This is absolutely the electrifying atmosphere, festival atmosphere in this Kendra High School cricket ground, thanks to the SVT Volunteers Association bringing this opportunity for the young talents. One more big shots. Starts with a pull shot there from the batter Anant. Played it beautifully down to mid-wicket for a maximum. So not only the children, some senior citizens also enjoying the game of cricket, refreshing their olden days, how they have performed in this particular cricket ground. Beautifully bowled, perfect one there from the bowler Shrikant, the tall man, who has been operated from the far end. And so excited faces, we can see that some fun thing is going on here. They know exactly, the cameraman focusing them and they just wanted to enjoy the condition. And here comes the next one. All right, I'm over to get this time again lofted, and again he got a distance. So lovely hit there from Anant in relegation. Nothing much wrong with that line, but he pulled that one beautifully down to mid-wicket for a maximum. All we can say that enjoying this game of cricket here in this beautiful cricket ground, along with the senior citizens, even some children's also enjoying the game of cricket. Here comes next one, right arm over the wicket balls. Inside edge of the bat, he will going to complete the single before that fielder will going to pick the ball. With that single score, moves on to 56 for 2. 38 needed from 8 balls. Badly required some sixes. They have to deal with the sixes now. 8 balls, 38 needed for the victory for the team Shesha Super Kings. This time pulls it away, and it's going to be of 6 there. The match is not yet over. Still the match isn't alive because of that 6. 32 needed now from 7 deliveries. If he managed to get one more 6 here, then it's going to be a very interesting last over for the team. 32 needed from 7. Even the parents, the grandparents enjoying the game of cricket, watching their children performing here. Lofted, and it keeps a love alive for this match with a magnificent stroke there from Anant. Arnav correction, and with that 6, the hope are still alive for the team Shesha Super Kings to win this match. 68 for 2, 26 needed from 6 ball. 68 for 2, 26 needed from last over. So 26 means at least 4 sixes in this last over will take Shesha to this match. Last over. Lofted, magnificently struck. Nothing much wrong with the line of the delivery. Just drags it from the outside the line of off stump. Played it cross-batted stroke straight to the
into the mid wicket. Now 20 needed from 5 deliveries. Vaishak. Again, one more 6. Now it's going to be more interesting, isn't it? Well. Need to appreciate these two batters. The fantastic partnership is in progress. Now 14 needed from 4 deliveries. What a chasing here from team Shesha Super Kings. Especially these two batters absolutely having a good partnership. 14 needed from 4. This time again, one more 6. Now, Anant absolutely playing the innings of his life. Off the back foot this time, punched it away into long off for a maximum. Now, 8 needed from 3 balls. Lovely cricket from 2 young players here in the middle, keeping hope alive. Arnav and Anant, 2 big A's in the pack. Arnav and Anant doing the job. Needed some dot ball here for the opposition team, Garuda, Rising Stars. Wide ball, the bowler is under pressure. Bowler is under pressure now. 7 needed from 3. 1-6 will go into tie the match. 3 balls remaining. This time, opportunity for the catch. Who will go and take this one? Bowler drops the catch. This is what the cricket is all about. The pressure is absolutely building up. What could be a chance for the bowler to take the cotton ball? He missed it completely. Now 2 balls remaining. 6 runs required for the victory. Arnav has got opportunity to finish the match. Vaishant have to deliver 2 very good deliveries, but 1 good hit is good enough. That's it. Shesha Super Kings are winning this match, and 2 batters out there in the middle, Anant and Arnav, did the job for the team. They become the hero for their team, and at last the team Shesha Super Kings are played a super game here to win this match. Congratulations for the team, winning team. It's absolutely fantastic game. The nail biter which is comes to an end. And unfortunately, Garuda Rising Star couldn't manage to rise in this light. And all which is goes to the 2 batters. Absolutely did a great job. Next They're match, winning this match. Hanuman Warriors versus Ganesha Panthers. Antu Hanuman Warriors batting घेतला. टीमानं ओगी खेळू येऊ का? आम्ही एक अर्ध घंटे डिलेर असायची जलतीतलो की मॅच येऊ का खेळू का? हनुमान वॉरियर टीमानं बॅटिंग येऊ का? तशीच आता मॅच झालेला शेषा सुपर किंग्स आणि गरुडा रायझिंग स्टार्स तुमगेला आईचे लीग मॅच झालेला दोन्ही टीमानं हंगा वेदिकेला तो घेऊन तुमगेले ग्रुप फोटो काढका टीमा सक्कड मेंबर्स आणि येऊ का? तशीच हंगा येईल सक्कडांक जेवणा व्यवस्था केलेला आमगेले फूड कोर्ट अंतू आता काउंटर ओपन जाता जनान सगळ्यान वचून जेवण करून वापस येऊन बैसून मॅचेस पळोवका जाल्यार तितलो की जेवण करून येऊ का? गणेशा पॅन्थर्स टीमान आनी एक 2 मिनिट भितर ग्राउंडार फिल्डिंग सेट जाव का? ऑफिशियल्स रेडी आसा जी. हनुमान वॉरियर टीम ओपनिंग बॅट्समॅन खेळू येऊ का? दोन्ही टीम फर्स्ट कॉल आहे. So thank you very much, and it's going to be a last match of the sub-junior division between 2 teams, Ganesh Panthers and Hanuman Warriors. And after that, we're going to announce which team will go into qualify for the finals. गरुडा रायझिंग स्टार्स आणि शेषा सुपर किंग्स तुम्ही डग आउट सोडून देऊ का? ते
डगआउट क्लियर करून तुम्ही हांगा ग्रुप फोटो का इमिडिएटली येऊ का आमगेले फोटोग्राफर वेटिंग करता आसा जाल्यार तितलो घेयाची आता खेळचे गणेशा पॅन्थर्स आणि हनुमान वॉरियर्सांना इमिडिएटली मॅच स्टार्ट कर का. So we are into the last match of the league stage matches of sub junior division, and for that I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the last match of the sub junior division is now going to begin between Ganesh Panthers versus Hanuman Warriors. और हनुमान वॉरियर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का यानी बैटिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और पहली गेंद लेकर इस वक्त श्रवण नन्हे गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ दर्शन अपना खाता खोल चुके हैं. पहले मैच में दर्शन ने शतक जड़ा था, उसके बाद दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए हैं और जल्दी ही आउट हो गए थे पिछले मैच में. और इस बीच तीसरे मैच में पहली गेंद पर छक्का इस वक्त लगाकर शुरुआत कर चुके हैं. और इस बीच श्रवण फुल टॉस गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्पिन गेंदबाजी और गेंद सीधे बल्लेबाज के पैर पर टकराई. रन इस वक्त नहीं मिलेंगे. जीएसबी समाज के नन्हे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन प्रदर्शन जो कि यहाँ पर जारी है. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, फ्लाइटेड फुल टॉस पुल्स एंड इज गॉट द डिस्टेंस 12 विदाउट लॉस. 12 रन बन चुके हैं और एफर्टलेसली गेंद को इस वक्त उछाल दिया था बल्लेबाज दर्शन ने. देखिए यहाँ पर किस तरह से, हैव अ लुक एट दिस इन द एलईडी स्क्रीन. जस्ट लव दैट वन हैंडसमली एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम. और श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रन लंबे रन अप के जरिए. पुल्स एंड वंस अगेन ही गॉट द डिस्टेंस. 3 छक्के 4 गेंदों में गिर चुके हैं और 18 रनों पर स्कोर बोर्ड यहाँ पर पहुंच चुका है. 18 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट. स्टार्टेड जे शॉट वाले गो और गेंदबाज श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था. इन हाथों पर द विकेट. तेज गेंद इस बार पल्स 6 नंबर 4. इस बार क्विकर गेंद थी और इस क्विकर गेंद पर इस वक्त गेंद को उछाल कर खेलने में सफल वानिश लंगन से बाहर छक्के के लिए बल्लेबाज द्वारा. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग, फैंटास्टिक स्टार्ट इन फैक्ट फॉर द बैट्समैन ऑफ हनुमान वॉरियर्स. और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद रक्षात्मक तरीके खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल. ही जस्ट कीप्स द स्ट्राइक और स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल. और गेंद ओवरथ्रो के रूप में इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 1+4 5 रन एडेड टू द टोटल. और इस रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 29 विदाउट लॉस ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर. फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर हनुमान वॉरियर्स. और इस वक्त अंतिम गेंद पर सिंगल रहने के बाद दर्शन स्ट्राइक अपने पास रख चुके हैं. और इस बीच गेंदबाज अनिकेत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. पहली गेंद lofted 6 runs और big strokes came from the bat of Darshan. 35 on the board, yet to lose any wicket at the start of the second over. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो अनिकेत अपनी पहली गेंद पर छक्का प्रदान कर चुके हैं. मैच नंबर 6 सब जूनियर विभाग में इस वक्त खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट SVT Trophy 2026 which proudly presented by SVT Volunteers Association, Car Street, Mangalore. और
35 the score. GSB Volunteers Premier League Season 4 SVT Trophy 2026 is now progressing here. Isbar off the toes and finds the gap as well. Scoreboard is now rising up to 41 now with that 6. स्ट्रोक में ज़्यादा रफ्तार नहीं था लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके. 41 on the board. Just a second over in progress. और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. अनिकेत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंडर फ्लड लाइट्स. ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती चलती हुई. लफ्टेड फ्लैटर वर्जन पर छक्का लग चुका है. स्क्वायर ऑफ द विकेट. फैंटास्टिक स्ट्रक वंस अगेन केम द बैट ऑफ दर्शन. और जहां तक सवाल है रनों का तो 47 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुके. 47 विदाउट लॉस. अनिकेत lofted again a 6. 50 comes up. 50 comes up for Hanuman Warriors and what a fantastic struck came to the bat of Darshan. शॉर्ट गेंद थी और खड़े खड़े ही गेंद को इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से. जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड has got that one for a maximum at last. 53 without loss. Just a second over in progress. अनिकेत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. फुल टॉस अगेन अ 6. 59 छक्कों की बारिश यहां पर करते हुए बल्लेबाज दर्शन और 50 comes up for दर्शन now. फर्स्ट मैच सेंचुरी. दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए थे. तीसरे मैच में 50 रनों का योगदान दे चुके हैं. इस बार रन आउट का खतरा और यहां पर देखना है कि कौन से बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुके हैं. तो इस वक्त बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए केदार और सिंगल्स चुराने के प्रयास में इस वक्त ये विकेट यहां पर गिर चुका है केदार का. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का तो 59 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. 59 for 1. 2 overs completed. The bowler starts a fresh proceedings from the commentator box end. और शौर्या गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए. दर्शन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा. ओवर की पहली गेंद. फुल टॉस पल्स एंड इज गॉट द डिस्टेंस. 65 on the board. 65 for the loss of 1 wicket. और निश्चित रूप से छक्कों की बौछार यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज दर्शन अब तक 10 छक्के यहां पर जड़ चुके हैं. ऑलरेडी दर्शन स्कोर्ड 10 sixes so far. और 60 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. Again this time chance and oh he dropped that one. That wasn't a chance at the extra cover. लेकिन इस गेंद को इस वक्त लपक नहीं पाए गेंदबाज माफ कीजिए फील्डर. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. दैट वाज एन इजीएस्ट चांस बट ड्रॉप्ड बाय द फील्डर एट एक्स्ट्रा कवर जस्ट इनसाइड द फेंस. और अगली गेंद ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में. बेहतर फील्डिंग गेंदबाज द्वारा. शौर्या जो कि गेंदबाजी इस वक्त करते हुए. शौर्या इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अरविंद सामना करने के लिए तैयार. And oh, he dropped that one. He's dropped that one. He's got a bit deflection on at the last moment. लेकिन इस वक्त विकेट कीपर इस गेंद को लपक नहीं पाए. और एक और मौका इस वक्त गवाते हुए इस वक्त जीवदान प्राप्त करते हुए अरविंद. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 66 रनों पर. 66 for 1 now in the over number 3 in progress. शौर्या अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. फुल टॉस गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में. बेहतर फील्डिंग थ्रो इस वक्त लेकिन थ्रो इस वक्त स्टंप्स पर नहीं टकराया. और इस बीच बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुका है. 67 for 1. Still a ball left in this over. Darshan back on track is batting on 61. और सपना इस वक्त करने के लिए तैयार. शौर्या की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट. शौर्या फुल टॉस सेंसिबल एब्सोल्युटली सेंसिबल. हल्के से गेंद को पुश कर दिया. रन के लिए दौड़ पड़े. एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. दर्शन कीप्स स्ट्राइक एंड 3 overs completed. 68 for 1 after 3 overs. This is the match number 6 of the sub-junior division of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League. Season 4 is now progressing here in this fantastic Kendra High School ground under floodlights. और मैच नंबर 6 में मुकाबला इस वक्त जारी है यहाँ पर गणेश पैंथर्स और हनुमान वॉरियर्स के बीच.
4 सब जूनियर की टीमें इस सब जूनियर विभाग में जो कि हिस्सा ले रही है। 2 टॉप सीडेड टीमें इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेंगे और इस बार गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। दर्शन का शोक इस वक्त उनकी टीम की रन की गति को पहुंचा चुका है 74 रनों पर 74। दर्शन इज नाउ मूविंग अप टू 68 विद दैट 6। नेक्स्ट मॅच टीम श्रीनिवास आणि टीम कटारी विरा दोन्ही टीमांना रजिस्टर करका इनिंग्स ब्रेक टॉस जाता। Full toss, again swings, and again he's got the distance. 80 for 1. And Darshan is now moving up to 73 now with that 6. 74 he is now batting on. Still 10 balls left in overall calculation in their innings. 10 गेंदें अभी भी बाकी। देखते हैं इन बचे हुए 10 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, बिल्कुल सही जजमेंट के साथ गेंद को इस वक्त जाने दिया अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए बल्लेबाज दर्शन ने, और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 81 रनों पर। 81 for 1 in the over number 4 in progress. Vignesh left it, again he's got the distance. Scoreboard is now rising up to 87 now with that 6, and Darshan Pai is now moving up to 80 with that 6. और देखना है कि दर्शन इस श्रृंखला में अपना दूसरा शतक यहाँ पर पूरा कर पाते हैं या नहीं। अपने शतक से सिर्फ 20 रन दूर, जस्ट 20 runs far from their victory. Darshan is batting on 80. 9 गेंदें बाकी, 9 balls still left in overall calculation in their innings. गेंदबाज विघ्नेश को टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए, और इस वक्त विघ्नेश तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट। Swings and once again 6 runs. नो बॉल का भी इशारा, छक्का इस वक्त घोषित हो चुका है और स्कोर इस छक्के के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 94 रनों पर। 94 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नो बॉल थी पिछली गेंद, और इस बीच विघ्नेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दर्शन इज नाउ बैटिंग ऑन 86। विघ्नेश इन द एयर एंड आउट ड्रॉप्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। और दर्शन यहां पर इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, लेकिन इस कैच को मिड ऑफ पर जो फील्डर थे वो लपक नहीं पाए। और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को खेला था एंड ही ड्रॉप दैट वन, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, पंच एंड 6 रन्स। टीम श्रीनिवास आणि टीम कटारी विरा का फाइनल कॉल। तुमगेल टीमा दोकोनू एक प्लेयर आणंगे टीम रजिस्टर करका इमिडिएटली मागीर इनिंग्स ब्रेक टॉस जाता। 100 comes up for Hanuman Warriors, और इस बीच दर्शन तैयार। फुल टॉस ऑफ द टोस, इस बार गेंद को मोड़ दिया अंतिम क्षेत्र पर 4 रनों के लिए, और मोड़ा था इस वक्त सिंगल्स के लिए, लेकिन स्क्वायर लेग पर मिसफील्ड होती हुई और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हो। तो दर्शन इस गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रख नहीं पाए, ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। 104 रन बन चुके हैं। दर्शन बैटिंग ऑन 96 इन दिस सिचुएशन। 96 of 22 deliveries scored by Darshan, and he's off the strike now। और गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार अरविंद। विन्यास, the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box end। First ball comes, 104 for the loss of 1 wicket। 5th over starts in their innings। Leg stump se bahar, starts off with a wide by Vinyas। Scoreboard moving up to 105 now for the loss of 1 wicket। Darshan is at the other end at 96 of just 27 deliveries he scored। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार विन्यास। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, चूंकि स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 105 रनों पर। 105 द स्कोर स्टेज एट 5 balls left now। और विन्यास एक बार फिर से गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए अरविंद के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट, एज एंड जस्ट फेल शॉट ऑफ अ विकेट कीपर एट द लास्ट मोमेंट। और एक और बेहतर गेंद थी, 2 डॉट गेंदें, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा बैटर अरविंद इस वक्त कुछ हद तक दबाव में यहां पर नजर आते हुए। 2 लगातार डॉट गेंदों को खेलने के बाद विन्यास
Balled out, leg stump uprooted, and a wicket lost for Hanuman Warriors. और अरविंद 2 डॉट गेंदे खेलने के बाद दबाव उनके ऊपर था, उस दबाव को झेल नहीं पाए और अगली गेंद पर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी. Have a look at this, the LED screen, and just inside it, dragged onto the stumps. His depart, his struggling innings has been came to an end, and second wicket loss for Hanuman Warriors. 3 balls left. अथर्व नए बल्लेबाज, दर्शन दूर से छोड़ पर मौजूद. इस बैटिंग ऑन 96 एट द अदर एंड. दर्शन स्ट्राइक का इस वक्त इंतजार करते हुए, 3 गेंदें बाकी और गेंदबाज विन्यास इस वक्त तैयार. लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा, टीम को मिलेंगे 1 रन. जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट. 106 for the loss of 2 wickets. Still 3 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार विन्यास. एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. अपने पेस को वृद्धि करने के प्रयास में लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद इस वक्त फेंक देती है और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर. 107 नाउ. स्टिल 3 balls लेफ्ट. छोटे कद के खिलाड़ी अथर्व इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, लेकिन काफी प्रतिभाशाली. सेंसिबल और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े. इस लॉस इज विकेट, लेकिन दर्शन इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. दर्शन स्ट्राइक पर आ चुके हैं. ही इज बैटिंग ऑन 96. नाउ जस्ट 2 balls लेफ्ट. अब देखना है कि इन बचे हुए 2 गेंदों में क्या दर्शन अपना शतक पूर्ण कर पाते हैं या नहीं. सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में अथर्व ने गेंद को ढकेला था, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आखिरकार रनआउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए. टीम श्रीनिवासा का फाइनल कॉल, तुमगे टीम रजिस्टर कर का फाइनल कॉल. So Darshan batting on 96. Here we go. 2 balls left in the innings. Vinyas, here he comes, right arm over the wicket. This time not connected that one properly. Can't got any run. He remains on 96 now. Now last ball left. और देखना है कि इस अंतिम गेंद पर दर्शन अपना शतक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं. और लगातार दूसरा शतक होगा अगर यहाँ पर इस मैच में वो शतक बनाते हैं तो. लगातार नहीं, इस श्रृंखला में दूसरा शतक. Lost it and he's got that one. He's completed the century in his final delivery of their innings. He's remained unbeaten on 102. And the innings is up for Vinayaka Warriors. They finished with 113 for 3 in the stipulated 5 overs, and they set a huge target of 114 for Ganesha Panthers. तो स्टैंडिंग एविएशन इस वक्त मिलता हुआ तालियों के साथ बल्लेबाज दर्शन का इस वक्त उनके खिलाड़ी प्लेयर्स डगआउट में स्वागत करते हुए. 102 रनों पर नाबाद रहे. He's not out on 102 and he's just completing his century in the final delivery of his innings. और आता ह्या मॅच जाल्लो तशीची पराक फायनलाक क्वालिफाय जाल्लो 2 टीमांचे अनाउन्समेंट जाता. 4 टीमांना हांगा फ्रंट स्टेजाला येवन तुमगेल ग्रुप फोटो काडका तवळी अनाउन्समेंट केला. शेषाडनी गरुडा टीम येनी चंगनिके दलतीतलोगी सगळे टीम हांगे येवन ग्रुप फोटो काडका. ह्या मॅच जातरी गणेशा पॅन्थर्स आणि हनुमान वॉरियर्स तुम्ही जाल्यार हांगे येवन ग्रुप फोटो काडका. इमिडिएटली मॅच जातरी सीनियर मॅच सुरू जाता. आता टॉस जावचे आसा. ताजे नंतर सब ज्युनियर जाल्ले स मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी हांगा दिवचे आसा. तशीची 3rd आणि 4th पोझिशन आसचे टीमांक शाल घालून सन्मान करून तांकां एक धन्यवाद समर्पण आसा. तुम्ही सक्कड सब ज्युनियर टीम हांगा येवका जाल्यार लोक फर्स्ट एक ग्रुप फोटो काडून घेया. आता श्रीनिवासा आणि कटारी वीर टीमाचे आयकॉन प्लेयरान वैरी वेदिकेर येवका. टॉस जावचे आसा. धन्यवाद. और 114 the target for Ganesha Panthers set by Hanuman Warriors, and they have to score 114 in the stipulated 5 overs. Or Antima League match, the last match of the league stage in the sub junior division, and team Ganesha Panthers have to score 114 runs in the stipulated 30 deliveries, and their innings now going to start within just short while. और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर गणेश पैंथर्स की पारी की शुरुआत होगी. धन्यवाद. थैंक यू.
So thank you very much, Gobi. And this is going to be a more interesting game of cricket especially for Hanuman Warriors in this match. They have to get some big victory for win this match. Sam full toss, no ball called by umpire, and swings it hard into the deep mid wicket for a maximum. And looks like Darshan might be a little bit tired after that. He's got a century, the second century of this tournament from the bat of Darshan. He scored unbeaten 102, and again he starts with the first over, and here comes next ball, right arm over the wicket. Again he lofted it. The intention is very clear there from Vinyas that he just wanted to go after. He will not going to look out the bowler. He just wanted to look out the ball. You have to deliver that one out of the park. Back to back 2 sixes. Right arm over the wicket again. Off the back foot, one more 6. Looks like the chance here for the fielder. Oh, taken! One-handed screamer taken by Abhi in the negation just inside the boundary line. I thought it might be a one more 6 here for Vinyas. He's looking for the hat-tricks. It doesn't get hold of that one properly. Tried to pull the ball. No position whatsoever. An excellent catch. Just have a look at it in replay. And even Abhi, after it taking a 6, he's also surprised how the ball is stuck into his hand. And he completed a catch. 13 for 1. Without Team Qatari vira toss win on fielding etla. V1 is a new batter in Little Master. Chota Pack Bada Dhamaka is now on strike. Darshan. This time played it to the square of the wicket and it's boundary. Misfield there by the fielder, and V1 is off the mark with the boundary, and 17 for 1. And this is going to be very interesting how well they're going to get that huge total, the target which is set by the team Hanuman Warriors. Full toss opportunity for the same fielder. Abhi will go into, this time he dropped the catch. He taken a tough catch, but he dropped the straightforward catch, Abhi. And V1 has got a life, he's a lucky man. And the great slogan, fortune favors the brave. Outside the line of off stump and going to be a wide, one more extra. With that extra scope, and moves on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. 19 correction, 95 needed from 26 balls. Ball, lovely delivery indeed there from Darshan. Good comeback from the bowler's point of view. After that, back-to-back 2-6. He got 1 wicket. Then, of course, 1 drop catches in this particular over. It's 10 for none after first over. आता सब ज्युनियर कॅटेगरीचे मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड ओगोगी नाव पैताजी फर्स्ट मैच शेषा सूपर किंग्स आदुकोनु दर्शन सेकंड मैच गरुडा राइजिंग स्टार्स आदुकोनु श्रेयस पै थर्ड मैच गणेश पैंथर्स दुकोनु संकल्प फोर्थ मैच गरुडा राइजिंग स्टार्स आदुकोनु श्रेयस पै फिफ्थ मैच शेषा सूपर किंग्स आदुकोनु अनंतु तशी लास्ट हनुमान वॉरियर्स आदुकोनु दर्शन हे इतले नाव वाजिल प्लेयर्स आन वैरेव का मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कलेक्ट करा. तो 2 गेंदे गेंदबाज राघवेंद्र इस वक्त फेंक चुके हैं और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में इनटू द गैप एज वेल. एकनाथ ने चौके के लिए लगभग जमीन के सहारे ऑफ कटर गेंद थी राघवेंद्र की और इस गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर. Bowler, fantastic all-rounder Prabhakar Munna, bowling right arm around the wicket. Starts with a delivery which is called as a wide. Of course, after the long break is coming to the ground. Again, played it down to mid-on and we're going to pick the single for that. With that single score, moves on to 14 for the loss of 1 wicket in the over number third is in progress. This time wanted to go for a sweep shot, lovely delivery, and Prabhakar saying that yes, it's a fair delivery around the legs of the batter.
One more single. One more single. With that single, score moves on to 15 for the loss of 1 wicket. One more single added to total. With that single, score moves on to one more. 16 for 1. Wide outside the leg stump and so one more. It's and looks like it's going to be a boundary there. Wicketkeeper missed it, Sudhir, and by 4 and 4 more, and it's a very important run. 22 for 1. Over number 3 in progress. Last ball remaining, last ball. 2 wides in this over. Other not bad, at least a mistake unto. So man was scoring. This time lovely shot, played it down to square leg boundary for 4 runs. So with that bound is covered, moves on to 26 for 1. 3 overs completed. .26 on the board. That bound is covered. Moves on to 30 on the board for the loss of 1 wicket. That means another 27 needed for the victory in 11 balls. Yes, I'm going to be one more single. With that single covered, moves on to 31 for the loss of 1 wicket. So they're still trying to catch that required run rate. 26 needed from 10. Here comes Mohan Pai. Coming down the track, chance of run out. Direct hit, but umpire says not out. Underarm throw from Sudhir. And Sahadev missed it. Very important delivery. One more dot ball. Mohan Pai again, back to his body mark. Right arm round the wicket to Sahadev. Needed some boundary, again played it down to mid-on, but not more than a single. With that single score, was on to 32 on the board for the loss of 1 wicket. 25 needed for the victory now. Dinesh have to deal with some boundaries. Dinesh Pai. Mohan Pai, very useful bowler, the leg spin bowler. Oh, this time delicately played. Oh, very good stop. Excellent stop. Vinayak using his feet. Very intelligent cricket there from Vinayak. You know exactly, cannot bend quickly. So just using his feet. And is saving the boundary for his team now. 33 for 1. Lovely cricket there from Vinayak. And 24 needed now from 7 deliveries. Here comes next delivery. This time is gone. They played it down to this square leg in pull, and Mohan Pai got the wicket. 1 more wicket back in the pavilion. Now last over remaining. 24 needed for the victory, and wait and see who will go into ball the last over. Sudhir may be the best option to bowl the last over. They have Kishore is also one good bowler there in the square leg, and Vinay Prabhu, Sudhir brought into attack to bowl the last over. 24 needed from 6 ball. Mid off, mid on. Short mid wicket, short square leg in front of square, short fine leg. The fielder down at gully, backward point. Short cover, mid off. And Sudhir will go into ball the last over. 24 needed. Balled him, cleaned him up. Excellent leg spin deliveries
And Dinesh tried to play the improvising sweep shot, missed it completely. Wicket number, one more wicket back in the pavilion. Now 24 needed from 5. Even 5 boundaries will not going to help the team to win this match. Because 24 needed, I think just a formalities left in this game for team Srinivas to win this match. Mahesh, the new batter. This time swept the ball, but straight to the hands of fielder. Wicketkeeper Ajju fields the ball. 4 balls and 24 required. Even 4 boundaries will not going to help the team to win this match. One more lovely delivery. Excellent delivery indeed. 3 balls remaining. Sudhir is not giving any room for the batters. Bowling along the carpet. Making it difficult for the batters to get any kind of stroke. This time lofted and is gone. Of course, this was a habit of the batters hitting the ball in the air. You can't get runs for that, but you can. Because of the last 2 seasons, we are giving the opportunity for the batter to get the ball into the outside the boundary line. They can get the 6 for that, but in this particular season, batter have to drive the ball along the ground, not to take in the aerial route. 24 for 2, 33 for 2, 4. Boundary comes up. Raghavendra. Maybe Raghavendra needed little bit early in this innings. So at Modern least, Rice Millache, Venkatrai Malya, Anga ground Aila Saji, Vedike Revka Mundim Mungetas. last ball of the match. And Rice, that's it. A huge victory. The victory of 19 runs, run out taken place. So congratulations, Srinivas. They're winning this match quite comprehensively, defeating team Qatari Veeras for just 19 runs. Congratulations. Hard luck team Qatari Veeras. Better luck for the next match. And congratulations for the team Srinivas. We are coming to the next match. Team Veera Vittala versus team Gopalakrishna. So man of the match of this match, which goes to the man who did a great job with the all-round performance, Sudhir, who scored the runs and picked up 4 wickets in this over. So that I request, of course, Sudhir will be the man of the match winner of the first match. Congratulations, Sudhir of team Srinivas for his all-round performance. Congratulations. And before the match number 2 of the senior category, we're going to start now. And for that, I request once again my friend, long-time commentary partner and one of the fantastic cricket commentator, Mr. Gopi, to take over the microphone. Thank you. Team Srinivasa dukunu man of the match collect koruka Vedike Revka. Tashichi next team Veera Vittala toss win janu batting getila sir. Team Gopalakrishna na 2 minute bitari pitchari ground ayonu tumgel fielding gevka. Team Veera Vittala players ana batting ayoka. Samaya abhavashil nimita immediate match start datta sir. Oppa sangta sir. Team Srinivasa man of the match win jalal player ana Vedike Revnu tumgel man of the match at collect karka. Hello, check. First match man of the match winner name ಒಮ್ಮೆ repeat ಮಾಡಿ.
राइट धन्यवाद सतीश। तो मैच नंबर 2 सीनियर कैटेगरी में शुरू होता हुआ इस वक्त पहली गेंद गुरु गेंदबाजी करते हुए गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। और बल्लेबाज जो हैं गौतम जिन्होंने गेंद को इस वक्त बोला था खूबसूरती के साथ। और मैच इस वक्त शुरू हो चुका टीम वीर विट्ठला और टीम गोपाला कृष्णा के बीच में। और टीम वीर विट्ठला जो कि इस वक्त पहले बल्लेबाजी यानी बैटिंग करता हुआ और इस बीच पहली गेंद को चौके के लिए डिस्पैच करने में सफल। तो 4 रन यहां पर मिल चुके हैं और इन 4 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका टीम वीरा विट्ठला का। और इस बीच गुरु अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को बोला खूबसूरती के साथ, 2 लगातार चौके इस वक्त, कंसेक्यूटिव बाउंड्री फॉर द बैट्समैन एंड विद दैट बाउंड्री द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 8 ऑन द बोर्ड। इस बार 3 बाउंड्रीज इन अ रो, हैट्रिक बाउंड्री फॉर द बैट्समैन। गौतम के बल्ले से इस वक्त 3 लगातार चौके इस वक्त लग चुके हैं और बेहतर शुरुआत यहां पर दे चुके हैं गुरु गेंदबाजी करते हुए। अगेन 4 इन ए रो, 4 चौके लगातार और निश्चित रूप से एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर कर चुके हैं बल्लेबाज गौतम। फर्स्ट मैच आचे टीम श्रीनिवास सुधीर भंडारी मैन ऑफ द मैच विंजल सजी वेदिके ट्रॉफी कलेक्ट करका। तो इस बीच एंड बाउंड्री नंबर 5 इन अ रो। So what a fantastic display continuing here from the batsman Gautam। 5 गेंदें 5 चौके और देखना है कि छठी गेंद पर भी क्या वो चौका लगा पाते हैं या नहीं। गुरु इस वक्त तैयार, ये गेंद एंड दिस टाइम इफ नो इट्स गॉन 6 इन अ रो, 6 of 6, 6 चौके पहले ओवर में इस वक्त बल्लेबाज गौतम लगा चुके हैं, 6 4s इन ए ओवर और 24 रनों के साथ एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर कर चुका है टीम वीर विट्ठला। अब गेंदबाजी शुरू करते हुए सुधाकर ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। आमतौर पर लेग स्पिन गेंदबाजी वो करते हैं, इस वक्त तैयार पहली गेंद। इस बीच गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा, चूंकि गेंद पैरों पर टकराई और आखिरकार गेंद एक बार फिर से गेंदबाज सुधाकर के हाथों में आते हुए। काफी अनुभवी गेंदबाज सुधाकर लेग स्पिन गेंदबाजी आमतौर पर वो करते हैं, यहाँ पर लेग स्पिन गेंदबाजी के साथ शुरुआत कर चुके हैं। इस बीच ये गेंद उछाला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल फॉर अ 4। इस बार मंजुनाथ की पारी, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को पंच किया था इस वक्त कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से चौके के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर, 28 विदाउट लॉस। और सुधाकर अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ द टॉस, अगेन ही फाइंड्स द गैप एज वेल। 32 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, 8 बाउंड्री स्कोर्ड in the 9 deliveries of their innings, in the first 9 deliveries of their innings in fact। और निश्चित रूप से ये दोनों बल्लेबाज काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए। सुधाकर की गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल, लेकिन oh brilliantly saved in his second attempt by the fielder at extra cover। और सिर्फ एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस बीच 33 रनों पर। गौतम इस बार स्वीप किया, गेंद मिड विकेट पर 4 रनों के लिए। 37 विदाउट लॉस, लगभग हर गेंद पर चौका इस वक्त जड़ते हुए। और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा टीम वीर विट्ठल एक लंबे स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ। सुधाकर इस वक्त तैयार, इस ओवर में अब तक 13 रन प्रदान कर चुके हैं पहले 5 गेंदों में। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद डीली गेंद पुल किया एंड दिस टाइम इज गॉन, he's gone this time, he hit that one full tossly over the fence। और इसे श्रृंखला के नियमानुसार उन्हें आउट करार इस वक्त दिया गया है। और इस वक्त गौतम की पारी समाप्त। और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था, फुल टॉस, गेंद सीमा रेखा के बाहर हो चुकी है फ्लैटर वर्जन पर। और पहला विकेट गिर चुका है इस वक्त गौतम के रूप में। इज आउट आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ फैंटास्टिक इनिंग्स फॉर देयर साइड। गौतम बैक टू पेविलियन। प्रशांत द न्यू मैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल जॉइनिंग मंजुनाथ। और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ रमेश स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स। थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, 4 रनों के लिए। फैंटास्टिकली दिस टाइम प्लेड दैट वन इनटू द गैप बिटवीन मिड ऑन एंड मिड विकेट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल एट लास्ट। और देखिए यहां पर किस तरीके से स्ट्रोक को खेला था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक का। और
खासकर 80वें और 90वें दशक के दिग्गज जीएसबी समाज के खिलाड़ियों का समागम यहाँ पर होता हुआ और बॉल्ड आउट। इस बार गेंद को उछालना चाहता चूंकि बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ मच स्ट्रेटर लाइन एंड द बॉल स्टक टू द स्टंप्स, बिल्स आर डिस्टर्ब्ड। वन मोर विकेट फॉलन और इस बार गेंद को उछालने के प्रयास में चूके थे और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। Prashant the band dismissed. Now it's 41 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. नागेश नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त मैदान पर उतरते हुए। रात के इस वक्त 10 बजते हुए फ्लडलाइट्स की झगमगाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एसवीटी ट्रॉफी 2026 जीएसबी वॉलंटियर्स प्रीमियर लीग सीजन 4 की शानदार प्रगति होती हुई और जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है एसवीटी वॉलंटियर्स एसोसिएशन का स्ट्रीट मैंगलोर ने। और इस चौथे ऋतु का 4th सीजन का सीनियर कैटेगरी का दूसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत पहले दिन का दूसरा मैच है सीनियर कैटेगरी का इस वक्त प्रगति पर। और गेंदबाज रमेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज के लिए गेंद बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी द बॉल बेंच जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट लकी एस्केप फॉर द बैट्समैन। और बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज रमेश कामत पहले और पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद 2 बेहतर गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस बार ड्राइव करना चाहा, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा बैक टू द बॉलर की दिशा में। जब तक फॉलो थ्रू में दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस बीच गेंदबाज रमेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाईं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे। मंजुनाथ जो कि इस वक्त 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते इस बैटिंग और 9 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। अंतिम बॉल अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज रमेश तैयार। मिसेस दिस इज अ गुड डिलीवरी एंड इज गॉन इन फैक्ट स्टंप्ड बाय विकेट कीपर एंड अ फैंटास्टिक ओवर केम स्टूडेंट फ्रॉम रमेश। निश्चित रूप से एक बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है रमेश का। और देखिए किस तरीके से अंतिम गेंद पर बीट हो गए और विकेट कीपर शिवानंद ने विकेटों पर निशाना दागा। उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 गिर चुका। 42 for 3 overs have been bowled. Murli, the number 5 batsman, is now comes out to the middle. Meantime, the bowler starts the fresh proceedings is Shivanand, the experienced campaigner of their side. और शिवानंद का जहां तक सवाल है अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक जाने जाते थे अपने क्रिकेटिंग डेज में। और आमतौर पर वीवी क्रिकेटर्स वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स का उन्होंने कई साल तक प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंट किया है। और एक अपने गतकाल के हुनर को यहाँ पर वो इस वक्त इस बार गेंद को स्वीप कर दिया 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा गतकाल के वैभव को यहाँ पर अनावरण करने की पूरी कोशिश करते हुए सीनियर कैटेगरी के इस मैच में। और 4 रन इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। डिफ्लेक्ट होकर गेंद निकली थी फाइन लेग पर। और एक बार फिर से शिवानंद की गेंद बेहतर गेंद नेक्स्ट बाउंस गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। गेंद और बल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर लुक चुका है 46 for 3 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और शिवानंद फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार ऑफ द टोस फैंटास्टिकली स्ट्रक इनटू द गैप एज वेल। सो बाउंड्री रिजल्ट्स एंड विद दैट बाउंड्री द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 50 comes up for टीम वीर विठल। 50 रन यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं। और शिवानंद अगली गेंद इस बार इज गॉन, दिस टाइम इज गॉन, हिट दैट वन फुल टॉसली, इट कवर पॉइंट स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड ही लॉस्ट हिज विकेट। इट्स 50 for the loss of 4 wicket. Harish, the new batsman, is now comes out to the middle. और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का शिवानंद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। फुल टॉस 2 for Saadi off stump, wide declared by umpire. Single run added to the total in the face of extras. 51 on the board for losing 4 wicket in the over number 4 in progress. शिवानंद अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर विकेट कीपर चूके लेकिन एक्स्ट्रा रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 52 now for the loss of 4 wicket.
इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। शिवानंद अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, इस बार सही गेंद, गेंद कुछ ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, गेंद तक पहुंचना चाहता लेकिन चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर शिवानंद बाउल्स दाहिने हाथों पर द विकेट। बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी और बेहतर ओवर शिवानंद का समाप्त हो चुका। 4 गॉन एंड आफ्टर 4 overs टीम वीरा विट्ठल आर 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 wicket and now just a last over remaining in overall calculation in their innings। तो दर्शकों की संख्या काफी हद तक बढ़ चुकी है। शाम को जितने दर्शक दिखाई दे रहे थे उससे कुछ ज्यादा दर्शक यहाँ पर दिखाई देते हुए देखिए एलईडी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाया जा रहा है दर्शकों का। Needed such kind of brave and gutsy batting here for the bad teams to win this match. First over completed, the 5 without loss of any wicket. Still a long way to go for the team Gopalakrishna to win this match. They have to get 1-2 big overs. And if you are not getting the big overs here, I think it's very difficult for them to win this match. 66 is the target. That means 61 needed in remaining 4 overs. And asking run rate is almost 15, more than 15 runs per over. The bowler brought into attack with the jersey number 06. Dinkar. This starts with the wide, which is gone far outside the line of leg stump, and wide call by umpire Rupesh. 6 on the board without loss of any wicket. Came down the track, played it, a misfield there by the fielder and went into the boundary. Powerfully struck so that the short mid-wicket fielder, of course he's got a hand on to that, but because of powerful strike there from the batter Ramesh, the boundary, this time reverse sweep, played it straight to the hands of the fielder. Dr. Santosh played fielding at backward point region, fields the ball. And one more wide, one more extra, with that extra scope at Namuzan to 12 on the board without loss of any wicket. And here comes the next delivery. Right arm around the wicket balls. One more big wide. This is turning out to be a big over. The kind of over which is badly required for the team Srinivas. They're getting some extras in this over. This time came down the track and misfielded by the fielder. One more boundary. So with that boundary scope, and moves on to 16 on the board. 17 correction. And the making a little bit room to play the shot. Played it beautifully by Sudhakar. One more wide. And with that extra scope, and moves on to 18 without loss of any wicket. Very important runs coming in this over. 18 means 13 already came from this over. This time lovely delivery, good line. At last the bowler managed to get his line and lens Dinaka. And right arm around the wicket. This time straight to the hands of fielder. Lovely catch taken and he celebrated. Harish absolutely excited after that he taken a catch. Why not? The batter is back in the pavilion, Sudhakar. And it's been disappointed. And just have a look at the celebration. Absolutely fantastic. Harish, after he picked up a catch, is in his own style. He's celebrating. Just have a look at the replay again. And this is the one in screen. Oh, one more lovely delivery. So over number 2, which is comes to an end after completion of over number 2. It's 18 for the loss of 1 wicket. 1866 is the target and means still long way to go for the team to win this match. 48 required from 3 overs. 18 ball and 48 needed. Of course, without having opportunity for the batter to hit the 6, they have to manage with the boundaries. And that might be the big ask for the batters. How to play the ball along the ground. If you get the aerial route and a chance of getting out.
This time played it down to square leg region. Good stop by the fielder. Just a single. Manjunath brought into attack to bowl the over number third. It's 19 for 1. You're watching SVT Trophy 2025. Played it down to in the gap and using his feet. And my goodness. Well, well, well. This is what the combination work. And again, the Murali using his feet. Of course, they're playing some football in a cricket ground to stop the boundary. Again, down the leg side, going to be a chance of run out. Suicider. Absolutely suicider. No chance at all for run. But Ramesh wants to get the single. But no response coming from Force. He need to sacrifice this wicket. Now new batter in is Shivanand. One more, the big name in underarm cricket. One played the game which is undoubtedly it was a fantastic career what he has got for underarm cricket. Playing for Veera Venkatesh, playing for Vijay Lakshmi cricketers as well for many years. What a good striker of the ball. Now wait and see how Shivanand will go to contribute from his bat. This time played it down to mid-wicket. Quickly they're going for the single. With the addition of the single, score moves on to 21 for the loss of 2 wickets. And Shivanand is knowing for the big innings. Of course, in this particular cricket ground, I have to play with the ball with the ground, along the ground. Going to be a wide, one more extra. With that extra, score moves on to 22 for the loss of 2 wickets. 2-2-2-2. All we can see the Nelson in the scoreboard. Lovely improvisation. Swept the ball nicely into the fine leg region. 4 runs by Ramesh. With that boundary scoreboard moves on to 26 for the loss of 2 wickets. 40 needed now from 13 balls. How to deal with the boundaries? Manju. And they wanted to go for the reverse shape. Lovely flighted delivery to finish the over number 3rd. Good over. After completion of over number 3, it's 26 for loss of 2 wickets. You are watching SVT Trophy 2026, which is proudly presented by SVT Volunteers Association. Umesh brought in attack to bowl the last over. This time what I'm talking about is a big striker of the ball. It's very difficult for the batter like Shivanand to get the ball along the ground. He just taken an aerial route and pays the penalty for that. He's back in the pavilion. So new batter in is one more senior player, Vivek. Walk towards the middle. Umesh, second time in this over. Right arm, left arm. Wow, beautiful delivery, fantastic delivery. The beautiful leg cutter. Of course, he bowling a leg cutter, but he is a left-hand bowler, so that the ball is coming into the batter. Umesh bowled a beauty. Absolutely right on the money, right on the target. Unplayable delivery. So Vivek is out for duck, golden duck. It's 26 for 4. So new batter in is Ganesh Bhatt. 26 for 4. Still 40 needed from 10 balls. After this match will be played between team Srinivasa and versus team Gopal Krishna. Will be the 3rd match of the senior categories. Left arm. Ball's going to be a wide. This time Umesh is not getting that much of turn what he is expecting from the previous delivery. And left arm again balls. This time lovely delivery. Umesh getting the beautiful deliveries which is coming into the batters. (27 for 4). Santosh Shanay is giving some promotion from gully to wicket keeping. This time lovely stop, very good stop. Well, we can see that senior players absolutely they're perfect example for the youngsters. The way that they are giving some dedication and towards cricket. It's 27 for 4.
driven down to long on and mid on. In fact, a misfield dive by the fielder, boundary. So with that boundary, scoreboard now moves on to 31 for 4. And another 35 required for the victory. It's a highly difficult task because one boundary you can get more. This time it's gone. There's a third player of Srinivas hitting the ball in the air and they're getting out. The one more wicket back in the pavilion. So last over remaining and 35 needed from the last. That means it's just a formalities left in this game. Looks like Murali will go into ball the last over. No, Murali will not going to come to because the big runs which is need to depend, so that they're trying to get Arish to bowl the last over. Arish Prabhu, one who got a catch in the mid-on. Again played it down to square leg. Again a good stop for using a feet by the fielder. Only a single. 32 for 5. 34 needed from 5. And looks like only the formalities left in this game to finish the match for Veera Vittala. This time I think one more wicket back in the pavilion. The 6th wicket back in the pavilion. And Mahesh will be the last batter for for the team Srinivas. Gopal Krishna correction. Mahesh will going to take the strike. Harish. Again played it in the gap. One bounce into the fence for 4. Straight away Mahesh is off the mark with a boundary. 36 on the board. Next match team Srinivasa and Gopal Krishna. Srinivasa team captain and immediate team register korka and hange yoka deska lagi. This time appeal for run out. Harish asking question for umpire for the run out, but Ramesh just made it. 2 balls remaining to complete the formalities. Mahesh will going to take the strike. Fifth time in this over. Full toss, played it down to fine leg region for 4. No ball called by umpire. So 5 more runs added to total. Still 2 more deliveries left in this over. Harish to bowl the next delivery. This time they're going for a quick single, chance of run out, and umpire says not out. The ball which is missed by the bowler, and of course the stumps which is uprooted, but not from the ball. Ball which is just slipped out of the hands of the bowler. No damage done, but only run, single run. 1 needed from at 1 ball remaining, 24 required. And that's it. Chance of run out. Srinivasa missed the stumps and they completed the single. So that's it. A victory of exactly 23 runs. The huge victory for the Veera Vittala. Congratulations team Veera Vittal. They defeated team Gopala Krishna by 23 runs. It's a huge margin. Congratulations for the team Veera Vittal for their dominated performance. Hello. Team Gopala Krishna, तुमगेल team an तही सुगा, तुमगेल captain ananga registration desk का report करका immediate toss जाता, समय अभावस दलतीत लोगी captain नंगे होका, team Srinivasa captain हंगे ये नहीं के final call दिता सा तुमका, team Srinivasa final call तुम्हें report करकांगा. So man of the match goes to Gautam Shanai for his fantastic batting performance, who scored a quick fired
28 runs in 8 balls, were judged as the man of the match. So that I request Gautam to please collect your man of the match award from our chief guest in our main stage. ವೀರವಿಠಲ ತಂಡದ ಗೌತಮ್ ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are into the match number 3 on team Srinivas versus team Gopal Krishna. We'll take a short break here, and after a short break we are back once again with my friend Mr. Gopi in Hindi. Thank you. टीम श्रीनिवास टॉस विन जावन फिल्डिंग घेतला. श्रीनिवासा टिमाक डग आउट 1 दिल्लेलो आसा. तुम्ही ओग्गी ते सेटल जावन तुमगेल फिल्डिंग येवका आनी इमिडिएट 2 मिनिटांना मॅच स्टार्ट जाता. नेक्स्ट मॅच अनंतराय पैन कमेंट्री बॉक्साक कमेंट्री दिवका. कोंकणी कमेंट्री येता. टीम श्रीनिवासान फिल्डिंग येवका. ऑफिशियल्सान आपयला आसा. तुमगेले टाइम स्टार्ट जाला. Welcome to Anant for ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆಗಾಗಲೇ. ಗೌತಮ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ವೀರವಿಠಲ for his 28 runs from the bat. So welcome for Anant Roy for our of course the language which is very more popular in mother tongue Konkani, and over to Anant. पूर जना के नमस्कार. एक पूर जना के कसं मला एक कमेंट्री टेक एक गम्मत जाऊ का
तशें देखून हांव बसला हांगा आतां टीम गोपाल कृष्ण आनी टीम श्रीनिवास हांगेल मध्य मॅच जाता आसा फर्स्ट मॅच श्रीनिवास टीम विन जाला ताजे कारण मागशी 5 नंबर घाल न्हू आमगेलो सुधीर अण्णा एक नमून वेस्ट इंडिसा प्लेयर सो मागशे रबला एक टायमार वेस्ट इंडिसाचे पूण अशी कॉन्फिडन्सार देवचे आशिल्ले अज्जूले स्ट्रॅटर्जी पळय सिडनींत खेळ तसो करता आसा मेलबोर्न सिडनींत पळता हे लॅक घालता जास्ती करचे तशें करचें म्हणून आतां फर्स्ट प्रकाश अण्णा बॉलिंगाक शेरनवानाल मंके बॉलिंग आसता जाल्यार लागीं येतान कट जाता तशीच एरान फिंचा मंके बॅटिंग आमगेले शिवानंद शेणे येयला फर्स्ट बॉलाक मारला धांवन येयला आमगेलो मुन्ना एक टायमार लोळन फिल्डिंग करता आशिल्लो आतां जायना आतां म्हळ्यार प्राय जाला न्हू अपास आयला प्रकाश अण्णा बॉलिंगाक शिवानंदान मारला सीधा वचून पेविलियन आयला शिवानंद शेणाय आउट आता आयला सुधाकर अण्णा हन्नी एक 1 डाउन प्रतिष्ठित बॅट्समॅन रिक्की पॉइंटिंग्स येवन गार्ड घेवच्याना सीधे खेळचेची आसूं नाकाचे आता प्रकाश अण्णा आयला एक तागेले एक बॉलिंग शैलींत पळक आतां चंद आहा कुट्टी कोण धावला मुन्ना बसयला उड्डयला एक उद्दंड नमस्कार घाल्ली थंय ग्राउंडा मदेन तो मुन्ना ಔಟ್ जाता म्हाका डावट कंचकीची साबणा पिटी एडवर्टायज करतास की म्हूण पाय क्लीन करूक आतां प्रकाश अण्णा बॉलिंग आयला चंदकर मारला आकाश गंगा तकून भायर वचून उद्दा पडलेला आसा मत्तीन करता आसा गुरण्णाक गद बिसिल मंके बिसून बॉल भायर घाला आत्ता येयला रमेश अण्णा स्टायलिश प्लेयर एक क्रिकेटांत कशी शूज ग्लव्ज पुरो घालता पळय तशी येयला प्रकाश अण्णा हात मार्क्स घालून रबला बॉलिंग घालो येयला चंद कोण बॉलिंग घाला बोल्ड आ तावली मला शेरनवान लक्षणार बॉलिंग घालता हंगा रमेश अण्णा ಮತ್ತೆ ಹೂನ್ ಕರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಕ್ಸೂನ್ ಎತ್ತ ಸ ನಾ ಹಸ್ತಾ ಸ हॅट्रिक मिळला प्रकाश अण्णा बॉल वयर करी हात वयर करी हा शबाश अज्जुल स्ट्रॅटर्जी काची आड पडल्याची गोपाल कृष्ण विंगड कसले नाही अशा अंपायर की फिक्सिंग करतास की म्हणते आउट दी आवाज मागीर पळय तुका म्हणून नावा अज्जू धावन होता असा प्रकाश अण्णा विवेक अण्णा एक 1947 त्या पळय लाईट नातील टायमार टेस्ट आनी खेळता पळय तशी खेळता असा विवेक अण्णा 5 ओवर मॅच आहे ओव्हर जल्ला अज्जू हात दूर दूर करता असा कसा करता म्हणून गोत ना मोहन पायला दांत चाबून अशी कोर्नाक तो अज्जू घाल मारतो कथा म्हणून अज्जू आयला लेग स्पिन ऍक्शन आरी बॉलिंग घालू का अज्जूला बॉल म्हळ्यार सुर्नळीशे ನೆಲಾರ ಇಲ್ಲ 87 ನಂಬರ್ ಗಾಲ್ ಅಜ್ಜು चंद कोरनेक बॉलिंग घालता आसा तशीची बॅटिंग आका सुधाकरण ड्राईव्ह केला जलारी ड्राईव्ह केला कश जाला म्हळ्यार 30 यार्डा भायर गेल्यारी आउट तज्जे कसा म्हळ्यार फिलिंग्स ना अंक म्हळ्यार प्रॅक्टिस कोर का त्या मॅच अज्जू फुडली 4 वर्ष तुकून यांची खेळता आसा कोण येवची म्हणून गोत ना आत्ता आयला सुपर डुपर गणेश भटमाम आणि एक टीम स्कोर 70 वची चान्स आसा सगळो दीस खेळल्यारी गणेश अण्णा एक टायमार एक कशी खेळता आशिल म्हणारी म्हाकाय गोत ना हांव पळय न्ही गणेश अण्णाक गोत ना पळय
ಎದುರು ವಿವೇಕಣ್ಣ ಹಂಗ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಮಾಮ್ ವಿಸ್ಕೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜು ಐಲ ಸುರ್ನಳ್ಳಿಶೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲುಕ ಗಲ್ಲ ಬೌಲಿಂಗ जडच्या पळयला कोयर नाशिल थंय तशीची आमगेले सुधीर अण्णान एक लायक किपिंग केला नेला तुका येईल बोला निद्दोनु बैसोनु पुरा मारलेला आसा जॉगिंग शे वर्तासाची अपासायला अज्जो विवेकण्णाका विवेकಣ್ಣ आता चंद गूगलीगಲ್ಲ बॉल कश कट्ट जाला म्हणून ಗೊತ್ತಾ विवेकण्णाला पसायला बॉलिंग आलो का विवेकण्णाना पाया तुकून मारला गणेश भटमाम पावनी रिक्षेक वरकाकी म्हणू ना ड्रायव्हर ना आशिल्लो आउट जालो तशीची हंगा VVN रिचर्ड्स तशीच एक टोप्पी घालना कार्तिक अण्णा अंपायरिंग VVN रिचर्ड्स एक हुडगास दिता आसता जेची अंदे विवेकण्णा नॉन स्ट्रायकर आसा एक बली पशु जावन रबलाची बलिंद्र जावन रबला बल दिता आसा बोल्ड कसाने करू ना अज्जू ಗೊತ್ತಸಿಲ್ ते अंक ಕೇಳಣ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕ ಮಾತು ಕೇಳಣ ಗೊತ್ತ ಸಂಗ म्हणू तशाक बोल्ड केला विंगड कसेल नाही किशोर भाई असतास 987 टी शर्ट नंबर घालून किशोर भाई 13 असणार 1000 जत्तशील ते एक टाइम मारताना 987 रन मारला सा घरान तू खेळताना एक मोबाईल मिस झाला सा बोल्ड मुन्ना अशी बॉलिंग घालना आशिला तांका धैर्य दिलेल्याची विवेकण्णान एक मोबाईल फोन मेळला आसतरी एक हंग येवन दिवका म्हणून आम्ही विनंती करताची मोबाईल फोन आशिला हंगा नेक्स्ट मॅच टीम कटारे वीरा वर्सेस टीम वीरविठ्ठला तुम्ही कॅप्टन संग घेऊन टीम रजिस्टर कर का इनिंग्स ब्रेका टॉस जाता चंद बॉलिंग महेश एक नंबर गद बिसिल से बिसित असा रब्बिल कडनाची स्कोर सांगते तशना जाय जाला मी सांगताची 3 रन महेश उगूर धावून धावून महेश पिच्चातून साइड వచ్చు का पिच बेतल्यार మరి पायपरा मॅच असा आता मुन्ना एडक्यातून बॉलिंग घालता असा कंची शॉट डिस्कवर करता मळशीमामान सांगका आमका मळशीमाम कंची शॉट डिस्कवर केलेला म्हणून सांगका तू मळशीमाम असता सा महेश गायडन्स दिता सा मळशीमामाका मुन्ना याला बॉलिंग घालो का बॅट रब्बील कडनाची अशी तशी करता सा महेश आला स्ट्रॅटेजी कसं म्हणून बोला का 3 ओव्हर झाला आणि 2 ओव्हर राबा 30 रन मारतो म्हणून सांगता सा एक नमूनो डेविड बूनुसो मळारी महेश मळारी आता इला मोहन पाई एक टाइम मारी विवीचो लेग स्पिनर बॉलिंग 1 ओव्हर 5 विकेट काढला असताना 6 विकेट काही चंद ड्राइव केला मुन्ना ना लोळणी बॉल सोडला मग विनायकಣ್ಣ ಇಲ್ಲ महेश अण्ण पावनी टंपो गेला महेश अण्णा सुरेश सांगितले आम्ही रिक्षा जेव्हा करता आशिल्लीची विनायक अण्णाला मला तो 8 फीट असा सुरेखाची त्या उडयताना ते करेक्ट जाऊन पडत त्या विनायक अण्णा लायक फील्डिंग बेस्ट फील्डर तुकाची आजी आता इला आमगेला सीनियर वॉलंटियर नायक माम पूरे जन क्लॅप मारका आमगेला ವೆಂಕಟರಮಣ ಲಂಗ ದಿನನಿತ್ಯ
एक दिवस ते चुके ना ते आमगेल नायक मामाने येऊन सेव्ह केलेलं असा आम्ही नाव काढायची नायक मामा म्हणून आपोच्या नायक मामाला सेकंड घेतलं अज्जून आउट बिंड जाईना नायक मामू लेकू नाकतो आउट दिनाच आम्ही नायक मामा एशान बॅटिंग मळसी मामो रबला नायक मामो नॉन स्ट्रायकर आरी मोहन पै दान चाबून बॉलिंग व्हायला ना आउट दिला वत्ताची येताची कसा करत म्हणून आमक बदक होत ना वत्ताची येताची ऑल आउट ना प्लीज ಸ್ವಲ್ಪ केळू सोडाच मारा 8-4 रन दिले इतले ते एक दोग जण आपस खेळायची ऑल आउट जाय नाही तशी वाट नाही मारा 4 रन दिले इतल्याची ಸ್ವಲ್ಪ बार ते करूया मॅच महेशा कोणी असला केळय तू आवाज तुक सपोर्ट काय भिवू नका कोण गेला रेवड नाही 4 रनाक 9 विकेट क्रिकेट हिस्ट्रीन तू फर्स्ट टाइम ಗೆ ಮುನಿಯ ಆದಿತೆ ಆವ ಪಳೆನಿ ವರ್ಲಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕ 9 रन 4 विकेट पळेला नारायण असतास नारायण आमगेला यांच्या वस 4 वर्ष नंतर ओपनिंग आईला विंगड कोणी नाही विनायक खन्ना आणि सुधीर भंडारी जोएल गार्नर सो तिथलं दिग असं विनायक खन्ना स्टम्प्स का 8 फीट वर का जायचं विकेट बोर्ड का जायला विनायक भंडारी रमेश अण्णा असतास एक जावकोण केळीचे आम्ही गोता समकाय म्हणून फील्डिंग स्ट्रॅटर्जी करण्यात आलेलं वाट नाही विनायक अण्णा मैच फिक्सिंग कोर्नक शिवालोटो टीम कटारे वीरा आणि टीम वीर विठ्ठला टॉसा येऊ का फायनल कॉल तुमका आता रमेश अण्णा लेग स्पिन घालतास विनायक अण्णाने ड्राईव्ह केला सुपर गणेश भटमाम एक योगासना टाईपार एक थ्रो उडेला असा योगासना टाईपारी कसे उडेला म्हणते कोणाक गत ना सुधीरन बदा स्वार्थी तोच एक विन कोण दित तशील हांव विन कोण दिव का मॅन ऑफ दी मॅच मेळ्ळो म्हाका म्हण तशी म्हाका गत ना म्हणलेक लावा रमेश अण्णा चंद कोण घाल बॉलिंग सुधीरनाला सुपर फील्डिंग क्लॅप मारायची दही कोर अप्रायर अशी फील्डिंग कोर का जला एक अप्रिशिएट कोर का मग स्पेशल चरक्या क्लॅप मारायची अशी नाही रमेश अण्णा नक्क्या किरकिरी पूरानी म्हणून सांगून पिची पिची गेला पिची 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 जाऊन आईला आता वाईड अगेलवाद सत मंताची नरसिंह पै मम्मान अंग स्टेजाला येऊ का टॉसाक आता अपासा चंद स्ट्रोक धरला विनायक अण्णा बली फसी जायनी जल्दी के विनायक अण्णा लेक्कनी बारे कसं म्हणा एक विकेट होत वच्चाना म्हणून लेक्कीला विकेट गेला आता इला मोहन पै कशाला मला फर्स्ट बॉल का बाहेर मातसा दिसतास मग आता अंपायर वच्चे मोहन पै मयूर बॅटिंग करी आता रमेश अण्णा ना मोहन पै ना स्टम्प्स सोनी हिट स्टम्प्स सोडते आता अपासायला रमेश अण्णा बॉलिंग घालतास मोहन पै ना ड्राईव्ह केला 4 विनिंग शॉट मारला मोहन पै ना अशीची टीम गोपाल कृष्ण या मॅच सेकंड टाइम सलवाला तशीची टीम श्रीनिवास त्यांनी दोन्ही 2 विन झाल्याची ऑलमोस्ट त्यांनी चॅम्पियन्स टीम्स खेळता असतात
किरण अण्णा टीम ता किरण अण्णा उगूर क्लब मारतास उगूर प्रकाश अण्णा येवका हांगा वेदिकेरी आणि एक तागेले मॅन ऑफ दी मॅच घेवका म्हणून विनंती करतास अज्जो बॉल घेऊन होता जल्ल अज्जो मॅच बड़ा मक्केल का बड़ा प्रकाश अण्णा बॉल दी चमकला चा त्या कुछ जल्ल अज्जो तुगेला मुन्ना ने 3-4 ವಂಚೆಲ್ಲ ತೈ 67 ನಂಬರ್ ಗಾಲ್ ಬಹುಂತಾಸ ಮುನ್ನ ತಾವಲ್ ತುಗುನು ಅತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜವಣ ಚಮಕಲಾಜ್ ಗೆ ನಾವು ಆಸಾಜಿ टीम कटारी वीरा टॉस विन जाऊन फील्डिंग घेतला सिद्धीरण्ण वत्तास गरकड जेवणावा कोक्क माम करू काही टीम कटारी वीरा फील्डिंग येताची दैकोर्नु पूर जनन फील्डिंग येऊ का ಟೈಮ್ ನ 10:45 ಗಂಟೆ ಹರೀಶಣ್ಣ ನೀದೆತ್ತಾಸ್ತೈ टीम वीर विठ्ठलाच्या प्लेयर्सांना बॅटिंग आयो का ऑफिशियल्स रेडी असजी रामपाय हंगायला कसे ನೀದೆತ್ತಾस काही टीम कटारी वीरांना फील्डिंग आयो का पॉल रायफल आणि रिची रिचर्डसन मध्ये रबल्याची अंपायरिंग का पॉल रायफल नॉन स्टॉप ಒಗ್ಗೆವು का काही ना प्रायजला तंक उगुरेवतनी आणि जल अजिनंतर एक मॅच अर्चिताईला क्लॅप मारायची अर्चिता का मैसूरागी काश्मीरागी तुकून आईला म्हणून कळला शर्टाने बाहेर काढायला मग डाऊट काही जेवणाने कोर नाहीला 4 खुर्ची उठते अर्चिता कटजेला आम्ही जबाबदार नाची टीम श्रीनिवासाच्या प्लेयर्सांना बॅटिंग आयो का इमिडिएट आणि एक 2 मिनिट भितर या मॅच स्टार्ट जाऊ का सक्कड 2 टीमाचे सक्कड प्लेयर्सांचा सहकार कोर का म्हणून घेत असं फील्डिंग टीम ऑलरेडी येईल असं ओपनिंग बॅट्समॅन ओके याची टॉस विन कटार वीरा फील्डिंग घेतला तै यज्ञवंतण्णाला स्ट्रॅटर्जी जेतास यज्ञवंतण्णा एक टाइम मारी डेविड बून्स प्लेयर सान नाईक मामो अष्टशी होतास आमगेल सान नाईक मामो एक नमूनो मिलिटरीचो आजी के यंग एंड एनर्जेटिक नायक मामा क्लॅप मारायची पोरे सान नायक मामा का दैकोर्नो नायक मामा आतू कळी नायक मामा तू म्हणून का मस्त असा नायकोंग टीम वीर विठ्ठला प्लेयर्सांना इमिडिएट प्ले खेळू येऊ का टीम वीर विठ्ठला भजने चमकलाच काही येतान सल वेळ जाते एक्कू जाता असा तशी हंग एकले पळचनाची हरीश अण्णा कसं म्हणून आतनी वैर कोर्नो
कसा तुका हरीश अण्णा मसल्स कॅच जायता विश करू नये हा मसल्स कॅच जायत टाईट फिट जीन्स आणि घाल सलमान खान सोयला हरीश अण्णा क्रिकेट खेळो लागी फॅशन शोक म्हणून कळला ओपनिंग आयला आमगेला मगाचा जग्गी एक टायमार आणि मारला बॉल समुद्र गेलेला असा त्याला आत्ता गोत ना आत्ता प्राइज आला स्कोर रेडी रेडी ऑल आर रेडी गौतम अण्णा एक टायमाचा स्टाइलिश प्लेयर आता स्टाईल असा खेळते बोला का स्ट्रोक प्लेयर तो स्ट्राइक आका गौतम अण्णा सुरेख बॅट चेंज करता असा ते आईला आमगेला पुरी माम हरीश अण्णाला पुरी मामू हरीश अण्णाला पुरी माम आईला मंजुनाथ गौतम अण्णा स्ट्राइक आका तशीची बॉलिंग आयला राघवंत पाय तशीची स्ट्राइक ला हरीश अण्णा उद्दंड नमस्कार घालनो फोर सोडला असा उद्दंड नमस्कार घालनो फोर घालला असा फोर वच्चन आशिल्ले पेटोवन सोडला फोर त्या फोर घे नाही मागची बशिल्ल्या व्हॉलंटियर्स 4K ओके सेकंड टाइम बॉलिंग आयला बाहेर मारला स्टेडियम आतून बाहेर मारला गौतम अण्णाना तागेले 16 वर्ष प्राय राशी खेळची ताणे फर्स्ट आईल तशी 6-4 मारची नो गौतम अण्णा हंग हांव कमेंट्रीन तू प्रशांत मामो आजी के एक नमून 18 ವರ್ಷ ಚರ್ಕಸೋ ಕಷ್ಟ ಚಂದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳ ಶೂ आणि गाल एक ट्रॅक सूट आणि गाल बळा कशी बळा आता गाड घेत बळा कशी म्हणाला बळा सांगितलं तशी करता सांगा तिन्ही वेळा बॉलिंग घालू का फर्स्ट बॉल 4 सेकंड बॉल दिला फर्स्ट टाइम बॉलिंग घालू इला चंद लेग स्पिन चंद स्ट्रोक जलारी नायक मामा कळली कसा करची म्हणून 4 गेला टीमा स्कोर 14 2 1.1 अशी खेळतास म्हणजे टीम 80 ते पावता कटारी विरातन जागृत कोर का या विषयारी लगी रबल्याची अपास बॉलिंग आला महेश अण्णा लेग स्पिन अंतु चंद बॉलिंग आला साधारण सुपर फील्डिंग जग्गी इस डिग थर्ड अंपायर दिला साधारण ब्यूटिफुल थ्रो आता पूर्जना काही दिसता असाची कसा म्हणूया बॅट दवार लागी ना म्हणून पळा का जग्गीना आउट जग्गी इज गॉन फील्डर साधवण्णा लेफ्ट हँड आणि उडालेला असा एक नंबर बिरुगाळीसे बोलायला जॉनिल केस एक वेळ उभून सकल बसला ಔಟ್ ಮಂಜಣ್ಣ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲ स्टार प्लेयर नागेश अण्णा एक टाइम मारी पूरा मैच सिंगल हँडेड विन करून दिता प्लेयर यो आमगे नागेश अण्णा अर्चित कसं की गुट्टू लयतास अर्चित गुट्टू लयतास ते बॉलिंग आलो ಇಲ್ಲ महेश अण्णा उमेश भट मामाका अपास पाया लागला नक्का तावळ एक वेळ झाला अपास नक्का म्हणून कपिल अण्णा नक्क म्हणला अर्चित गुट्टूला तिरब्बोका बॉलिंग आलो ಇಲ್ಲ महेश अण्णा बड़ा विचार पडला अंपायर नो बॉल फ्री हिट रूल्स गोतच ना बट मम नाही वाट नाही आता केल्याची बॉलिंग आलो ಇಲ್ಲ महेश अण्णा चंद नेलार बॉल चंद सडला हरीश अण्णाला मेस्सी स्टाइलर फील्डिंग मेस्सीला फुटबॉल से जाणे फील्डिंग केला काल मकडाउट केंगी अर्धे मॅट पळेल जाणे तशी मेस्सीन कशी त्या किक उडच पळ तशी
हरीश अण्णा आता बॉलिंग आला महेश अण्णा नागेश अण्णा झाडू पळेला ना बॉल वार रसीला कोयर पूरा वार रस बस आता बॉलिंग आला नागेश अण्णा का नागेश अण्णा चंद ड्राइव केला जरा ना गल्ला बली 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 खलबली जला देता सगळे टीम खलबली जल्या आणि कोण येऊची म्हणून तांका गोत ना आता कीपर सदेवण्णा हातुकळी ಸಹದೇವಣ್ಣನ ತವಳಿ ಏಕ ನಮ್ಮನು ಓವರ್ ಜಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಗಲವತ್ಲ ಗಲೇತ ಮಹೇಶಣ್ಣ आता ಇಲ್ಲ डॉक्टर मामू बॅटिंग आयला डॉक्टर माम एक टायमार लायक प्लेयर घे म्हणून डॉक्टर माम आत वयर करायची डॉक्टर माम क्लॅप मारा डॉक्टर मामाका ತಂಗೆ ಟೈಮ್ घेऊन आयला त्यांनी वीर विठ्ठलाका केळुकेदिरी उमेश भट मामू एक नंबर टेस्ट प्लेयर सगळो तीसरा म्हणून खेळतो जायचे लेकलोची सहदेवण बॉलिंग आयला चंद स्टोक हरीश अण्णान उगूर दोन्नसो फील्डिंग केला उगूर दोन्ना इडली पडत तशी आता अपास आयला सहदेवण डॉक्टर मामाका डॉक्टर माम सूपर डॉक्टर मामाला एक डिफेन्सिव स्टाइलिश प्लेयर डॉक्टर मामा गेला पळी ना ते डॉक्टर मामागा उमेश अण्णान 5 ओवर मैच म्हणलं केला की 10 ओवर म्हणलं गोत ना टेस्ट से खेळता सा सहदेवण आयला बॉलिंग आका उमेश भट मामा नापास पायाला मारला हरीश अण्णा मेस्सी रोनाल्डो मेस्सी पूरा ಒಟ್ಟು जाऊन फोर सोडला विन्नो का रोनाल्डोला आणि मेस्सील मध्ये काही गेला म्हणून गोत ना विन्नो गोलकीपर जाऊन रबला ते गोल जलते सदेवಣ್ಣ बॉलिंग आला इला उमेश भट मामू पायान खेळता तवळ दुगुनु फोर एक पायान फोर सोडला एक पायान फोर मारला कसा एक पळा स्ट्रॅटर्जी म्हणजे टीमाचे टीमा स्कोर 26 जला 2.4 बॉलाक सहदेवಣ್ಣ ಅಪಾಸ फोर उमेश भटमाम स्कोर टीमाचे 30 आणि 2 ओव्हर असा उमेश भटमामान रबल्या टीमा स्कोर 95 जाता आता सुपर बॉलिंग सुपर कीपिंग ओवर जला आता इला एक टाइमाची आमगेला कास्टेड फ्रेंड सर्कलाचे स्टार प्लेयर ज्ञानेश्वर जॉनी म्हणता का मी एक टाइमारी त्याने एक बॉल मारला असा वीर व्यंकटेश अपार्टमेंट ब्ली फ्लॅट मारला असताना त्या बॉल आजी काही मिळली शोधिता का स्टार्ट केला ते टायटॅनिक शिप्पीसे मुळा पडला तशीच बॉल केंगी मुडक्यान पडला डॉक्टर मामू आलोचन करता सो कंची टाइप बॉलर म्हणून नाक चंद करा गल्ला सहदेवण्णाನ चंद फील्डिंग केला अग्गला वाद एसता विवियन रिचर्ड्स अंपायरिंग सॉरी रिचर्डसन आता बॉलिंग आयला डॉक्टर मामाला चंद स्ट्रोक उमेश भटमाम बली खलबली जला उमेश भटमाम इज गॉन उडलारी काय चान्स अशिला मुरली मामू फोन चैन पुरा चड्डी पॅन्ट हाकदवर नाहीला कसं म्हणून गोत ना डॉक्टर मामू स्ट्राइक आका ज्ञानेश्वर बोल्ड डॉक्टर माम यांची तागेल स्टाईल तो फर्स्ट बॉल हुंगू सोडचे मागीर खावच्या सोडता तशी
डॉक्टर माम प्रॅक्टिस करता येता सर नेक्स्ट कशी खेळची म्हणून पळा का म्हणून आता ఇలా 10 ನಂಬರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜರ್ಸಿ घालनो 6 विकेट गेला सम 31 पलते अपडेट घेतास अपडेट घ्याव घेतल्याची टीव्ही स्क्रीन पडला नकाची ज्ञानेश्वर बॅट्समॅन नाव हरीश आता साधवण्णा कीपिंग सॉलिड कीपिंग करता जानीला फोर्स चढता पावनी हरीश पावनी विन्नू पावनी जॉनी पावनी कसं म्हणून गोत ना आता इला किंग इला मुरली माम सप्तमी क्रिकेटरचा किंग एक ना म्हणून सदक पण रमेश से खेळता असे एक पायारी अनेक पायार सिमेंट मारला असे चंद बॉलिंग सिक्स मुरली माम वन जा तो क्या प्राइस देता हूं क्रिस गेल गे म्हणू हा नाही महेश माम गेला शर्मा मो अहो क्रिस गेल म्हणले किला उगूर क्रिस गेल बळ उगूर येवतान क्रिस गेला नशीजी उगूर येवचा ओवर जल्ला ना तवळ ओवर जल्ला कार्तिक ना डोंट नो टेंशन प्लीज यू कीप ओनली द अंपायरिंग मागशे गवती कसे की दाटू लेता सांगा घुमसान मारता का अर्चित कसे की गुट्टू लेता अर्चिता रब्बो का अर्चिता सर तके ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಬಾಲ್ ಅರ್ಚಿತ್ಗೆ ಏರ್ ಬಂಡ್ ಗೊತ್ತಾವಡ್ಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ अर्चिता इला स्क्रीन आरी पुरा पळायची बघा आता इला विन्नो विनय आता रिव्हर्स स्वीप गेला बॉल कहीं ऐसा बैट कहीं ऐसा रिव्हर्स स्वीप की स्वीपा रिव्हर्स की कसं म्हणे कळतं आमका आता नेला तुका नाहीला स्ट्रोक अपासा या टीमान तो रोनाल्डो मेस्सी त्यांनी भरल्याची दिनेश आता इला शर्मा मन एक टाइम मारला बॉल मेळीनी आता चंद स्ट्रोक दिनेश अण्णा चंद धरला अशी सोडला रन आउट करू का विन्नो आपस बॉलिंग आयला हरीश अण्णा घाल मारला ना चान्स म्हणतासा आता आउट जाऊ चान्स असा आउट कसा एक फील्डिंग आहे दिनेश अण्णाला अंगेल टीम आणतो रोनाल्डो मेस्सी भरला म्हणून तावळदूर म्हणतासा कसं एक फील्डिंग दा दिनेश अण्णा आतवेरू कळे कसं एक फील्डिंग दा आज इथे पळे नाव आता स्क्रीन ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಚಿತು पूरे जन पळा अर्चिता का निप्पन बसला अर्चितू नारायणाला मागशी निप्पन बसला बैट्समैन महेश शर्मा मो लास्ट बॉल विन्नो का 34 रबला स्कोर विकेट आट गेला आता दिनेश अण्णा का चंद कैच हेलो एम्बापे कहते हरीश अण्णा लागी एम्बापे के कौन तुम पळीन तकाते एम्बापे के कौन म्हणून गोत ना तो आता ಈಗ ಅರ್ಚಿತಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು ವಿಘ್ನೇಶನೇ ಅರ್ಚಿತಕ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ GSB ಇಂತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮುಣೆತ್ತಕ ತೀರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶ್ಯೋ ಬರ್ತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಚಿತ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಿ ಅರ್ಚಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ GSB आमगेला जायंट तो क्रिकेट आपण पुरे जण हात उकळायची क्लॅप मारायची अर्चिता केतीरी शाबास त्यांची पाय पळाय तगल प्रदर्शन केळले जला मक्कुल्ला नकाची आवना आवत तंगतू ना आता इला संदेश अण्णा कुल्टा रादोर्नो सप्तनी जल्ला
वीर विठ्ठल सर्कल रबूनो आता तू स्टार्ट कर एक मैं राव एंड करता म्हणून एक टाइम नಮಗೆ ಟೀಮ್ ಅಸಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ವೀರ ವಿಠ್ಠಲ ಸದಾನ್ ಮಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಲಗ್ಗಿಚ್ಚಿ ಮಿಗಲ್ ನಾವು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಮಂತಾಸ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಳಚಿ ಪಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹುಡುಗ ಸತ್ತದನ आता ओपनिंग आयला दिनेश अण्णा आणि सहदेव अण्णा सुधीर अण्णा इलाची आणि आमगेला डिलिव्हरीचे अजित अण्णा इला पूर्ण जणांना क्लॅप मार्का दैकोन स्पेक्टेटर्स पूर्ण जण अजित सराका आणि सुधीर अण्णा का सुधीर अण्णा आमगेला मोगात ते दोघ जण सुधीर अण्णा आणि अजित अण्णा तुम्ही काही बस हंग बसतावा स्टार्ट झाला नागेश अण्णा बॉलिंग हाका सहदेव अण्णा गार्ड घेऊन मिडल स्टिक गार्ड घेऊन रबला कसा कटपळ का फर्स्ट बॉल डॉक्टर मामाला छंद कीपिंग आबासाईला द स्टार नागेश अण्णा चंद सहदेव अण्णाला स्ट्रोक पडलेला जलारी कसा नाही उपयोग ना 28 सेकंड बॉलिंग डॉट वाईड चंद स्ट्रोक मारला प्रशांत अण्णाला पूर्वबुन सर फर्स्ट बॉल वाईड हत्त राइट बॉल 3 balls 1 run सॉरी फॉर द मिस्टेक आता इला दिनेश अण्णा आमगेला रिवर्स स्वीप जडचे पुरे स्पेशलिस्ट बैसून जडता पळया तुमच्या जलात ते आमगेला ओल्ड प्लेयर आयला विवेक पै पुकणाला उलयता असा चेड्डी घालून आयला आता गार्ड चेंज जाला ओवर द विकेट आयला नागेश अण्णा दिनेश अण्णा का 4th टाइम पळा कशी मला जडत म्हणून फील्डिंग सूपर डॉक्टर मामो प्रैक्टिस करता डेली आता वेंकटेश आयला आमगेला मक्षी असा वेंकटेश मक्ष आयला आमगेला ओड वॉलंटियर तो टीम एक का रबला बॉल जाला 5 चंद बॉलिंग कसा स्टार्टरची म्हणून ना आता रिवर्स केला ना जलारी फास्ट एक धावून 1 रन कंप्लीट केला असा ओव्हर गेला असा आता आयला जगಣ್ಣ चंद बॉलिंग चंद शॉट दोघ जणांना मध्ये तो बिरू गाळी शैला गौतमಣ್ಣ कसं म्हणून केलं बिरू गाळी शैला शॉट ते रबीला स्पेक्टेटर समित हल्ल्याचे एक वेळा ऊ आरसायला बॉल आता अनेक शॉट मार का काही आता सरंजला 23 बॉल 29 रन जाऊ का आता चंद स्टॉक ना ना थर्ड अंपायर is on the screen obstructing the field म्हणता जका इंग्लिश अरे कसं म्हणता जी आपस म्हणा obstructing the field सा बॉल काही ना त्या पुरा पळयतांगा तुम्ही सांगू नका जी पुरा पळयताची त्याची एक्सपर्ट त्याची सर्जन पुरा अंगा असाची आमगेला माजी क्रिकेटर विवेक पै आयला फुकणाल मक्षरबला विवेक पै माजी
तर एक नमून 50 टेस्ट 100 वन डे एक 3 दीस एकलो रब्बील असा डिसियन जायनी मुरली मॅम क्लॅप मारू ना डिसियन जायनी डिग 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 जतास पळत ऐकतास वा सुधीर ना तू पैसा नेक्स्ट मॅच तुका तू आलोचन करू नका गुरु बसला ते गुरु हात वैर केळे गुरु गुरु कोण म्हणून कोळकर मारा तो दीक्षित बॉल मला वत्तानाची बॅटा लागून असच्या पुरा जलारी डिसिजन अंपायर सांगता असते आउट इथे मला त्या फ्लोईंग कशी कळत मला बॅक साइड असल्यावर मात्र एदूर तुकून दिला त्या बॅट दिला म्हणून लागत्या एदूर तुकून दिला बॅट दिला मागशी तुकून कसं दिला कळलं आपस यायला जग्गी दिनेश अण्णा का दिनेश अण्णा आपस तशी गेला जॉनी धावून तासा 1 रन कंप्लीट झाला लेग बाईस म्हणून डिसिजन दिला ज्ञानेश्वर आयला आता कास्टेड फ्रंट सर्कलाच्या ಹೊಡಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ आता ಶಾ चंद स्ट्रोक आ म्हणला ताना तरपली म्हणजे नेक्स्ट ओव्हर विन जाऊ चान्स असा ज्ञानेश्वर म्हणतात का मी अपासा बॉलिंग आयला जगಣ್ಣ स्कोर झाला 11 पंचा बॉल घालू का 20 बॉल 24 जाऊ का ओढ काही विषय नाही एलबी ना नाही दिला अंपायर ग्यारंटी आदू कळतशिल एलबी नतील तिकून ज्ञानेश्वर सर्वाइव्स लास्ट बॉल 19 बॉल 24 रन जाऊ का टीम स्कोर झाला 11 आता चंद स्टॉक जलारी डॉक्टर मामाना कसाने कोर जायना पायांदरची फिल्डर कटारी विरास मात्रचे तुम्हाला नाची सुधीरಣ್ಣ दिनेश अण्णाला अभिमानी संघ असाची दिनेश अण्णाला फॅन संघ असाची थ्रू आउट द स्टेडियम क्लॅप मारा दिनेश अण्णाला कधी रे पण कितले फॅन्स असा पडा दिनेश अण्णा तू आज 50 मारणे हो का 25 पुणे मारणे हो दिनेश अण्णा प्लीज सुधीर अण्णा जाळ बघता असा लगे बैसून आ मात मारची 25 म्हणून आता उमेश अण्णा बॉलिंग का दिनेश अण्णा चंद मारला गौतम म्हणाल चंद फिल्डिंग जॉनी 1 रन पावनु 2 रन आयला जॉनी तू 14 वर्ष असच्या पुरा दिनेश अण्णा 40 गेला 54 पडा क्लॅप मारायची दिनेश अण्णा 54 प्लस ज्ञानेश्वर टू स्ट्रोक चंद बैटिंग इतना मला रे दिनेश अण्णा का बॅटाक बॉल लागता असा तस्तिकून सिंगल काढून दिता असा ज्ञानेश्वर त्यांची एक स्ट्रॅटर्जी उमेश अण्णा बॉलिंग आयला रिव्हर्स स्वीप फॉर बंडर मामाला ने जग्गीला जंगे अडकेतून बॉल जमकला चंद स्ट्रोक मारला रिव्हर्स स्वीप हरीश अण्णा वारा रसा वाइट बॉल आता मैच कंप्लीट कटारी वीर असा कंट्रोलर असा कसानेजी अधिक प्रसंग कोरका मुन्ना 15 बॉल 13 जाऊ का दिनेश अण्णा वापस फोर दिनेश अण्णाला चंद बैटिंग दिनेश अण्णा खेळता असा 15 रनर खेळता असा दिनेश अण्णा
आता स्टेडियमाच्या बाहेर मारनो 15 रन आउट जाला वाट नाही दिनेश अण्णा तू टीमा खातीर रन आण देवन विन घेवच पोझिशन आसा 13 बॉलाक 13 ಬೌಲಾಕ 9 ರನ್ನ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲ ವಿನ್ನು ಶಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿನ್ನು शर्मा मो आत्माक्ष घेऊन रबला या जल्लीशे दिसता म्हणून ना जायनी आणि के बार बॉल गलोस विन्नो महेश भट मामा विन्नो का चंद्रस्ट्रा का तशी जी जग्गेला थ्रो गेला पट्टा का कसा झालं म्हणून गत ना ते अंग कमेंटेटर मागची एक आडशीला ओव्हर जाऊन बार बॉला का 8 रन जाऊ का खाली 2 4 जाऊ का नारायण अर्चिताला उलयता आसा नारायण बेंगलोर तुका आयला ह्या मॅचा खातीर स्क्रीनारी नारायण शेणे आसा बेंगलोर तुका आयला मॅच पळोवच्या क्लब माराजी दय कोर बेंगलोर तुका 5000 खर्च नाहीला नारायण शेणाई आता चंद बॉलिंग विन्नूला डिफेन्सिव स्ट्रोक बंडार मामा का पिची 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 बॉल मेळला मागची विग्गू प्रॅक्टिस करता असा गवती लोटो गवती कितले खेळला दिल पावना 2 मॅन ऑफ द मॅच मेळले पावना मारा कितले खेळता कर्म ज्ञानेश्वरा का वाईड तुम्ही देऊत नाही अंपायरान देऊच्या 7 रन जाऊ का कसं अधिक प्रसंग कोर का मुन्ना अशी मारला विन जाऊ चान्स असा 10 बॉला 7 जाऊ का हरिशंड बॉलिंग का ज्ञानेश्वरानं मरलाल पेट समुद्र गेला बॉला टायटॅनिक शिपा वैर असा नेक्स्ट मैच टीम श्रीनिवास टीम वीरविठ्ठल बैटिंग का टीम वीरविठ्ठलांना मॅच झाला तशी कॅप्टनानं रजिस्ट्रेशन डेस्क येऊन टीम रजिस्टर करका इमिडिएट टॉस जाता आता इला हरिशंड नापास बॉलिंग का 9 बॉला 7 रन जाऊ का कसं जात म्हणून बोला का आईला पिची 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 4 हरिशंड वार रसा हरिशंड एक 4 निमित्त विंजला विंगड कसले नाही आराम से कही राम से डायरेक्टर हॉरर फिल्म आज राम से चंद्रस्ट्रोक जलारी फॉर कटारी विरास फर्स्ट विक्ट्री अँडी 3rd आणि 4th मॅच विन झालेला मॅन ऑफ द मॅच अनाउन्स कर का मॅन ऑफ द मॅच घेवचे का दिवच्या काम गेलो नारायण शेणे टीम वीरविठ्ठला कॅप्टन आणि टॉस येऊ का दय करून योग्य घ्यायची योग्य गेला लायक तुमका नीद काढू मिळता आमक नाही अज्जो तावडतुकून 108 ಸುತ್ತು ಕಳ್ಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಚೆ एक नंबर दुर्गा नमस्कार से तावडतून सुत्त काढता असा नव मुना तावडतून सुत्त काढता असा मागशी गौतीन केळचिरबो का नेला मॅन ऑफ द मॅच दिना तू कमी टीम श्रीनिवास वर्सेस टीम वीरविठ्ठलाचे एक प्लेयर आणि इमिडिएट अंग येऊ का कॅप्टन अंग येऊ का टीम रजिस्टर कर का मस्त वेळ कोर कांची ऑफिशियल्स वेट करता सजी ज्ञानेश्वर कामत मॅन ऑफ द मॅच तिन्ही मॅच कोण मॅन ऑफ द मॅच तावळची टीम प्रकाश पाई तावळ घेतला की म्हणता प्रकाश पाई हा प्रकाश सर टीम वीरविठ्ठला कॅप्टन येतं सर इमिडिएट टॉस जाऊन नेक्स्ट मॅच स्टार्ट कर का त्यानंतर आईचे लास्ट मॅच टीम गोपाल कृष्णा वर्सेस टीम कटारी वीर आता मॅन ऑफ द मॅच ज्ञानेश्वर तावळची मॅच आहे प्रकाश मामो
वाजिरात नगरा चरके ताई कसे की उल्लन बसल्याची प्रकाश मामा आणि जॉनी मामू दोघांनी वैरेव का वाजिरात नगरा चरके पुरा ताई उल्लन बसल्याची पाय कशी केलची म्हणून आता नेक्स्ट कमेंटेटर चेंज आवनो अर्चित शिवानंद सेणೈ विक्किल फोन आयला मका विक्किल फोन आयला कसं म्हणून ಗೊತ್ತಾ पैरी उल्लाला अंतू सूपर केला आमगेला दुर्गा लॅबोरेटरीज देन जेवण आशिल्लो बाला आज पाय सोडून बसला पायची मॅच खातीर पुरे जण क्लॅप मारका पायची मॅच स्टार प्लेयर जावका म्हणून तांकां पुरे जण आश घे तागेले फॅन फॉलोअर्स मस्त आसाची आता कमेंट्री चेंज जावन जगमम कमेंट्री येवका म्हणून विनंती तू काँग्रेस वा आत वेर कळला टॉस चालू आताच्या त्यांनी सूर्यकलकला आम्ही टॉस विन जाल्याची म्हणून जायनी टॉस जायनी मुरली मग वैरसते एका बजाना बासरलाची वीर विठ्ठल बाला पाय सोडून बसला विकी लगेची ते मागची टीम मॅनेजर निखिल अण्णासा टीम श्रीनिवास टॉस विन जाऊन फील्डिंग घेतला पळा कशी म्हणाला टीम श्रीनिवासानं इमिडिएट ग्राउंड येऊ का यांच्यात तर अनेक मॅच असं सगळा सहकार जाऊ का डेडलीचे मॅनेजर अन्वित कार्तिक निप्पन रोबला मग पळवनो कमेंटेटर चेंज जाता ग्राउंड सोडनाकाची बाला चिल्ला हात घालता असा पुरजन पळयाची ऑन द स्क्रीन्स बाला गणेश पॅन्थर्साचे कोच अक्षय काही असलारी वांग येऊच्या नजी म्हणून विनंती करताची टीम श्रीनिवासा आणि मस्त वेळ कोर्नकांची दय कोर्नू तुम्ही फिल्डिंग येऊ का तशीची टीम वीर विठ्ठलाचे ओपनिंग बॅट्समॅन येऊ का ऑफिशियल्स वेट करता सच आईचे पंचा मॅच हे सीनियर्स आले यांच्यात तरी लास्ट मॅच असं टीम गोपाल कृष्ण वर्सेस टीम कटारी वीरा या फर्स्ट इनिंग्स जाताना ते करून दोन्ही टीमाच्या आयकॉन्स अंग घेऊन तुमगे टीम रजिस्टर करा इमिडिएट टॉस जाता इनिंग्स ब्रेक आणतो
टीम गोपाल कृष्ण आणि टीम कटारी विरा जाल तितलो घेऊन तुमगेल टीम रजिस्टर करा. हेलो 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 धन्यवाद. इस वक्त अनंत और पहली गेंद को इस वक्त खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर 4 रनों के लिए. सो विद दैट बाउंड्री द रन से गॉट ओपन फॉर देम. इट्स 4 विदाउट लॉस. और इस बीच गौतम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद मोड़ दिया. इस वक्त स्क्वायर लेग पर रन से यहाँ पर नहीं मिलेगा. सो 4 ऑन द बोर्ड एंड फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाज एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को खेला. इस वक्त रन से यहाँ पर नहीं मिलेंगे. सो द स्कोर स्टेज एट 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर वीर विट्ठल. नाउ द नेक्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम द बॉलर प्रकाश पई. लेग स्टंप पर आती हुई गेंद वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर. और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को मोड़ना चाहा और स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद पहुंचे. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 run added to the total, and with that single run the scoreboard moving up to 6 on the board in the over number first in progress. This is the match number 11 of this prestigious cricket tournament. SVT Trophy 2026 is now progressing here. Next one, driven down to extra cover but straight to fielder. Runs is beach nahi milenge. And a good piece of bowling performance continuing here from the bowler Prakash Pai. और अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट ड्रिवन and finds the gap as well. One more boundary and the scoreboard is now moving up to double figures now. That means on 10 without loss after the completion of first over for Veera Vittal. 10 without loss after first over. Second over starts in the innings. First ball. A ball him. Good one. Absolutely terrific one from Ajju. और इस बार गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा था चूंकि और गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई स्टंप से बिखेरते हुए और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है. That is an absolutely turning delivery from Ajju and he just got rid of the batsman. And first wicket fallen. It's 10 for 1. Next ball from Manju. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए अज्जू to the new batsman Manju. Just wanted to sweep that one, not succeeded. Stuck to his leg and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. और अज्जू इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अजय भंडारी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए 10 for the loss of 1 wicket in the second over. Lofted and fell short of a fielder. Extra cover, gone through for a quick single and get it comfortably at last. And in fact, it's a boundary declared by umpire. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर. 14 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. The match is now progressing here between team Srinivasa versus team Veera Vittala. और इस बीच गेंदबाज ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन यहाँ पर पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं.
throw misses and the batsman crossed over for the single. It's 15 for 1 in the open number, second in progress. So next one from the bowler, and Aju is now going to bowl the next delivery. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो एक रन इस वक्त मिलेंगे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रन पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. अज्जू इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. नेक्स्ट वन फ्रॉम अज्जू, राइट आर्म ओवर द विकेट, बाउल्स, ड्राइव्स एंड इनटू द गैप एज वेल फॉर अ बाउंड्री. 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एंड दिस द ओवर नंबर सेकंड हैज बीन केम टू एन एंड. पहले ओवर में 10 रन बने, दूसरे ओवर में भी 10 रन बने और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन बन चुके हैं. 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs for team Veera Vittal. Now in overall calculation, it's 3 overs remaining in their innings. मुन्ना गेंदबाजी शुरू करते हैं. फर्स्ट बॉल और साथ ही ऑफ स्टंप and no signal came from the umpire. Scoreboard stays at 20 for the loss of 1 wicket. और गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Just wanted to work it away on the onside. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. 20 for the loss, 21 in fact, for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. This is the match number 11 of this prestigious cricket tournament. SVT Trophy 2026 is now progressing here. मुन्ना अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. This time not connected that one properly, and has got a single for that stroke. With that single run, the scoreboard moving up to 22 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Munna अगली गेंद लेकर तैयार. Off the toes, just wanted to play that one. This could be in trouble and directly hit, but stumps not disturbed. Or ballebaz Bill's not disturbed. In fact, the scoreboard is now moving up to 23 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Munna अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Driven that one, gone through for a quick single. This could be in trouble, and this time he's gone. He's gone this time. और रनआउट के रूप में इस वक्त ये विकेट गिर चुका है. जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था. टीम कटारे विरोधातून सहदेव भटमामान हांगा टीम रजिस्टर करू येऊ का? He's gone, in fact. He's backing to pavilion in the face of run out. So 23 for the loss of 2 wicket. 2.5 overs had been bowled. Next one from the bowler, Munna. Off the toes, dropped, and it's crossed over the fence for a boundary. Chance for the mid-wicket feeder, but he dropped that one, and it's crossed over the fence for a boundary. 27 for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs. 3 gone, 27 for 2 for team Veera Vittal. Prashant is now going to face the first delivery in this over. मोहन पई गेंदबाजी शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. Played that one, next cover and gone through for a quick single and get it completely. 28 for the loss of 2 wicket at the start of the 4th over. Mohan Pai. Again, here he comes. Oh, just wanted to sweep that one, not succeeded.
गेंद पैरों पर इस वक्त टकराई और आखिरकार विकेट कीपर अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करते हुए रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. It's 28 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. मोहन पाई अगली गेंद लेकर तैयार. स्वीप किया इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में. Just a single he got. And with that single run, the scoreboard moving up to 29 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. The equal battle is now continuing here. और मोहन पई अगली गेंद लेकर तैयार. प्रशांत is now going to face. एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट फील्डर इस वक्त बदल दिए गए हैं और गेंदबाज मोहन तैयार. रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर. एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. जोखिम भरा रन दोनों बल्लेबाज यशस्वीतम पूर्ण करते हुए 30 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. Mohan Pai, the next one from the bowler comes. Swept and finds the gap as well. One more boundary. With that boundary, the scoreboard moving up to 34 for the loss of 2 wickets now for the over number 4 in progress. Still a ball left in this over. Again the अभी भी बाकी इस ओवर में और मोहन पाई अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ round the wicket. Driven and straight to field. A chance of a run out this time, and this time he's gone. He fell just short out of the crease. बेहतर फील्डिंग वहां पर अज्जू जो फील्ड आते हैं मिड विकेट पर. गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट करते हुए गेंद को थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और विकेट यहां पर गिर चुका है. 34 for 3. ओवर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड. So the bowler brought into the attack सुधीर भंडारी और पहली गेंद लेकर तैयार इस वक्त. लास्ट ओवर स्टार्ट्स इन टीम वीर विठल इनिंग्स. Just missing outside the leg stump. Right delivery. There is no possibility of any run. Scoreboard stays at 34 for the loss of 3 wicket और गेंदबाज अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त. रन आउट का खतरा लेकिन अंतिम क्षण पर गेंदबाज यहाँ पर इस मौके को गवाते हुए single run added to the total. It's 35 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. Still in overall calculation it's going to be 4 balls remaining in their innings और गेंदबाज सुधीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. Next one and not connected that one properly, but he got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 36 for the loss of 3 wickets in the over number 5 and a last in progress in their innings. 3 balls left. सुधीर अगली गेंद लेकर तैयार. उमेश भट्ट सामना करते हुए. बेहतर fantastic delivery, much straighter line, and the ball went into the hands of wicketkeeper and there is no possibility of any run. Gopal Krishna icon Ramesh Kamath. 2 balls left. Umesh Ramesh Bhatt Kamath toss hai ukanga. turns it away, finds the gap as well. Ramesh Fantastically struck. 40 now. 40 for the ಟೀಮ್ loss of 3 ಗೋಪಾಲ್ wicket. ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೂ ರಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆ ಯೋಕ ಟಾಸಾಕ. Last ball remaining. Sudhir driven into the hands of bowler and run out happened at the non-striker end. So that's it. The innings is up for team Veera Vittal. They finished with 40 for the loss of 4 wicket in the stipulated 5 overs. And now the target for team Srinivasa is 41. They have to score for victory. Exactly 8.20 runs per over. The required run rate for them. In 5 overs they have to score exactly 40 runs. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them 30 balls, 40 runs required. And their inning starts now within just a short while. और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब टीम श्रीनिवासा की पारी की शुरुआत होगी. धन्यवाद. थैंक यू. అయితే లాస్ట్ మ్యాచ్ టీం కటారి వీర టాస్ విన్ जाऊन फील्डिंग घेतला सर.
टीम गोपाल कृष्णाचे सक्कड प्लेयर डग आउट टू 2 लागी येवका याची हे मॅच जल्द तशें तुमकां मॅच सुरू जाता खंयचे ब्रेक ना तुमगेले टीम आयकॉन प्लेयर टीम मेंबर्स सोदीत आसा जाल्यार तोगी टीम मेंबर्स डग आउट 2 येया वेणु मामान ಒಗ್ಗಿ ಡಗ್ ಔಟ್ 2 ಲಾಗಿ ಏವಕ 1-2 So first ball and first run for the team and Srinivas open their innings, open their account with the single and 41 is the target, 40 needed from 29 deliveries. Here comes Nagesh, left arm balls to this time Eknath swept the ball, but good piece of wicket keeping there by Santosh, Dr. Santosh, and one more single added total. Both the batters off the mark with the single left and right combination. Sudhir and Eknath. Sudhir in the first match he got man of the match for his all-round performance. Here comes the next one, driven nicely into the mid-off region. Good looking stroke from Sudhir. So both the batters are dealing with the singles in this first over of Nagesh. 3 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Eknath, the very useful left-hand batter, and Kapil just wanted to change the fields at the square leg fielder coming a little bit finer, the mid-wicket and long on. This time Eknath wanted to go for the sweep shot and didn't got that much of proper connection, but he got a single for that. With that single scored moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Abaran Jewelers presents his SVT Trophy 2026, which is proudly presented by SVT Volunteers Association. One more single, so both the batters are so far not really wasting the deliveries, converting each and deliveries as a scoring one. Picked up for 4 runs in 4 deliveries. The 5 on the board without loss of any 5 in 5 deliveries. This time first dot delivery of this over from Nagesh. After completion of over number first, it's 5 without loss of any wicket. Team Srinivas has got a steady start here. It's 5 without loss of any wicket. 36 needed now from 24 deliveries, and wait and see how well. 8 runs per over is the required run rate. 8 runs per over. 41 is the target, and 36 needed from 24. 8 runs per over the required run rate. The discussion is going on here to who to bowl the second over, and they are at last calling Umesh to bowl the second over. The time is exactly 11 past 45 in the late night, but still we can see that good number of crowd enjoying the game of cricket. And today is the first day of cricket tournament. Tomorrow we're going to start the second day in the same time at evening, and Saturday will be the final day of this cricket tournament. Altogether 3 days of the festival of cricket here in this Kendra High School cricket ground of the prestigious SVT Trophy 2026. The bowler brought into attack, Umesh, left-arm bowler. Let's start with the short pitch delivery, and I missed it completely. Sudhir, absolutely very short and very slow indeed. All the time in the world for Sudhir to get that cover drive, and he missed it completely. No run scored. This time drives. This time he gets a gap, and again lot of time for the batter to get that slow delivery from Mahesh. And he picked up a boundary for that. With that boundary scope, and moves on to 9 on the board without loss of any wicket. Nagesh wanted one more extra fielder in that cover region, and maybe that I think is a Nagesh wanted one fielder in that. This is not a bad option to get the one fielder in that, because the bowler bringing the ball from outside the line of off stump, so not easy for the batter to play the stroke on the onside region. So get one extra protection in that cover point region. Will going to save the boundary. This time again the fielder is there in the deep, and no run scored. So strategy which is worked out, and Nagesh kept one extra fielder in the extra cover, so that they managed to save the boundary. It's 9 without loss of any wicket. This time down the leg side, wide call by umpire. One more extra
Ball is just missing the direction with the turn. And Skobert moves on to double figure 10 on the board without loss of any wicket. Second over in progress. Lovely shot. Beautifully played it down to square leg region for 4 runs. This time I think Mahesh even keeps the fielder in that offside region, and then he bowled outside the line of leg stump. So very important for the bowler, the need to bowl as per your field. One fielder has been, extra fielder is given protection in the offside region, and the bowler have to target that line, which is maybe, I think, good enough to bowl outside the line of off. Now again, not a good, lovely stop. Very good stop there with the fielder Sudhir, and the wait and see what could be decision from the third umpire. Of course, the square leg umpire saying it's a boundary. He crossed the line. Just have a look at it in the replay. (18) on the board. This time again, one more lovely improvisation. Again, the batter is waiting for the turn of the ball. Clever cricket there from Sudhir. After seeing that one fielder is added in the extra cover region, he just targeting that line which is outside the line of leg stump. He played it very nicely in the final leg. 22 without loss of any wicket. 19 needed now from 18 balls for team Srinivas. They're looking in a commanding position now. Just number 21, I think Prashant, bowler brought into attack. Starts with the no ball, where and with that no ball, Skobert moves on to 23. It's a boundary as well. 4 plus 1, yes, 1 plus 4, no ball plus 4, 5 runs added to total. 27 on the board. Free hit delivery. Mr. Meknath finds a gap nicely into the square leg for 4. So it was absolutely slow and short pitch delivery. Eknath quite nicely swept the ball down to square leg for 4. Just have a look at it in the replay. Easily done. One more wide delivery and one more extra. With that extra, Skobert moves on to 32 on the board. 9 needed for the victory. Lovely shot. No need to run for that. Fantastic stroke there from Eknath. Very slow deliveries and very difficult for the bowlers to survive. Swept it very fine, and scores are level. Scores are leveled. 1 run required for the victory, and Srinivas are absolutely will go to win this match quite comprehensively. 1 run needed, and wide outside the line of off stump, and reaching for the delivery. So need to wait for another delivery to get the winning run here for Srinivas. Dominated performance. That's it, winning stroke. They finished the match in a style with a boundary. Congratulations for team Srinivas for winning this match. And we are into the match. आणि लास्ट ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾವಚಾಸ ಈಗ ನಡೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So man of the match once again goes to Sudhir Bandari. Once again is man of the match for Rivas. Wonderful performance. I request Sudhir Bandari to collect your man of the match award for all-round performance. Scored valuable runs, unbeaten 19 and he bowled very good overs. वरुण शणेन स्टेज आर येवका मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी दिवचाक सुधीर भंडार मामान ट्रॉफी कलेक्ट करू येवका. So team Gopalakrishna versus team Qatari Veeras, the final match of the day number 1, the day night of this cricket tournament. Winning the toss, captain of Qatari Veeras are elected to field first, so that opening batters came into bat for Gopalakrishna. So meantime, change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. वरुण शणेन स्टेजाला घेवका दलतीतलो गे
धन्यवाद सतीश। तो इस वक्त the last match of the day one of this prestigious cricket tournament SVT Trophy 2026 is now going to start। और जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम मैच the last match starts team Gopala Krishna will takes over team Katari Veera in the final match of tonight in fact final match of tonight। और टीम गोपाला कृष्णा जो कि पहले बल्लेबाज यहाँ पर करता बाद ओपनिंग ओपनर सामना कम्स आउट टू द मिडल। रमेश कामत एंड गुरुदत्त द ओपनर्स। फर्स्ट बॉल इस बार ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक और यहाँ पर मिसफील्ड, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। गुड स्टार्ट फॉर द बॉलर सहदेव भट्ट और रमेश मधुकर नायकानं स्टेजला घेऊ का? मधुकर नायक swept well down to a square leg, can't got any run. Two good deliveries bowled by the bowler Sahadev, but in this sober and good start for him in the bowling department। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए swings and this time he finds the gap as well for a boundary। Fantastic struck in from the bat of Ramesh Kamath। full toss गेंद को ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था चौके के लिए। 4 without loss, runs account begin for team Gopala Krishna। It's 4 without loss और गेंदबाज Sahadev steering it away fine, this time he finds the gap and it's crossed over the fence, delicately played by the batsman Ramesh Kamath in this delivery, just opening the pace of the blade at the last moment, steering it away down to third man for 4। तो चौका इस वक्त लग चुका है, बेहतर स्ट्रोक था इस वक्त रमेश कामत का और चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर। 8 on the board to lose any wicket और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार। swings and this time he finds the gap, one more boundary। तो 2 लगातार डॉट गेंदें फेंकने के बाद 3 चौके लगातार यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, प्रदान कर चुके हैं इस वक्त गेंदबाज सहदेव भट्ट। इस ओवर में अंतिम बार, लास्ट टाइम इन दिस ओवर, हियर ही कम्स। Left arm round the wicket, here he bowls off cutter, perfect, sensible, absolutely sensible from the batsman Ramesh Kamath। हल्के से गेंद को टैप कर दिया था इस वक्त, पुश कर दिया था कवर पॉइंट पर 1 रन के लिए, ये जानते हुए कि फील्डर पीछे की ओर तैनात हैं। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, pretty good start for team Gopala Krishna। It's 13 without loss after first over। This is the 12th and the last match of the day one of this prestigious cricket tournament SVT Trophy 2026 is now progressing here। GSB Volunteers Premier League Season 4, which is proudly organized by SVT Volunteers Association, Car Street, Mangalore। Official sponsors Abharan Jewelers। और जहां तक सवाल है नई ओवर की पहली गेंद इस बार चिप किया एंड इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर एट कवर पॉइंट। सॉफ्ट डिसमिसल फॉर रमेश कामत and cover point fielder finally made no mistake। First wicket gone, Ramesh Kamath departs। It's 13 for 1। यज्ञावत आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, यज्ञावत आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए शिवानंद the new batsman is now comes out to the middle as a number 3 batsman for team Gopala Krishna। और गेंदबाज राघवेंद्र इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ कर चुके हैं। ओवर की पहली गेंद चिप्ड अवे मिड विकेट, कांट गॉट एनी रन और गेंद के साथ इस वक्त फील्डर दौड़कर आ गए थे। शिवानंद और राघवेंद्र दोनों एक वक्त के वीवी क्रिकेटर्स के बेहतरीन खिलाड़ियों में जाने जाते थे। कई साल उन्होंने वीवी क्रिकेटर्स, वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया है शिवानंद और राघवेंद्र। और इस बार गैप पर चुनते हुए गेंद को खेल दिया शिवानंद ने चौके के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर। 17 for 1 इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और राघवेंद्र गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप and the ball went into the hands of wicket keeper। The scoreboard stays at 17 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। राघवेंद्र फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए and this time is gone, chipped it away, not controlled in that stroke and he lost his wicket। Shivanand departs
और इस बार स्ट्रोक को खेला था जरूर, लेकिन अपिश उछाल कर रहा है, गेंद को जमीन पर नहीं रख पाया। और देखिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है गेंद इस वक्त सीमा रेखा के बाहर हो चुके हैं, फुल टॉस। पिछले मैच में भी इसी तरीके के स्ट्रोक खेलते हुए शिवानंदा ने अपना विकेट दिया था और 17 रनों पर दूसरा विकेट यहाँ पर खो चुका है। Batsman, new batsman, he now comes out to the middle. Number 4 batsman Raghavendra chipped it away and fantastically fielded, gone through for a quick single and get it comfortably. Oh, this could be in trouble. No, in fact, it's back up by the other fielder. 2 overs completed. 2 overs 17 for 2 for team Gopala Krishna against team Qatari. We run the match number 12 of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026. Third over starts. Johnny starts a fresh proceedings from the commentator box end. Or Gurudatta. Oh, bowled out. Just wanted to push that one. Sudhakar, the batsman, dismissed. This time he just wanted to push that one. और गेंद अंतिम अक्षर में थोड़ी सी उछाल लेते हुए बल्ले और पैर के बीच अंतर और उस गैप पर, उस अंतर पर गेंद चीरती हुई सीधे मिडल और ऑफ स्टंप पर टकराते हुए तीनों स्टंप्स बिखर कर गिरते हुए बेहतरीन गेंदबाज के। और जॉनी इस वक्त एक बेहतर गेंद के जरिए सुधाकर का विकेट प्राप्त कर चुके और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका। सेकंड, इनफैक्ट इट्स अ थर्ड विकेट फॉलोन। इट्स 21 for 3. तो गेंदबाज जॉनी अगली गेंद लेकर तैयार, ऑफ सबसे बाहर की ओर निकलते हुए गेंद, वाइट का इशारा। With that white run, the scoreboard moving up to 22 on the board, following 3 wicket। और गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ऑफ सबसे बाहर और गेंद को फील्ड कर लिया गया विकेट कीपर सहदेव द्वारा। हालांकि विकेट कीपर काफी पीछे खड़े हुए सहदेव, लेकिन गेंद को रोकने में सफल सीमा रेखा के अंदर। और इस बीच गेंदबाज बॉल्ड आउट। Fantastic off-cutter delivery from Johnny, and he just got rid of the batsman. His departs belts disturbed. One more wicket fallen. और देखिए एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है बेहतर गेंद थी, परफेक्ट ऑफ-कटर गेंद और बल्ले का अंदरूनी किनारा इनसाइड एज टकराने के बाद गेंद टकरा इस वक्त मिड और लेग स्टंप पर। गिल्लियां बेल्ट्स डिस्टर्ब होते हुए 22 for 4. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। 15 balls already bowled in their innings. 15 have to come. 15 गेंदे फेंके जा चुके हैं उनके पारी में, 15 गेंदे और फेंके जाने बाकी। और देखते इन बचे हुए 15 गेंदों में टीम गोपाला कृष्णा के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Ganesh Bhatt, the new man, is now comes out to the middle. Fantastic delivery from the bowler. ज्ञानेश्वर कामत, बेहतर गेंद इस वक्त। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 123 for the loss of 4 wicket. This is turning out to be a fantastic over in team Qatari Vira's point of view. इस बार ऑन साइड पर मोड़ा खूबसूरती के साथ into the gap for a boundary. 27. Still a ball left in this over. 1 ball left. और इस ओवर में अंतिम बार ज्ञानेश्वर भट्ट, ज्ञानेश्वर का मत कहना पड़ेगा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। Chipped it away. Extra cover, better fielding, fantastic fielding this time. It's just a single he got, single to end the over. And now it's 28 for 4 after completion of 3 overs. So bowler starts of fresh proceedings. विनय और इस बीच सुधीर फर्स्ट बॉल एंड दिस टाइम जस्ट हिट दैट वन। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंद को जिस तरीके से उन्होंने मारा था, गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर फुल टॉस ली और विकेट यहां पर गिर चुका। देखिए यहां पर एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है फुल टॉस गेंद को सीमा रेखा से बाहर
मारने में सफल। नए बल्लेबाज वेनु, new batsman is now comes out to the middle. Venu wearing a number 66 jersey is now comes out to the middle. और विनय गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ऑन साइड पर मोड़ा, स्क्वायर लेग पर रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट स्ट्राइकर एंड पर गिरता हुआ और बल्लेबाज दौड़ आए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा और आखिरकार आसान सा रनआउट स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ। वन विकेट फॉलन। इट्स 28 for 6। One more batsman, number 8 batsman is now comes out to the middle wearing number 19 jersey for team Gopala Krishna और विनय गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। फ्लाइटेड और गेंद ऑन साइड पर मोड़ने में चूके गेंद पैरों पर टकराई और स्टंप से कुछ दूरी पर गुजरते हुए ऑफ स्टंप से बाहर। ड्रिवन down to mid on, gone through for a quick single and get it comfortably. Good running between the wicket between these two batsmen in this delivery. Single run added. It's 29 for the loss of 6 wicket. Vinay swept it away and collected by the fielder. Can't got any run and he's backing to his crease very safely. दर्शक इस वक्त तालियों के साथ तालियां इस वक्त बजाते हुए और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। इस बार प्लम इन फ्रंट होता लेकिन वो विकेट इस मैच में इस श्रृंखला में नहीं है तो इस वजह से बल्लेबाज बच चुके। 4 overs completed, 29 for 6 and now just 1 to go in their innings. महेश को गेंदबाजी इस वक्त दिया गया। शायद उनके समर्थक सपोर्टर्स ने इस वक्त मांग की कि गेंदबाजी महेश को दिया जाए। काफी शोर और शराबा इस वक्त वहां पर सुनाई दिया दर्शकों के बीच, प्रेक्षकों के बीच और महेश को इस वक्त गेंदबाजी सौंपी गई है। Left it and finds the gap as well. Fantastic struck. 33 on the board, 6 wickets down. Now just 5 balls left in overall calculation in their innings. और देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और महेश ड्राइव किया मिड ऑन पर रन के लिए दौड़ पड़े एंड ही मिसेस। जोखिम भरा रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए निरंजन और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 34 for 6। महेश गुड वन गॉड इज आउटसाइड एज। विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची चंद टिप्पों बाद आफ्टर कपल ऑफ बाउंसेस रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। फिर से एक बार महेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। This time driven down to mid on, gone to for a this time misunderstanding and misfielding also well. Misfielding also as well and because of that the batsman crossed over for the single very safely in the end. 35 for 6, 2 balls left. महेश निरंजन के लिए अगली गेंद दाहिने हाथों पर द विकेट। गुड वन, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट स्ट्रेट अ लाइन और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके डॉट गेंद। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। महेश टू निरंजन, राइट आर्म ओवर द विकेट, here he bowls. Last ball, lofted and he's gone. Hit that one full tossly over the fence at mid wicket. That's it. 5 stipulated overs completed for team Gopala Krishna. They finished with 35 for the loss of 7 wickets. In the stipulated 30 deliveries, that means in the stipulated 5 overs. And now the target for team Katari Viras is 36. They have to score for victory. 36 रनों का लक्ष्य निर्धारित 5 ओवर में यानी निर्धारित 30 गेंदों में टीम कटारी वीरास को बनाने हैं 36 रन। 36 in 5 overs they have to score for victory और टीम कटारी वीरा की पारी की शुरुआत होगी। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद फॉर द लास्ट टाइम टुनाइट मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं बुलाना चाहूंगा जब यहाँ पर टीम कटारी वीरास की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद।
आयचे मॅचाचे फायनल इनिंग्स जावचो आसा. 5 दिसाक ज्युनियर कॅटेगरीचे मॅचेस स्टार्ट जाता, लीग मॅचेस. 5 घंटे रिपोर्टिंग दिला फर्स्ट टीम. अग्रसाली सुपर किंग वर्सेस नागनकट्टे पॅन्थर्स पाई फर्स्ट मॅच. 5 घंटे रिपोर्टिंग इमिडिएट टॉस जावन मॅच सुरू जाता 5:30. So thank you very much, Gopi. Welcome back to the last innings of the day number first. And everything is ready here for the first over. Shivanand will go in to start the proceedings. And Sahadev will be the striker. First ball just outside the line of off stump. And a little bit moment of the feet from Sahadev to get that one into the extra cover. Missed it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Oh, this is going to be a wide plus one, no ball plus one. In fact, the ball pitched outside the line of the pitch, so that umpire rightly so Karthik called that no ball. Free hit delivery for Dinesh. It's a free hit delivery for Dinesh. 2 without loss of any wicket, and here comes the next one. Shivanand bowls reverse sweep, lovely shot, fantastic improvisation from Dinesh. Dinesh has also got a lot of fans behind him. And one more, the first boundary for him. This time top edge and taken. Try to repeat the reverse stroke in the negation. Deals with the extra bounce. Got a top edge and shot third man fielder, making no mistake at all. Shivanand strikes. And 6 without loss of any wicket in the over number first in progress. Vinay is the new batter in. And still we can see that excitement in the crowd there. They're enjoying the game of cricket. When someone is observing the mobile, they're hoping that the cameraman will go into cover him. They can get into that mobile. And one more wide there. 7 for 1 in the over number first is in progress. Then soft hand comes into play. And good cricket there from Vinay. He's a very good rotator of strike. Picked up a single. 8 for 1 in the over number first is in progress. That brings Shivanand into strike. Sahadev into strike. Drives that one down to mid off, and lovely stop. Very good stop by the fielder. And Ganesh Bhatt once again in the picture. Fields the ball. 9 for 1. This time delicately played by Vinay. Absolutely perfect placement in the negation. Boundary signaled after completion of first over. It's 13 for 1. And chasing total score of 36 to win this match. 23 needed from 24 balls now. Time is exactly 12 past 15 in the night. Tomorrow, the day number 2. Will going to start in exactly what organizer mentioned. Reporting time will be the 5 o'clock. The team will going to play the first match. Agrasali Super Kings against Naganakatta Panthers the second day. And this time and played it just wide of the fielder. It's one bounce into the fence for 4 runs. So Venkatesh down at square leg. One more very senior, super senior, we can say that. Venkatesh down at square leg, and one fielder at short mid wicket as well. Driven down to long off, mid off. In fact, one more dot ball. 17 for 1. 19 needed for the victory. This time cuts it hard, and good fielding. Very good fielding at extra cover. Just a single. With the addition of that single score, moves on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Swaps it very nicely. Vinay is so clever in the negation to swap the ball down to square leg for 4. With that boundary score, moves on to 22 for 1. 14 needed for the victory. Right arm around the wicket. Lovely delivery, beautifully bowled. A perfect one in the negation from the bowler
Oh, just targeting on the midline leg stump. Ramesh down the leg side, and it's by 4 called by umpire. For one more 4, with that boundary score moves on to 26 on the board. 10 needed. 10 needed from 3 overs. 18 balls, 10 required for the victory. Sudhakar brought into attack to bowl the third over. He wanted to bowl round the wicket to Sahadev. Good start, a very good start from the bowler. Sudhakar getting that incoming delivery for the left-hand batter. No runs scored, 26 for 1. Drives, lovely shot, beautifully played, straight down the ground, perfectly struck into that long off boundary for 4 runs. So with that boundary they came very close to the target, just 6 needed for the victory. Just have a look at the replay, a little bit move towards the onside. Now lovely shot, beautiful shot. Now Sahadev is coming into his natural rhythm. Back to back 2 boundaries takes them into 34. Just 2 needed for the victory. Couple of runs required for the victory. Sudhakar down the leg side, and going to be a wide. The scores are leveled. The scores are leveled. Just 1 required for the victory. 1 required for the victory for team Qatari Veeras. A lot of noises coming in the ground. And that's it. They finished the match in a style. Big victory for the team Qatari Veeras. Defeated team Gopala Krishna. And man of the match. Now time for the man of the match. The beautiful view of the moon there from cameraman. Fantastic view. Cameraman And, like just the moon man of shot the match. दाखवला आमका. फायनल मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच अनाउन्स कर का तशी जी सक्कड ऑडियन्स मॅच बॉलाच्या बशिलांक एक विनंती तुम्ही बशील खुर्ची एक तशी एक फोल्ड करून चिक्के मागशी घालून सोडत आमकां चिक्के Man of the match, which is goes to Vinay Prabhu for his all-round performance. Bowled a fantastic 1 hour, picked up 2 wickets and scored 9 valuable runs. So Vinay, दिवाकर कामत मम्मान हांगा वेदिके लागी एक पटी येव का दय कोरणे याची एक फायनलाचे आता मॅच जाल्ला एक मॅन ऑफ द मॅच दिवचा आसा. Vinay Prabhu of team Qatari Veeras for his all-round performance. ದಯಮಾಡಿ ವಿನಯ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇ ನಂಬರ್ 1, ಡೇ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್